डेट शीट आ चुकी है, राइट? द डे इज डिसाइडेड, 2nd of March is going to be the science board examination, right? Which means you have a perfect goal in front of you. Ab we have one situation. It's called do or die situation. अब टाइम नहीं है कि हम बात करें, सोचें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्लान बनाएं. It's today, right? Today is the biggest day, or I would say second biggest day if you ever dreamt of getting perfect score in your science examination. अगर तुमने कभी सपना देखा होगा कि मेरे साइंस में फुल नंबर आए, आज तुम्हारा दूसरे सबसे बड़ा दिन है. दूसरा क्यों? पहला कल था. Yes, because yesterday was the biology Mahamarathon where Ankita ma'am took a 8-hour class. Full biology was done in detail. जो टिक गया वो समझ गया. आज के सेशन का I just tell you one small thing. आज के सेशन में there is no menti. पोल क्वेश्चन भी नहीं है. क्या होगा? पढ़ाई होगी, राइट? टुडे आई कैन मेक श्योर इफ यू स्टे टिल द एंड, जो आज का सेशन पूरा कर गया, तुम्हारा फिजिक्स में एक मार्क्स भी इधर से उधर नहीं होगा. आई कैन गारंटी दिस टू यू ऑन माई लाइफ. इफ यू स्टे दिस सेशन टिल द एंड, one single mark you will not miss in your board examination. Good enough? Is this motivation enough for you? Tell me. काफी है? जोश कितना है? Everybody, welcome to BYJU'S 9th and 10th channel. I'm Saurabh, your physics mentor, and today we are here on this channel because we are doing Maha Marathon. This is the race to boards. It's a race now. We have the deadline, 2nd of March. Good evening, everybody. Good evening. How's the Josh? Feeling good? Feeling prepared? अगर नहीं, आज का session करो and then I'll talk to you. Yes, I'm good यार. देखो, for today's session, I'll give you 3 warnings, 3 disclaimers, 3 suggestions, 3 advice. जो सुनना है सुनो, जो मानना है मानो, but I'll just tell you. पहली चीज, grab a table chair. एक टेबल चेयर पे बैठना है ना, just sit comfortably on a table chair. आज कमजोर दिल वालों के लिए सेशन नहीं है. And with yesterday's session, you might have understood. बच्चों का खेल नहीं है अब, है ना? अब हम लोग टाइम पास नहीं करने वाले किसी भी हाल में, right? So today's, first of all, get a comfortable seat. Yes, प्रिया, आंचल, खुशवंत, ऐशानी, बालाजी, आइंस्टाइन. अरे यार, थैंक यू आइंस्टाइन. माही, मान्या, वैष्णवी, प्रभुनाथ, राम्या, very good. So, first of all, comfortable spot. Second, pen and notebook with you, right? Third, confidence and water. Keep water with you, keep your confidence with you, don't lose hope. रात में खाना खाने का मन करेगा, I'll give you a break, don't you worry about that. But, आज, बिना syllabus खत्म करे, अच्छे से, मैं तो नहीं जाऊंगा घर. I will not go home until unless I finish the syllabus properly. And if you want to sincerely do it, if you sincerely want to finish it, let's meet. By the end of this session, we'll talk again. क्या बोलते हो? चालू करें? What do you say? Shall we start? In today's session, each and every chapter we'll do in detail. Each and every topic we'll do in detail. Every topic we have good questions, most important board level questions, right? आज के सेशन में तुम इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इतना कुछ पढ़ लोगे कि उसके बाद तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This is a guarantee. What do you say? Shall we start? Yes. फिजिक्स पहली बार, अरे बहुत बार, लेकिन आज जो कर गया, there is still a chance that you can get full marks. आज के बाद I have no guarantee. Today I'm telling you, if you do it properly, I can give you a guarantee कि you can get full marks. लेकिन after December, Jan में पैनिक मोड में जब करोगे, कोई गारंटी नहीं है उस टाइम पे. Yes, duration. शिवांश, the plan is for 5 hours, but we'll see. देखो खत्म तो अच्छे से करूंगा मैं, बाकी फिर देखते हैं. Yes, how's the Josh? फटाफट, how's the Josh? देखो कमजोर दिन वालों के लिए नहीं है ये. Josh needs to be very high, otherwise नहीं हो पाएगा. How's the Josh? Come on! Super duper high. Very good. You have like. Very good. Everybody, hit the like button. उसको ना इतना जोर से दबाओ कि दोबारा उठ ना पाए वो. Hit the like button. Subscribe to the channel. Press the bell icon. Share it to your friends. जिसको तुम चाहते हो तुम्हारे साथ अच्छा स्कोर करे, है ना? तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे. Share it to them. उनको बोलो भाई पढ़ना है ना, अच्छे से आ जाओ. ठीक है? At peak. Very good. Let's start. इनफ है, बिल्कुल इनफ है शिवांश. आई एम टेलिंग यू, अरे मैं बोल रहा हूं यार, फिजिक्स में एक भी मार्क तुम्हारा नहीं जा सकता अगर आज तुम टिक गए. कंडीशन है, टिक गए. ठीक है? यस, लेट्स बिगिन. लेकिन चालू करने से पहले अ स्मॉल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू.
भाई आफ्टर 10th, right now we are preparing for boards, but after boards one thought will be in your mind for a long time, क्या लें, जेई लें, नीट लें, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, right? So that's why you need little bit of counseling, and that's why we are arranging a free career counseling workshop for all of you, right? Ashwin sir is taking this, by the way, this time, you know, Ashwin sir is taking it this time, and he will be telling you about a 2-year roadmap for JEE or NEET. And अच्छा रहेगा अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, just go with your parents, because it's not you alone in this journey, right? You were never alone. Your parents are there with you, we are there with you, your teachers are there with you, but your parents are the most important people who should be there with you, right? So go with your parents, because everybody needs to understand this world of JEE and NEET, क्योंकि दुनिया ना बड़ी बदलने वाली है. You need help. Go ahead and attend this workshop, register it. The link is in the description. कब होगा ये? December 31st को 12 बजे होगा, 1 घंटे का होगा बस, because your time is precious, my friend. So no time waste, 1 hour session. Go register, go with your parents. बहुत जरूरी है, ठीक है? लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. आई थिंक दिस इज गुड इनफ. आज नहीं तो कल तुमको जरूरत पड़ने वाली है, तो आज से सुन लो. कम से कम क्या होगा ना, अभी क्या होगा, एक आफ्टर 2 months पीपल गिव यू सो मेनी सजेशन, बहुत सजेशन आएंगे तुम्हारे पास. स्टार्ट टुडे, बी अवेयर सो दैट यू कैन काउंटर. ठीक है, चलो भाई बात करते हैं फिजिक्स की. जहांगीर सेशन तो देखो, सेशन तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं होंगे. आज जितनी डेडिकेशन से होगा ना, बार बार करते करते तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे हो सकता है. तो इसलिए आज का दिन है, जो है आज है मेरे दोस्त, कल का किसको पता, राइट? लेट्स डू इट. आज तुम भी आओ, हम भी आए, कर लेते हैं बढ़िया से, है ना? चलो देखो भाई, फिजिक्स ग्रेड 10th 4 चैप्टर्स. पूरी कहानी है 4 चैप्टरों की, राइट? वी हैव लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. उसके बाद आता है ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. टोटल नंबर आते हैं कितने? Sample paper, practice paper we have done. How many total marks of physics comes in the board examination? Come on, everybody. Now you all should know this here. Yes, hello Heather. Which chapter is scoring? Shivanshu, I'll tell you, bacha, each and everything. Today I will not miss a single point. You just 25. Good, Gaurav. 25 marks. Sir, ये पक्का है? जी हाँ. This is पक्का. You can say pinky promise. ठीक है भाई? 25 marks, it's a pinky promise. Sir, chapter wise weightage, let me tell you. Sample paper and practice paper, दोनों ये बोलते हैं कि भाई light plus human eye will be of 12 to 13 marks. Sir, light how much, human eye how much? You don't know. किसी को नहीं पता. देखो भाई, in sample paper and practice paper, in sample paper light was a little more, human eye was a little it was also 5-6 marks आया था, लेकिन दोनों में ना ह्यूमन आई ज्यादा आया है हर बार से. दिस टाइम ह्यूमन आई हैज मोर वेटेज इन सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर. एंड ह्यूमन आई चैप्टर ऐसा है ना, इफ यू डोंट नो लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई इज वेस्ट फॉर यू. जिसको लाइट नहीं आता उसके लिए ह्यूमन आई है ही नहीं. सो लाइट बिकम्स द बेस, इसीलिए लाइट बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ग्रेड 10 बिकम्स लाइट, बिकॉज ह्यूमन आई डिपेंड्स ऑन लाइट. जिसको लाइट नहीं आया उसको ह्यूमन आई भी नहीं आया, मान लो. I'm telling you right now, ठीक है? So that's why light becomes the most important chapter, and together they constitute how much? 12 to 13 marks. Correct? है ना? कल एग्जाम है, जल्दी खत्म करना. वैष्णवी, I'll try my best बच्चा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल क्रिटिकल एंगल नहीं है. शिवांश, क्रिटिकल एंगल नहीं है आपके सिलेबस में. Now comes electricity and magnetic effect. इस पे हम और बात करेंगे, ठीक है? Let's start with light, reflection and refraction. First of all, I'll tell you what is your syllabus, and then I'll tell you something about called as blueprint. ठीक है भाई? Like करते रहना, ठीक है? Keep doing the like. I'm not telling any like leaders, because फिर क्या होता है, like leader उस पे ध्यान रहता है. That's why today I'm not declaring any like leader. Believe me. Today's session I am full intended to finish it, to complete your syllabus, to explain everything. Like leader की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने आप से like करना और करवाना. ठीक है भाई? ये तुम्हारा काम है. I'm not saying anything. नेचुरल फिनोमेना के अंदर चैप्टर आता है. दिस चैप्टर कम्स इन नेचुरल फिनोमेना. वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सीबीएसई हैज गिवन टू यू. इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म्ड. सी, ऑल दिस इज समथिंग गिवन बाय सीबीएसई. बट व्हेन यू लुक एट दिस, नो, इट फील्स लाइक सर बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो. ना, ऐसा है नहीं. It is not like that. I'll just give you a very simple blueprint. और तुमको ये blueprint याद रखना है, ठीक है? Listen to me very carefully. First of all,
लाइट चैप्टर के अंदर क्या है सर, दो इसके अंदर ना सेगमेंट है, देयर आर टू सेगमेंट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. The way I'm explaining right now, this will help you to realize this chapter is not difficult यार, इतना इतना सही तो है, it's very easy. ठीक है, that's why it becomes very important. Reflection and refraction. ठीक है जी. Reflection में क्या आता है सर, reflection के अंदर we have laws of reflection. I'm not counting, कुछ नहीं है उसमें, है ना. Laws of reflection ठीक है, reflection क्या होता है ये सब. I'm saying most important thing comes here is spherical mirrors. Spherical mirrors. ठीक है जी. Spherical mirrors. Now in spherical mirrors what do we have? We have ray diagrams, we have mirror formula, we have magnification, and we have application. ठीक, fine. Spherical mirrors में we have two types of mirrors, sir, concave mirror and convex mirror. Very good. ठीक है sir, looking like a lot, relax. If you understood mirrors, लेंस इज डन मेरे दोस्त, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, राइट. इफ यू हैव डन मिरर्स, लेंसेज आर आल्सो डन फॉर यू, व्हाई आर यू वरीइंग. रिफ्रैक्शन में क्या आता है, वी हैव स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज, अगेन सेम थिंग सर, रे डायग्राम्स, इट्स लेंस, तो इट इज लेंस फॉर्मूला, एंड वी हैव मैग्निफिकेशन. देन व्हाट डू वी हैव, application. Two types of lenses, sir, convex and concave. Sir, why have you kept convex here? क्योंकि, why? Because concave mirror and convex lens, they are equivalent. तुमने concave mirror पढ़ लिया, तुमने convex lens already पढ़ लिया. Ray diagrams एकदम सेम है मेरे दोस्त, why are you worrying, right? ठीक है. Next, if you have done convex lens, it is equivalent to concave lens. अब बताओ, this blueprint is everything light chapter contains, and light chapter if you do half, second half is already done, so it's very easy. First of all, believe it in yourself. Light chapter is important, but it is easy. Yes, बिल्कुल बिल्कुल राघव, आएंगे बच्चा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. अभी तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं. Is this blueprint clear? Feeling good about it? Whenever you think of light chapter, ना think of this blueprint. अच्छा, दो ही चीज तो होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, फिर ये होता है. ठीक है, फाइन, राइट, क्लियर, यस, ओके, बहुत बढ़िया. चलो आगे आओ. अब चालू करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन से. एंड सी, इन बिटवीन आई विल गिव यू टाइम टू आस्क द डाउट्स. अभी तक आई विल सी कमेंट्स, जल्दी बताओ. यस, मैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट, शिवांश बच्चा, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, आई विल गो इन सीक्वेंस, सॉरी. यू कैन ज्वाइन, आपको जब अगर वही चैप्टर करना है आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, फाइन. पावर कहां गया, ओ थैंक यू. और लास्ट में आता है पावर. सॉरी आई मिस्ड वन स्मॉल टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है यार. पावर कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन है और बड़ा इजी है. अब पावर एक्चुअली दोनों में कॉमन भी नहीं है, केवल लेंस में आता है पावर, राइट. पावर इज अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक यार, so it's okay. ठीक है, फाइन. ऑल दिस इज इन योर लाइट चैप्टर. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे एवरीथिंग इज कमिंग इन रिफ्रैक्शन. Laws of reflection, plane mirrors, refractive indices, all of this I'm not talking because those are very small things and it's very easy, right? Majorly this is your whole light chapter. अब चलो, let's start with reflection. Pen, notebook, comfortable spot, table chair. कोई भी सर्दी में रजाई में बैठ के नहीं पड़ेगा. I'm telling you again. अगर तुम बैठे रजाई में तुम सो जाओगे थोड़ी देर में. ठीक है, टेबल चेयर. चलो, let's start with reflection. Fine. ओके, ग्लास स्लैब, अरे एवरीथिंग इज कमिंग रिफ्रैक्शन यार, तुम लोग कहां परेशान हो रहे हो. इसके अंदर ग्लास स्लैब भी आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, फॉर्मूलेज भी आ गए, वेलोसिटी भी आ गया. अरे सब कुछ इसके अंदर ही है यार. दैट इज वन स्मॉल टॉपिक. कहां टेंशन ले रहे हो तुम, डोंट वरी यार, एवरीथिंग इज देयर, फाइन. बट आई एम टेलिंग यू, डोंट थिंक ऑफ इट एट सेपरेट टॉपिक्स. इट्स इजी, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स इन रिफ्रैक्शन ओनली. ठीक है, फाइन. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वेरी गुड. नहीं यार हर्ष, इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी. तुम सुनो, आई विल टीच यू. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एवरीबॉडी आई वांट आंसर्स. खाली बैठ के सुनना नहीं है. आई एम नॉट हियर टू टेल यू एनी रामायण महाभारत कथा वथा. ठीक है भाई, आई वांट आंसर्स, बी एक्टिव. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ हैं, बड़े सिंपल सिंपल से, ओनली टू लॉज. फर्स्ट, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द रे विच इज फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. दिस इंसिडेंट रे.
The ray which is getting reflected back is called as reflected ray. Yes, right, this is the reflected ray. Now there is one imaginary ray which is perpendicular to the surface. It is called as normal. Hanji, right? Now the angle between incident ray and normal is called as angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. ठीक है जी? These two will be equal. That is first law. Now here, most important thing. See, I'll keep telling you the most important thing where people make mistake. यहाँ गलती कहाँ करते हैं लोग? The angle of incidence and angle of reflection, they need to be measured from the normal. Sir, क्या बात कर रहे हो? What are you telling? This is something very easy. We all know it. I know, बच्चा, you know it. But that is how. That is why I'm telling you. Be careful. Be conscious. Because even if you know it, I have seen good students making mistakes in silly questions. Good students I have seen making mistakes in silly questions. भाई हमेशा angle of incidence और angle of reflection normal से measure करना है, ठीक है? Mind it. Very good. Second law is also very easy. It says incident ray, reflected ray and normal, they lie in the same plane. मतलब incident ray, reflected ray and the normal, ये तीनों एक same plane में आएंगे. अगर incident ray सर ऐसे आएगी, if incident ray comes like this, then what will happen? Plane should be like this. Reflected ray will go like this. ऐसे नहीं जाएगा. It will never happen कि incident ray comes like this, reflected ray goes like this. That will only happen if your mirror is like this. Fine, ठीक है? Normal कैसे बनाते हैं? Normal के लिए कुछ नहीं करना बच्चा. If you have a surface like this, now this is your mirror. Fine, this is your mirror. Your normal will be 90 degrees to your mirror. That is your normal. Very simple. Fine, ठीक है. And this point ना जहाँ पर normal और mirror meet करते हैं, the point of intersection of normal and the mirror, this is where your incident ray falls and this is where your reflected ray passes from. ठीक है? बहुत बढ़िया. तो ये तो भाई easy चीजें थी. These are two laws of reflection जिनसे question मुश्किल ही आता है. Normally question doesn't come, but it's very simple. That's why I'm just telling you. उसके बाद this thing is something which your juniors learn, so you are expected to know this. ये आप है ना, you have learned all this. पता है कब? Grade 8th, grade 7th, grade 6th. Reflection तब से है. You remember? So image formed by plane mirror is something you should know because you have studied it so much in your early classes. आ सकता है question. Fine. Raghav, I'll give you a question on that. Relax. Bachcha, first of all, see, I'm saying listen more and type the answers. I know you have a lot of doubts. I'll give you time to ask the doubts. But what you are asking right now, you are jumping forward. I will not go there. ठीक है? सुनो. Image formed by plane mirror. क्या होता है? Sir, बहुत simple है. पहली चीज, object distance is equal to the image distance. मतलब the object in front of mirror is at equal distance to what? To the distance of image inside the mirror. Right? Correct. Very good. So same distance. Object distance is equal to image distance. Same size. Object distance is equal to the image. Image size. The height of object is equal to the height of image. Second point. Very important. और when you see yourself in your dressing table, क्या तुमको लगता है तुम छोटे या लंबे हो गए और नहीं? Your size remains the same, no? So the distance is equal. The size is also equal. The image is virtual. Why? It is inside the mirror. The images which are formed inside the mirror are virtual images, right? It is erect. The image is erect. मतलब if you are standing like this, your image in the mirror also stands like this only. ना ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारी image का सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है. It never happens like that. So image is virtual and erect. Very important. And it is laterally inverted. मतलब laterally inverted का मतलब ये होता है कि भाई if you raise your right hand ना, the person in the image, they raise their left hand. ऐसे. Fine. Yes. हाँ. गुलाल, telegram. For now, telegram, I'll tell you. उसके बाद. Yes, Akash, make lecture notes. It will be helpful for you because the more you write down, the more you learn. Yes, very good. Very good, yaar, Meera. Nice. Fine. So these are properties of image formation by the plane mirror. Very good. Easy है. पुरानी चीज है but आनी चाहिए. Fine. चलो आगे आओ. कुछ क्वेश्चन कर लें. I told you today I will give you topic wise questions and important questions which can come in your examinations. And this will be our trend.
पूरे सेशन में हम खूब न्यूमेरिकल करेंगे, खूब क्वेश्चन करेंगे. आई एम टेलिंग यू, टुडे विल डू सो मेनी क्वेश्चंस, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन, a light ray is incident normally on a plane mirror. Somebody was asking, Raghav was asking this. That doesn't go. Swapnil, virtual image, remember, we have to trace it back. It appears to meet, correct? A light ray is incident normally on a plane mirror. First, I कितना होगा? 0, 0, 0. Veronica, Isha, Zaid, Ukio, Mahalakshmi, Air Devil. अरे होगा बच्चा पक्का, don't worry. Shivam, I'll tell you. You ask me this question again in the spherical mirrors. I'll tell you there. Pakka. 0. Arey sir, why 0? This is your plane mirror. This is your normal, right? Now your light ray is falling normally. Your light ray is falling normally. Normally means like this. So this is your incident ray. What is the angle of incidence? Normal. Incidence ray. Angle is how much? Sir, 0. So I is equal to 0. Law of reflection says if I is equal to 0, R will be 0. Angle of reflection will be equal to angle of incidence, no? So R will be 0. Angle of reflection will be equal to angle of incidence. Very good. Chalo bhai, next pe aa jao. Question number 2. Question number 2 is, if an object of height 1 meter is placed at a distance of 10 meters in front of a plane mirror, how far would it be from its image? Answer. Yes, you're right. Ramya, Arunista, Gulal, इसका मिलेगा, don't worry. 10, 10, 10, 20, 20, 10, 10, 20. Read the question again. अरे बच्चों, बोर्ड में I'm telling you, question ध्यान से पढ़ने की आदत डालो. Don't panic, don't be in a hurry. You have to get the right answer. Time बहुत है तुम्हारे पास. बहुत टाइम होता है यार बोर्ड में, ठीक है? Read the question properly. If an object of height 1 meter is placed at a distance of 10 meters in front of a plane mirror. Second thing, always have a habit of doing rough work. I'll tell you how I would have done it if I was in class 10. I mean, I was, but imagining. ठीक है? Object is 10 meters in front of a plane mirror. Sir, this is my plane mirror and this is my object. Object is how much? 10 meters. Oh, how far would it be from its image? क्वेश्चन क्या है? इमेज का डिस्टेंस किस से? ऑब्जेक्ट से. सर इमेज विल बी हियर, इट विल बी 10 meters. So distance between object and image is how much? 20 meters, na? Not from mirror, from object. So correct answer will be how much? 20 meters. 20, yes, 10 plus 10, correct, very good. Question number 3, an image seen in a plane mirror cannot be formed on a screen. True or false? An image seen in a plane mirror cannot be formed on a screen. True or false? And what is this type of image called as? Daksh, kal hai. And by the way, 9th marathon is running right now. Biology is happening. आप यहाँ क्या कर रहे हो? True. And virtual. Very good. Sir, image is forming inside the mirror, which means you cannot get it on a screen. ये तो mirror के अंदर है भैया. It's a virtual image. And virtual images you cannot obtain on a screen. So this is a virtual image and that's why you cannot obtain it on a screen. So yes, correct answer becomes true and this image is called as virtual image. ठीक है भाई? Plane mirror पढ़ लिया, law of reflection पढ़ लिया, question भी हो गए. बढ़िया, done and dusted. आगे आओ. अब आती है कहानी spherical mirrors की. Now we have to talk about spherical mirrors. The mirrors which are mirrors but not plane, right? These are spherical. Means अपनी जिंदगी में these mirrors have been a part of a sphere. एक sphere था जिससे ये mirrors निकाले गए हैं, right? That's why we call them spherical mirrors because some point of time they have been a part of a sphere. Spherical mirrors. यानी कि imagine there is a sphere and from that you cut this much portion, right? You cut this much portion and you polish this side. See, whichever side you polish, the opposite side becomes the reflective surface. Correct? Okay, creation? Comment section is the good place to write this. We'll make small video on this. Don't worry. Ekamjot, bacha, class 9 marathon is happening right now of biology on the same channel. If you check the channel, no, class 9 का चल रहा है marathon वहाँ पे. ठीक है? Fine. Whichever side you polish,
the opposite side becomes the reflective side. Sir, if I cut a mirror from this side and polish the inner side, आपने क्या किया, मिरर कट किया and you polish this side, which means this side becomes reflective. This is a convex mirror. It's like a vex, it's like a bulge, correct? It's a convex mirror. ठीक है, fine. If you cut a mirror like this, है ना भाई, sphere है, it's a sphere. You cut one mirror from here and one mirror from here. Very good. ठीक है, आपको मिल गए दो मिरर. And here you polish the outside surface. You polish this side, which means opposite side becomes the reflective surface, which means this inward, curved inward. It's like a cave. गुफा की तरह है ना भाई ये. It's like a cave. So that's why this is called as concave mirror. गलती नहीं होनी चाहिए, right? It's a concave mirror. Okay. Focal length of pale plane mirror, infinite. Gulal, it is infinite. I'll tell you again. Two questions are pending. One question is plane mirror magnification is 1, why, and why focal length of plane mirror is infinite. Both of them I'll answer in spherical mirror section because I should explain you focal length first. That's why. Okay. So I got two questions. I'll take them. Don't worry. Chalo, आगे आओ. Now we have important terms we should know. First, the pole. Pole क्या होता है? It is the midpoint of the mirror. If your mirror is this, अगर ये तुम्हारा mirror है, इसका center point is called the pole. Okay? Yes. Center of curvature. By this mirror has come out of a sphere. The center of that sphere is the center of curvature of this mirror. The center of the sphere of which the mirror forms the part is called as center of curvature. Yes, है ना? हाँ. स्वप्निल, because सारे perfectly spherical नहीं होते इसीलिए. और बात करेंगे. अभी नहीं, sorry, इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, but ये अच्छा टॉपिक है. डर लग रहा है? अरे नहीं यार शिवान, सुनो तो सही यार. अगर जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं तब भी डर लग रहा है, फिर कैसे होगा? डर तुम्हारे दिमाग में है बच्चा, आप पढ़ो अच्छे से. चलो आओ. रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब भाई यू हैव गॉट द सेंटर, राइट? यू हैव गॉट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यू हैव गॉट द पोल. पोल कहां है सर? मिरर पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है सर? यहां पे. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. वेरी वेरी इजी. डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? The line joining the pole and center of curvature. Sir, what is the difference between radius of curvature and principal axis? What is the difference between radius of curvature and principal axis? Radius of curvature is a length. It's a specified length from center of curvature to the pole. What is principal axis? It's a line. It's a line. Line joining center of curvature and pole and extended throughout. ये एक लाइन है भाई. ठीक है, फाइन. यस. इज इमेजिनरी हरनी? यस. वेरी गुड. इरेगुलर? नहीं, अरे इरेगुलर की बात नहीं हो रही. राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग ऑल आइडियल स्फेरिकल मिरर्स. दैट्स व्हाई. ठीक, फाइन. चलो आगे आओ. एपर्चर. नाउ दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू आस्क वेरी फ्रीक्वेंटली, सर व्हाट इज एपर्चर? व्हाट इज एपर्चर? इफ दिस इज योर स्फेरिकल मिरर, देखो मेरा हाथ है ये, ठीक है, इट्स नॉट स्फेरिकल, आई अग्री. Imagine it's a spherical mirror. Aperture becomes the diameter, right? It becomes the diameter of your mirror. That is called as aperture. ठीक? कितनी चौड़ाई है तुम्हारे मिरर की? बेसिकली diameter of your mirror. The diameter of reflecting surface is known as the aperture. ठीक है? Are all these points, are all these terms clear? Yes or no? Yes. Power नहीं समझा? वैष्णवी मैंने समझाया नहीं अभी. I'll explain you बच्चा. Don't worry. I'll explain you power. Don't worry यार. बिल्कुल. Team 7 guy. That is the aperture. हाँ. Yes. Swapnil. Very good. That's true. चलो भाई. Question. I'm telling you. I have questions on each and every topic. Which means you learn something, you solve question, and you get a confidence. सर मेरे को आ गया. Question for you. Match the following. हाँ जी. Pole है. See, in column A, you have pole, focus, principal axis, center of curvature. In column B, what do I have? I have normal through the pole, center of the sphere, middle point of the mirror, reflected ray passes when incident ray are parallel. हाँ जी, come on. अमेया, इस mirror समझा रहा हूँ ना मैं इसलिए. Come on. Yes. Ideally that doesn't happen, but spherical mirrors. In future, when you grow, then we talk about parabolic mirrors, but not today.
नहीं अशर बच्चा, aperture is the chord length, you can say. If this sphere is your chord, na, sorry, it's your arc, no, then the chord length is the aperture. 2D, 1C, 2D, 1C, 2D, 3A, 4B. Team 7 guy, nice representation. Sakshi, okay. 2C, 1C, 2D, 3A, 4B. Okay, listen na. Pole क्या होता है भाई? What is pole? Sir, center of my mirror. Center of the sphere? नहीं. Middle point of mirror? हाँ, ये सही है. C. Focus क्या होता है? Sir, what is focus? Focus is reflected ray passes when incident rays are parallel. अच्छा ठीक है, इसको मैं यही पढ़ाता हूँ जरा. देखो focus क्या है ना? Principal axis समझ गए? Right? We understood about principal axis. Now, when light rays are incident on the mirror, which are parallel to principal axis, reflection के बाद वो जहां meet करती हैं और they appear to meet, that point is called as principal focus. मतलब sir, in convex mirror कैसा है? ऐसा ना? So after reflection, these rays will diverge. Right? These rays will go far from each other. So on that side of the mirror, they will never meet. Light rays टकरा के फैल गई, right? They have diverged. So on this side, so they will never meet. Which means if you trace them back, अगर आप इन light rays को पीछे की तरफ trace करोगे, you will realize they appear to meet at this point. इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप यहाँ से देखो, if you look at the light ray from here, you will feel that it is coming from this point, right? So this point is called as principal focus. Fine. In concave mirror, what happens? If parallel rays fall on the concave mirror, they actually meet at a point. Why? Because this is a converging mirror. ये क्या करेगा? Converge कर देगा light rays को एक point पे, right? And this point is called as principal focus. Correct? In convex mirror, we have a focus where light rays appear to meet. In concave mirror, we have a focus where light rays actually meet. Which mirror has a virtual focus? Convex or concave? Yes. Yes, Swapnil. Come on. Which mirror has a virtual focus? Convex or concave? Convex. Good. Yes. Is principal focus and focus the same? No. Principal focus is a special focus which lies on principal axis. Focus could be anywhere on the focal plane. I usually explain this in my sessions, but today I don't want to go there. है ना? ठीक है? Fine. Okay. चलो भाई. Focus क्या हुआ? Sir, it is the point where reflected ray passes when incident rays are parallel. हाँ, सही बात है यार. तो यानी कि second हो गया है D. Okay. Principal axis. It is the what? Principal axis. Center of the sphere. Nah, that is center of curvature. Principal axis is what? Sir, it is the normal through the pole. Sir, you told me that principal axis is the line joining between pole and center of curvature. And now you are telling me it is normal through the pole. Why? Yes. Convex mirror, concave lens. Swapnil, we have it. Don't worry. In this chapter, we'll do it. अरे वाह, जय श्री राम. Yes. Why I'm saying it is normal? क्यों बोल रहे हैं normal? Sir, principal axis was the line joining between pole and center of curvature. ये normal कहाँ से आया उसमें? It's both. Good. Why? देखो भाई. Let's say this is your concave mirror. ठीक है? This is your concave mirror. This is your pole. Fine. And this is your center of curvature. From center of curvature, any line falling on the mirror will make 90 degrees. It will make 90 degrees. क्यों? अरे, think of it from geometry. If you have a circle, it's a bad circle, but ठीक है. If you have a circle and you have a center, right? So, if you draw radius, and at this point, if you draw a tangent, अरे रे, बहुत बुरा tangent बनाई तो. And at this point, if you draw a, अरे रे, हाँ. And at this point, if you draw a tangent, this will be 90 degrees, right? Same concept in sphere also. So from center of curvature, if you draw any line on the spherical mirror, it will be 90 degrees, correct? That is why we are saying it is the normal to the pole. ये रहा pole और ये रहा normal, and this normal is what? It is the principal axis.
क्लियर है? हाँ, वेरी गुड, टेंजेंट थ्योरम, बहुत बढ़िया. तो लेट्स क्रॉस चेक. अरे वाह सर, वी हैव गॉट ऑल राइट आंसर्स. एकदम इजी, क्लियर. विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर्स. अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जरा फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट. नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. What type of mirror is represented by the back side of a shining steel spoon? You tell me answer of this first. A. Name the 2 types of spherical mirrors. Sir, convex mirror, concave mirror. That is very easy. Back side of a shining steel spoon is what mirror? I'm getting answers as Priya, concave, 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 convex, 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 convex. Good evening, Pragati. Convex, 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 convex. अरे concave. What is the back side of a spoon? एक बात बताओ जरा तुम. स्पून का बैक साइड क्या होता है? Let's say this is your spoon. आज मुझे लग रहा है सारा प्रॉप मेरा हाथ ही काम करेगा, है ना? Let's say this is your spoon. ठीक. स्पून की सीधी साइड कौन सी होती है? जहां से खाते हैं मेरे दोस्त. This is the side from where you eat. So this is the front side. This is the back side. Don't say sir front of spoon is what back. Front is from where you use the spoon. किसी को देखा है तुमने स्पून से ऐसे खाते हुए? Have you seen anyone who eats like this from a spoon? नहीं ना. So this is the front side, this wala side, and the back side is this. What is this side? Sir, this side is convex, right? So back side of a shining steel spoon is convex mirror. Front side of a shining steel spoon is concave mirror. Clear? हाँ, very good. Good evening, Nikhil. Right? चलो, question number 2. आ जाओ फटाफट जल्दी. A concave mirror dash rays of light, whereas a convex mirror dash rays of light. क्या कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे? Convex, concave, divergent, convergent, focus. Oh, nice. An amazing life. Hold on, I'll answer your question in 2 minutes. Converge and diverge. देखो भाई, a concave mirror converges the rays of light, whereas a convex mirror diverges. Sir, why? भाई concave mirror पे when light rays fall, they converge at a point ना भाई. The converging means they narrow down. Converging मतलब क्या होता है? सब एक पॉइंट पे ना इकट्ठा हो जाती हैं, right? That is called as converging. Diverging means, sir, diverging means if this is my convex mirror, when light rays fall like this, क्या हो रहा है? They are spreading apart. दूर जा रही हैं. It's called diverging. Clear? Arrow मत भूलना जब भी बनाओगे, बहुत जरूरी है भाई. So that's why this is question number 2. बिल्कुल notes बनाओ बच्चा. Make running notes. Right? Keep making running notes so that you will be active. That's why. Fine. Otherwise, PPT I'll give you. Don't worry. Question number 3. Parallel rays of light are reflected by a concave mirror to a point called the. Parallel rays of light are reflected by a concave mirror to a point called the principal focus. Focus. Mr. Focus. 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 Good. अच्छा एक बात बताओ. Parallel rays of light are reflected by a concave mirror to a point called the. I have 2 answers. Focus is answer number 1. Principal focus is answer number 2. Tell me what is the correct answer, or 1 or 2. I am getting 2 answers, that's why. 1. हाँ, I know बच्चा, I'll come to it. देखो भाई, now listen. Parallel rays of light are reflected by a concave mirror to a point called the answer is focus. The answer is focus. Principal focus is the light rays. When the light rays are parallel to principal axis, they meet at a point called as principal focus. सर समझ नहीं आया?
नहीं आया ना? लिसन, लेट्स से यू हैव अ कॉनकेव मिरर. देखो मैं एक में समझाऊंगा, दूसरे में समझ लेना अपने आप, ठीक? दिस इज योर कॉनकेव मिरर, फाइन. नाउ parallel rays of light, they reflect from a concave mirror and meet at a point. Parallel rays could be like this, like this, like this. All are parallel. भाई ये दोनों parallel हैं, वो दोनों parallel हैं. So I'm saying parallel rays of light could be parallel to principal axis or they could be parallel, right? So let's say I take, this is one parallel ray, this is one more parallel ray, ठीक? Now both of them will reflect and they will meet at a point, right? They will meet at a point. तो मान लेते हैं कि भाई ये चलो एक रे ये लेके आते हैं तो समझो उनकी. These are two parallel rays. Now they will reflect and they will meet at a point. कौन सा point? They will meet somewhere over here. They will meet somewhere over, let's say here. ठीक? So this point becomes your focus. This is your focus. When light rays are parallel to principal axis, they meet at, let's say these two light rays are parallel to principal axis, they will meet at कहाँ पे? At this point. And this point will be called as principal focus. बात समझ में आ रही है? देखो, focus can be below principal axis, below principal focus, above principal focus. Imagine a plane passing through the principal focus. Focus could be anywhere, but principal focus could be only one. Focal plane, बता रहा हूं, रुको. Understood? Getting my point? Focus could be anywhere on the focal plane. Sir, what is focal plane? Imagine ये line, ये तुमको line दिख रही है, ये वाली, this green line. Are you able to see this green line? Green line दिख रही है और वहां मिरर दिख रहा है. Right now you see mirror as a arc. You see mirror as an arc, but वो arc थोड़ी है. You see the mirror like this, but mirror is actually like this. Similarly, you are seeing it as a line, but this is not a line, it's a plane. समझे? Getting my point? बाइफोकल क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे. बाइफोकल नहीं आना तो नहीं चाहिए, लास्ट ईयर थोड़ा सा आ गया था. यस, प्रिंस, ये जो लाइन है ना, ग्रीन लाइन, दिस इज एक्चुअली अ फोकल प्लेन. Sir, why is it looking like a line? Because your mirror is looking like an arc. Your mirror is looking like this ना. It is not an arc. It is a like this भाई. 3D चीज है ये. ये है mirror. उसी तरह ये line नहीं है. ये plane है. This is the focal plane. So focal plane is a plane which is passing through principal focus and is perpendicular to the principal axis. Yes? Correct, Harsh. So अगर parallel to principal axis लिखा तो आएगा principal focus. अगर केवल पैरेलल रे लिखा तो आएगा फोकस. क्लियर है? जल्दी बताओ. If the question says parallel to principal focus, the answer would be, if the question says parallel to principal axis, the rays, it will be principal focus. If the rays are only parallel, the answer would be focus. Clear? Yes or no? बिल्कुल यार, पूछो. मायू, आपका क्वेश्चन मैं करता हूं, रुको. Clear? अच्छा, इसी बहाने एक और चीज. Somebody was asking, you were asking ना, sir, why plane mirror has focal length of infinity? Why focal length of plane mirror is infinity? Can anybody think of this? Whatever I have explained till now, क्या समझ में आ रही है ये बात? Why focal length of plane mirror is infinity? Imagine two parallel rays falling on this plane mirror. Imagine two parallel rays falling on this plane mirror like this. Take. What will happen to these lines? क्या होगा इनको? Sir, these lines will go back. These lines will go back like this. है ना भाई? Both of these lines came parallel and now they are going back parallel. दो parallel rays कहां meet करती हैं? Where does two parallel rays meet? Infinity.
because this concept we will use in your mirrors and lenses also. दो parallel ray, देखो, if these two rays were diverging, you would have said they will never meet. If these two rays were converging, you would have said they will pakka meet. But if these two rays are parallel, you will say they will meet at infinity. क्यों? रेलवे की पटरी अगर देखोगे, if you look at the railway track, both of them are parallel. दूर देखोगे ना, ऐसा लगेगा दोनों मिल रही है, infinity. Yes, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ. रेलवे की पटरी वाला एग्जांपल, भाई both of them are parallel ना. Here you know, अरे वाह, they are far apart. But if you look at the railway lines far from your eyes, it feels like they are meeting at infinity. That's why. Clear? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए. मैं बोल दिया हूं आज ही, आज का सेशन में टिक गए, एक नंबर भी नहीं जाएगा तुम्हारा फिजिक्स में. यस, करेक्ट, you're right. Why they appear to meet in infinity, Radhika? This is, you can say it looks like they are meeting in infinity, right? Fine. So हम पक्के से बोल भी नहीं सकते they will never meet, but क्योंकि ऐसे होती तो हम बोलते नहीं मिलेगी, but ऐसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी में मिलेगी, है ना? तो ये प्रैक्टिकली आप देखते हो, प्रोजेक्टर वगैरह में यही होता है. फाइन, अब सुनो आगे आओ. Somebody was asking me, define the principal focus of a concave mirror. You were asking this only, na? Define the principal focus of a concave mirror. कर दोगे? I just explained this. Hello Sandra. We are doing, bacha, we have started with light chapter and we are on spherical mirrors. Illusion, yes. Correct. Why parallel rays meet in infinity? Shivansh, it's an illusion. You cannot be sure that they will never meet. But if you look far apart, they appear to meet. तो लगता है वो मिल रही हैं. मायू, आप इसी में कर देना, ठीक है? हाँ, गुड, नाइस, थैंक यू वेरोनिका. सो प्रिंसिपल फोकस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? एक बच्चा है जिसने लिखा, सर लाइट रेज पैरेलल राइट लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? द लाइट रेज which are parallel to principal axis, after reflection they will meet at a point. The point is called as principal focus. Most important term is light rays parallel to principal axis. अगर ये मिस कर दिया, नंबर गए. If you miss this thing, marks are gone. ये पहली मिस्टेक अच्छे बच्चों को देखा है मैंने करते हुए, ठीक है? क्या लिखोगे? Light rays that are parallel to principal axis. अगर तुम ओवर स्मार्ट हो, इसको अंडरलाइन कर देना. अरे करो, शो ऑफ करो भाई, एग्जामिनर को दिखाओ तुमको आता है, राइट? जस्ट शो ऑफ योर नॉलेज. व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट. इसको अंडरलाइन कर दो. Light rays that are parallel to principal axis of a concave mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror, and this point is known as principal focus. Full marks. Examiner खुश, बढ़िया. Yes? Okay. Space Explorer, I'll come to lens, don't worry. It is basically convex lens. Question number 2. Question B. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeters. What is its focal length? What is its focal length? Come on. See, this is something today I haven't taught you, but I am going to teach you now. तो अपने ला वही बात है. अरे, if you keep object at focus of a concave mirror, where do you see the image? Infinity ना, same thing. 10. Very good. बच्चों, listen to me. Radius of curvature, if you divide by 2, that becomes your focal length. Sir, what is focal length? Focal length is the distance of focus point. The principal focus from the pole is called as focal length, right? And radius of curvature is distance between center of curvature and pole. So focus is half of center of curvature. You can say focal length is half of center of curvature. It is true. बिना सोचे समझे इसको तुम लगा सकते हो. ओके, इन योर मिरर्स ऑल्सो, इन योर लेंसेज ऑल्सो. ज्यादा नहीं सोचना, सर बाइफोकल होगा तो प्लेनो कॉन्वेक्स होगा तो क्या करना है, कैसे करना, ना, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, लगाना है बिंदास. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू यू 20, व्हिच मींस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. क्या आ गया भाई? 10 आ गया. एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है? So till here we have done all the important terms and we have done good questions on them. देखो, ये है बोर्ड का लेवल. आई एम टेलिंग यू अगेन, बोर्ड का लेवल यही है. इससे ऊपर नहीं आए, इससे नीचे नहीं है,
टुडे ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सिलेक्टेड फ्रॉम योर एग्जाम लेवल. अब हम बात करेंगे केवल बोर्ड की. आई डोंट केयर अबाउट ओलंपियाड राइट नाउ. आज के दिन आई डोंट गिव अ डैंग, right? I don't care about Olympiads right now. I only care about your board examinations, and that's why. Let's talk about everything to your exam level. ऊपर ना नीचे, ठीक? चलो आगे आओ. अब आती है कहानी रे डायग्राम्स की. Yes. Exemplar question. शिवांश बच्चा, lot of exemplar questions are there. Have patience. थोड़ा भरोसा रखिए, सब हो जाएगा. आपको बस सुनना है, नोट्स बनाने हैं, ध्यान से पढ़ते रहना है, एक भी नंबर नहीं जाएगा. लिखवा लो, ठीक है? चलो आगे आओ. स्पेशल रेस फॉर कॉनकेव मिरर्स. टिल नाउ एनी क्वेश्चन? लेट्स टेक थोड़ा सा डाउट्स. In case the lenses are by 2. Yes, Subnil, that's true. In 11th class, you will have one more formula, जो कि उससे आएगा, read the literature से. Rupesh, बच्चा ऐश्वर्या मैम is not well right now, so SST marathon will try. I can't promise right now, but science math का तो पक्का हो रहा है. PDF रख दी, Telegram, I'll give you पक्का. आज सेशन जब भी खत्म होगा, मैं इसको आज नहीं तो कल कर दूंगा पक्का, लेकिन हो जाएगा. No doubt at all, very good. How many marks this concepts carry? Shivanshu, concept wise marking I don't want to give. मैं तुमको ऐसे झूठा भरोसा नहीं दूंगा. I will not give you any false promises. I am saying chapter wise I'll tell you what marks can come. But these concepts na, these are all small concepts, 1 marker questions. That's it. Yes. बिल्कुल आहान, it will happen in electricity पक्का है, तो लाइट का चैप्टर है. चलो भाई, everybody come forward. आगे आओ. अब तक I don't think there is some major doubt. सारे डाउट सॉल्व हो गए हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मोर देन इनफ ओनली. चलो पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रे. सर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. वेरी इजी. दैट इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रे. पहली रे है भाई, जरूरी. सेकंड, लाइट रे एंड इनवर्स, इसका उल्टा कर दो. राइट, जस्ट रिवर्स मीन्स a light ray passing through principal focus after reflection becomes parallel to principal axis. उल्टा कर दो, सिंपल. उसके बाद light ray passing through center of curvature, it will go back and it will retrace the same path. सर क्यों? अरे भैया 90 डिग्री है ये. This ray is actually falling at 90 degrees, which means angle of incidence is 0. What will happen? Sir, it will go back, retrace the same path. ये 3 रे हैं सबसे जरूरी. ये लास्ट वाली तो फर्जी है, इट्स ओके. ये क्या बोल रही है? पोल पे पड़ेगी रे तो I इज इक्वल टू R होगा. अरे हर बार होता है यार. दिस इज ट्रू फॉर एवरी रे, ठीक है ना? फ्लेक्स ये आएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ग्रेड 12 में थोड़ा सा. यस सेंड्रा, आई टेल यू बच्चा, डोंट वरी. राइट, ओके. नाउ किड्स, वी हैव लर्नड just about 2 types of mirrors, important terms, and we are now learning about ray diagrams. Fine, chalo आगे आओ. 6 cases. These are, sorry, 5 cases actually. 6 नहीं. These are 5 cases, and you should be in a stage जहां पर कोई तुमसे नींद में पूछ लेना, ये केस बताओ. When object is kept beyond center of curvature, क्या होगा इमेज का? तुमको नींद में आंसर आना चाहिए. Right now you should be in a stage where these 5 cases you should be by heart. Sir, by heart रखना पड़ेगा क्या? ना, अरे practice करो बना के. I am telling you, practice all these ray diagrams. How many of you find ray diagrams difficult? कितने लोग practice करते हो and then you tell me still you find it difficult? Yes or no? Right side of mirror, no image. Right side is not reflective at all. Yes, how many of you practice ray diagrams properly? Yes or no? Not me, I practiced recently. Okay. Me? No. Sajid? Everybody? आज के सेशन में I came fully prepared. So if you check out the description, one thing I told you, career counseling. रजिस्टर कर देना उसके लिए, बहुत जरूरी है वो, ठीक है? One thing I told you, career counseling. If you check out the description, I have given you all the important links जो तुम्हारे लिए काम आएंगे. In a session, I have taught you how to draw ray diagram. Proper pencil, pen, compass लेके मैंने तुमको सिखा रखा है, ठीक है? That link is in the description. उसको देख लो अगर तुमको दिक्कत होती है तो. Clear? I have given you hacks also. मैंने तुमको ट्रिक्स बता रखी हैं उसके अंदर, कैसे तुम जुगाड़ लगा के अच्छा डायग्राम बना सकते हो. भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, but still I make it. Fine, ठीक है?
So that is for you, it is in the description, all yours. ठीक, these are easy, very good. First, when the object is beyond center of curvature. रे डायग्राम क्या है सर? टू रे, दो रे उठानी है. पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मेक इट पास थ्रू फोकस. सेकंड रे, मेक द रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल गो बैक. जहां दोनों रेज मिलेंगी दैट इज योर इमेज. ये रे इमेज. क्या बना केस? द केस बिकम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड. उसके बाद at center of curvature, image is real, inverted, same size. ray diagram practice करना है. if you keep forgetting these things, make a chart, चिपका लो दीवार पे. अरे 3 महीने की बात है यार, है ना? कोई पेंट खराब नहीं हो रहा दीवार का, है ना? दीवार की पुताई खराब नहीं हो रही. जस्ट मेक अ चार्ट एंड स्टिक इट ऑन द वॉल. रोज ना 2 मिनट के लिए उसको देख लेना अच्छे से और चले जाना. ठीक, फाइन. I'm telling you very practical things which we used to do. ठीक, fine. अगर भूलते हो तो. Next, beyond. नहीं. अरे this is when the object is kept between center of curvature and focus. Then what happens? Sir, image is beyond center of curvature. कैसी है? Sir, it is real, inverted, magnified. At focus. When the object is at focus, क्या होगा? Did you notice a pattern? Your brain should be able to notice a pattern by now. Pattern देखा तुमने? Object, as it is moving closer and closer to the mirror, the image is going slowly backwards. है ना? Image is going slowly far from the mirror. Image is real, inverted, and image is getting bigger and bigger. Object पास आ रहा है, image दूर जा रहा है और image बड़ा हो रहा है. Do you notice a pattern? Yes or no? Yes. Rupesh will try बच्चा पक्का, but you know, है ना, क्या कर सकते हैं? Far. Do you see this pattern? All these connections are very important. Fine. So when you see कि भाई image is going backwards and getting bigger and bigger, when you keep the object at focus, image will be very far, highly magnified. So what happens? Image is at infinity. It is real. It is inverted. It is highly magnified. ठीक, fine. Object infinity नहीं है. वैष्णवी, अच्छा, ओ वैष्णवी is a good point बच्चा. Between pole and focus पे आएंगे, but before this, case number 1, case number 2, case number 3, case number 4. That's why I said 6 cases. There is one more case number 6, which I'm coming to case number this case, but there is one more case which is not shown here. When the object is at infinity, हम भूल गए क्या करना? Have I not done that अभी तक? When the object is at infinity, क्या मैं भूल गया क्या उसको करवाना अब तक? There is one more case. When object is at infinity, क्या होगा? यहां पर तो है नहीं. Have we covered it? Yes or no? बहुत तेज क्लियर क्या? What is aperture? Anand, it is the diameter of your mirror. You know, everything we were doing till now, all this is object at infinity. When object is at infinity, light rays are parallel to principal axis. So in a way, this case we were doing since the starting. ठीक है? अगर किसी को दिक्कत है भाई, sir, what happens when the object is kept at infinity? कुछ नहीं करना. Light rays are coming parallel. After reflection, they meet at a point, and this point is called as principal focus. यही तो है. ठीक, easy. चलो आगे आओ. So 1, 2, 3, 4, है ना? Object at infinity, image is at focus. When object is at focus, image is at infinity. सब कितना बढ़िया कनेक्शन है यार. तुम बोलते हो भारी है, कहाँ भारी है, right? So 1, 2, 3, 4, and case number 5 is object at infinity. All of them have a pattern. Image is real inverted. बस size change हो रहा है ना भाई, right? One special case. This is a special case. The exception case. When you move object closer than focus. Focus तक तो कहानी आसान थी. Till focus, the story was very simple. Sir, real inverted होगा. Image will keep going backwards. It will keep getting bigger and bigger. That is very easy. We have a pattern. This case is an exception.
and it's important. When you keep the object between focus and pole, what happens? You can choose two types. देखो भाई इसमें ना तुम ऐसे भी कर सकते हो. If you are not convinced with the ray diagram, this is your focus, है ना भाई? You keep your object over here. क्या करना है? Sir, one ray will be parallel. It will pass through focus. ठीक. Second ray will be here, center of curvature. Second ray will be center of curvature. Tuck, 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 tuck. Second ray will be passing through center of curvature. But what do you see? On this side, both these rays are diverging. ये पक्का नहीं मिलेंगी. These two rays are diverging on this side. They will never meet, and I can guarantee that. Bhai, if they were parallel, I would have said meet at infinity. But right now they are diverging. They will never meet on this side. And whenever such thing happens, what do? You trace them back. You trace them backwards inside the mirror. है ना भाई? Right? You trace them inside the mirror and you say, this is my image. Correct? Getting my point? This is my image. Very good. Very good. ठीक है? Fine. So this is one way of making this ray diagram. The one I told you right now, that is also correct. You can choose that. If you only want to take two rays, center of curvature and parallel to principal axis, ये दो rays से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है. ठीक? Now this is special case. Here image is inside the mirror, means it is virtual. The image is standing erect like the object. So image is erect and it is magnified. Whenever a concave mirror has an object between pole and focus, image is inside the mirror, it is virtual, it is erect, it is magnified. एक और चीज, in light chapter you can create this habit. Wherever you have a virtual image, it is erect image here. ठीक है ना? How to know image is enlarged, it diminished. Kavyanjali, ray diagrams will tell this to you, but numericals will also tell this to you. Right now, listen to ray diagrams. We'll talk about numericals in a while. Take, fine, okay. 6 cases, yes or no, because these are the most important 6 cases. If you know this, lens becomes easy. Convex lens will become very easy. Clear है? Practice करना है, याद करना है, रट सकते हो रट लो. Normally, I'm not in favor of cramming, but I'm saying you will practice so much that you will learn it. Anybody can ask you in a sleep and you will answer correctly. Why they take object of the principal axis for reference? Einstein, that is how we have taken a convention. If you take it below principal axis, what will happen? Image will be above principal axis, same thing. But don't worry, that will not happen, what you are asking. Chalo, आगे आओ. Convex mirror done. Concave mirror is done. Let's talk about convex mirror. Convex mirror बड़ा easy है भाई. Important rays. Same rays. Sir, parallel ray, a ray parallel to mirror will diverge. You have to trace it back. Now, if you notice, the focus in this case is behind the mirror. Right? Focus in this case is behind the mirror. Correct? यहाँ पर क्या हो रहा है? This is your convex mirror. Light rays falling like this and you have to trace it back. So focus is here. In the case of concave mirror, what was happening? Sir, light ray was coming like this and they were meeting at this point. So focus was on the left side. Focus of concave mirror is in front of mirror. Focus of convex mirror is inside the mirror. अगर ये समझ गए तो बहुत लाइफ आसान हो जाएगा, है ना? Right? हाँ, very good, Snowjit. You know where I'm getting. Second, reverse it. Very good. Negative focus, positive focus. Rashmi, yeah, that's how focus came. I just explained this now, and थोड़ी देर पहले पढ़ाया. You reverse it, fine, okay. एक और ray. If light ray is directed towards center of curvature, ये light ray जो है, this light ray was directed towards center of curvature. ऐसे,
क्या हुआ इसका? सर इट इज फॉलिंग ऑन द मिरर एट 90 डिग्रीज. व्हाट विल हैपन? इट विल गो बैक, इट विल रिट्रेस द पाथ. तो क्या हो गया सर? इट विल अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम द वे यू डिड फॉर कॉनकेव मिरर. कुछ अलग नहीं है यार, सब कुछ सेम ही है. ये वाला अरे कुछ नहीं है, सेम रे है सर. I इज इक्वल टू आर, हर जगह होता है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पीस लविंग मिरर. मतलब सर पीस मतलब टुकड़ा ना, शांति. A convex mirror एक शांति प्रिय मिरर है. It's a peace loving mirror. Convex mirror says I will not trouble you, है ना. I will only make virtual, erect and diminished image. हमेशा करने की जरूरत ही नहीं है, right? So convex mirror, two cases. When the object is at infinity, which you always know, what will happen? Sir, focus पे बनेगी image, है ना. Image will be at the focus inside the mirror. Virtual, erect, highly diminished, एकदम point size image. In this case, virtual, erect and highly diminished. In this case, at a point anywhere else than infinity. अगर infinity छोड़ के कोई भी point ले लो तो क्या होगा? सर बना देंगे रे डायग्राम. कुछ नहीं है, पैरेलल रे जाएगी डाइवर्ज होते हुए. You trace it back to focus. Take one more ray which is directed towards center of curvature. It will go back. इसका बना दो. ये रहा तुम्हारा इमेज, राइट. कैसी बनी इमेज? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. सो अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. यस, है ना. टिल नाउ व्हाट हैपेंड? तन्वी, वी हैव कवर्ड two types of spherical mirrors. We have done ray diagrams for both. Very good. At pole, नहीं अरे पोल पे if you keep the object at pole मतलब you have touched the mirror. क्या होता है? If you go in any dressing, take a dressing table mirror, उस पे ना उंगली लगा दो, क्या होता है? Sir, object distance is 0, image distance will be 0. Same thing, right? Always produce virtual, erect and diminished image. Very easy. This is the most easy thing. लेकिन if you understand this, concave lens become very easy. I told you, light chapter has a very big hack. बहुत बड़ी कमजोरी है लाइट चैप्टर की. भाई तुम्हारा तो दुश्मन ही है ना. Right now I am talking to you in a war mode. For you, light chapter is an enemy. How to defeat it? Find the weakness. First weakness, sir, it looks like there are two, but they are actually one. If you know mirrors, you know lenses. You have got the mirrors, yes or no? जल्दी बताओ. Have you got the mirrors? बिल्कुल प्रीता, that's why I'm here. Today I'm telling you, you will score full marks if you listen very carefully till the end. Prakriti, refraction. Correct? Aronista, object is at pole, image will be at pole. This is what happens, no? If you keep the object at pole, वो object के लिए spherical mirror नहीं है वो, it's like a plane mirror. Same thing will happen. Yes, imaginary canvas. That's true for all types of mirror. Fine. चलो आगे आओ. So भाई image formation by convex mirror is done, concave mirror is done. Ray diagrams we have to practice. हम दिल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम ray diagram practice करेंगे, right? We all promise to practice ray diagrams at our home by ourselves. खाली तुमने कसम खाली तुमने, मैं नहीं जानता. ठीक है भाई, चलो आगे आओ. Yes, very good. Okay, practice करना भाई, गलती नहीं चाहिए मेरे को. Now comes application. Sir, application कितना easy है यार. Application, sir, is it important? Application is very important. Question will never tell you a convex mirror, a concave mirror. Question will tell you a dentist mirror. An object is kept at this position. A solar furnace mirror, a torch mirror. तो इसीलिए application जरूरी है. Yes, आपने नहीं खाई? अरे खा लो यार, अभी कैसी बात करें. और मेरी मत खाना कोई भी, ठीक है भाई. कोई मेरी कसम नहीं खाएगा, बता रहा हूं मैं अभी. डेंटिस्ट मिरर. डेंटिस्ट मिरर क्या है? अरे सर, डेंटिस्ट मिरर इज अ कॉनकेव मिरर. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेंटिस्ट? डेंटिस्ट को क्या चाहिए? दे हैव टू वर्क ऑन अ स्मॉल टूथ हेयर. दे वांट अ बिग इमेज इनसाइड द मिरर. कौन देगा? अ कॉनकेव मिरर. अ कॉनकेव मिरर हैज अ पावर टू गिव यू वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. और कोई देगा ना? कॉन्वेक्स मिरर तो डिमिनिश देता है. So that's why the case is between pole,
एंड फोकस. सोलार फर्नेस काम क्या है? व्हाट इज द जॉब? एवरी टाइम थिंक ऑफ द जॉब ऑफ दिस थिंग. सोलार फर्नेस का काम क्या है? सर सोलार फर्नेस का काम है, लाइट रेज फ्रॉम द सन आर कमिंग एंड आई वांट टू फोकस ऑल ऑफ देम एट माय कुकर, है ना, एट माय वेसल. मतलब sun is very far, light rays are coming parallel, so you want to keep the cooker or your vessel at a point called as focus. ले कौन सा केस हो गया? when object is at infinity. clear? yes. हाँ nice यार. हनुमान okay. Shahapur, you explain your fellow batchmates in the comment section. It will be very helpful to them. Okay, ठीक है, done. Torches. Torch में क्या होता है? What do you want from a torch? You want light rays to go as far as possible. You want light rays to go till infinity. क्या करोगे? Sir, I will keep the mirror here. I will keep my bulb at the focus. Light rays will fall, become parallel, go very far. बहुत दूर जाएंगी. कौन सा केस? Object at focus. Any doubt? Easy है, but cases you should know. Very good. Sign convention where? Coming यार, don't worry. चलो. Application of convex mirror. Again, sir peace loving mirror. दिक्कत ही नहीं करता. Surveillance and safety. जहां तुमको जासूसी करनी है. Wherever you want to do surveillance. Wherever you want safety. Where you want to do निगरानी. देखना है तुमको दूर से. अच्छा ये हो रहा है वहां पे, right? That is what? That is the convex mirror. Your vehicles, scooty, bike, car, truck, bus, whatever it is, they have a rear view mirror, है ना भाई? Rear view mirror, it's a convex mirror. Wide view mirror, convex mirror. क्यों? Why? Why are we using convex mirror? And why are we not using plane mirror? भाई if you want a virtual erect image, you can use a plane mirror also. क्या जरूरत है भाई convex लेने की? Convex तो छोटा बनाता है image. प्रीतम टेलीग्राम चैनल क्या हो रहा है वहां पे? स्पॉटलाइट कॉनकेव प्रकृति इज लाइक अ टॉर्च. राधिका बिकॉज दे हैव टू सी द इमेज ना. ये दांत को कैसे देखोगे? ऐसे ऐसे देखना ना, दैट्स व्हाई. कोई बात नहीं हर्षिता, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कहानी चालू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त. वाइड फील्ड ऑफ व्यू. When will you take the physics quiz? Ahan? Wait. Let's revise everything today. I will give you a quiz. I mean, I don't want to अभी बताना नहीं चाह रहा मैं, but by the weekend we are planning to give you a competency based quiz. We are planning. Don't worry, we'll give it to you. ठीक है, fine. Reason being, भाई देखो convex mirror ना, convex mirror and plane mirror में the biggest difference is convex mirror has a wider field of view. Convex mirror can see a lot of area. Plane mirror can see this much. You put your hands like this. Can you see above and beyond? No. This is plane mirror. Convex mirror is wider field of view. It can see a larger area and that is what you want. भाई तुमको इमेज छोटी से मतलब थोड़ी है, तुमको चाहिए ज्यादा दिखे. You want to see the complete road behind you. That is why we have a convex mirror. It has a wider field of view. क्या है इसमें? Sir, a wider field of व्यू. हाँ सारांश, कैमरे के अंदर बच्चा वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, लेकिन कैमरा बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, अभी बात नहीं करते. ठीक है चलो. टिल नाउ वी हैव डन concave mirror, convex mirror, we have done ray diagrams, right? Now comes, sir, do we always have to make ray diagrams to find the correct image? तो बड़ा दिक्कत वाला काम है ना. We have a mathematical way, but before we go towards numericals, we have वो नहीं होता बॉस से लड़ने से पहले उनके चमचों से लड़ना पड़ता है, right? Before you fight the boss, you have to fight the small gundas. The first small gunda, the sign convention. But very important, if you know sign convention, then you can at least attempt the numericals. If you don't know sign convention, numerical को भूल जाओ. I'm telling you again, if you know sign convention,
you can at least attempt the numerical. कम से कम तुम कर पाओगे, सोच सकते हो. If you don't know sign convention, भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर तो numerical में, right? हाँ, very good. Okay, now listen. Today I will not complicate this. Today I will give you very simple thing and very straightforward thing, and it will always come like this. What? कितने लोग को वो याद है? Cartesian coordinate system. Do you remember that? Direction of incident light. एग्जाम में हमेशा मिरर ऐसे ही बनेगा. In your exam you will always get mirrors like this, where the light rays will be coming from left only, right? So the direction of incident light becomes this. By if light ray is coming like this, so this becomes your direction of incident light, है ना? Okay. All the measurements in the direction of incident light, they are positive. All the measurements against or opposite to the direction of incident light, they are negative. Listen to me very carefully. I am giving you the very basic, then I'll give you a shortcut also. ठीक, fine. यानी कि all the measurements to the right वाले, क्या होगा right वालों का? Sir, right. Direction of light, right. Oh, दोनों same direction है. It is positive. And the direction starts from pole. Pole is the beginning point, bhai. है ना? Every time when you make a measurement, starting point is pole. So if you are moving from the pole in a direction towards incident light, in this direction it is positive. If you go that side, it becomes negative. Yes, है ना? Clear हो रही बात? So if you go left, it is negative. If you go right, it becomes positive. Very good. तो ये हो गया पहली चीज. ओके, चलो एक चीज बता ही देता हूं यार, मेरे से रहा नहीं जाएगा. If let's say किसी ने मिरर ऐसे बना दिया, if let's say mirror is formed like this, क्या बोलोगे? Distance of object will be positive or negative? In this case, distance of object is positive or negative? Swapnil, if you see very closely, they are not perfectly clear images. Negative. Why? Because, sir, light ray is actually coming in this direction. And to measure the object distance, I am moving in this direction. It is opposite. So yes, you will be negative in this case. So यही है एकमात्र चेंज जो नहीं आएगा. जिन लोगों को वो होता है ना, बहुत सारे बच्चों को होता है सर ऐसे होगा तो क्या होगा. That's why I'm telling you. But it will not happen. What will happen? This. Always the mirror will be formed like this. Right is positive, left is negative. Above principal axis is positive and downwards is negative. आसान तरीका क्या है? कितने लोग को ये वाला प्लेन याद है? Do you remember this? Sir, plus x-axis minus x-axis plus y-axis minus y-axis. It is called as Cartesian coordinate plane. How many of you know this? Yes or no? But it is always negative. Sojit? Yes, you're right. I am telling you, always focus on that. U is always negative. ज़्यादा मत पढ़ो चक्कर में. AV, I just explained this बच्चा. In this very session, I have explained this बहुत अच्छे से. Right? If I explain again ना, बाकी बच्चे. So आप क्या करना? ये छोटी चीज पहले देख लेना, कोई बात नहीं, है ना? हाँ, सीखा था ना? Very good. Same thing, yeah. This is sign convention. This is your pole. Take from the pole, right is positive, sir, left is negative. Up is positive, down is negative. बस और कुछ नहीं होगा. ठीक, क्लियर है साइन कन्वेंशन. अब आते हैं न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले. भाई फॉर न्यूमेरिकल यू वांट फॉर्मूलेज. नाउ वी हैव इन मिरर्स 2 फॉर्मूलेज, इन लेंसेज 2 फॉर्मूलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मिरर्स. और मिरर के अंदर फॉर्मूला एक ही लगेगा. इट इज अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, डजंट मैटर. इफ इट्स अ स्फेरिकल मिरर, फॉर्मूला विल बी सेम. What is the formula? Mirror formula. ठीक है, mirror formula. Mirror formula. 1 upon v plus 1 upon u equals 1 upon f. Sir, what is u? U is the object distance from the pole. V is the image distance from the pole. F is the focal length.
H naught is the object size and HI is the image size. ठीक है. So mirror formula क्या होता है सर? 1/v plus 1/u equals 1/f. सर क्या करें? रट लें? रट लो. I'm not deriving it for you right now, but I'm saying रट लो. I'll give you tricks to remember it. Don't worry. भाई देखो फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, वेदर मिरर और वेदर लेंस 1/v 1/u equals 1/f. दिक्कत होगी प्लस माइनस में, प्लस और माइनस ना. फिलहाल के लिए मिरर फॉर्मूला में होता है प्लस 1/v प्लस 1/u equals 1/f. दिस इज मिरर फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन की बात करें, m equals, मैग्निफिकेशन मतलब होता है, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन? हाउ मच बिगर इज द इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. How much is the height of image compared to height of object? So height of image divided by height of object is the magnification. This hi upon ho is from the definition. ठीक? And mathematically if you derive it, you get minus में v upon u. I am not deriving it right now. Again, time नहीं है, जरूरत भी नहीं है. It is not in your syllabus. Fine. Minus v upon u. This comes mathematically. अच्छा, again. मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज एंड मिरर्स विल बी v अपॉन u. प्लस और माइनस डिपेंड करेगा. तो पहली चीज मिरर फॉर्मूला के अंदर प्लस होता है बट मैग्निफिकेशन में माइनस होता है. कंफ्यूजन होता है? डू यू गेट कंफ्यूज्ड? नहीं, अरे नहीं यार, डेरिवेशन नो, नॉट राइट नाउ. बिल्कुल. टीम 7 गाय, आई वाज सपोज टू गिव यू अ वीडियो बट अभी नहीं किया मैंने ये. वेरी गुड महक, नाइस. देखो मिरर फॉर्मूला के मैग्निफिकेशन में माइनस होता है. मिरर फॉर्मूलाज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, सॉरी मिरर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हैज अ माइनस. एम मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस होता है. मिरर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हैज अ माइनस साइन. माइनस. डन. एम रिमेंबर इट. ठीक. ओके सर, 2 formulas done. चलो क्वेश्चन कर लें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A full length image of a distant tall building can be seen using what? Dash mirror. All these are board level questions. I'm telling you again. I'm teaching you a topic and I'm doing questions on that. And that's what we call as a marathon. आज पूरा खत्म करके जाओगे तुम. U and V नहीं. U is object. V is image. भाई STUV. पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले इमेज आएगी. STUV, V से पहले U आएगा ना भाई. पहले ऑब्जेक्ट आना है तो U हुआ ऑब्जेक्ट, V हो गया इमेज. कॉन्वेक्स, गुड. रिक्वायर, वेरी गुड यार, नाइस. वेरी गुड पीपल. कॉन्वेक्स. करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स. सर व्हाई? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. ओके. ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी. इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट, द बल्ब इज प्लेस्ड डैश ऑफ द रिफ्लेक्टर. वेयर? आई एक्सप्लेन दिस टू यू. Question number B. Harsh, focus. Radhika, focus. At focus. B is concave. B is concave, that is true. But answer is not the focus. Placed concave of the reflector. No, at focus. At focus of the reflector. This is your concave mirror. This is your bulb. Bulb say light will fall on the mirror and become parallel. This is what you want. Correct? Fine. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर सी. अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर. ओहो, मैजिक मिरर. शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर. व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप? People, if you are thinking exemplar questions, in today's session we have a lot of NCERT questions, a lot of exemplar questions, so relax. सब कवर हो रहा है. हाँ जी, अभी हियर कर लो. कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स. फेयर वाले मिरर, यस. स्क्रीन इज नॉट क्लियर. गजाज बचा, चेंज द वीडियो क्वालिटी, है ना. गो टू सेटिंग्स, चेंज द वीडियो क्वालिटी टू 720 is good. For a phone 480 is also good, but 720 is the decent. हाँ, good. अरे वाह. Now listen ना. पहली चीज, she finds the image inside the mirror. In all of these cases, image is inside the mirror. Now, listen to the question. Question is telling you something. Image of head is bigger. Which mirror can give you a virtual erect and magnified image? कौन सा mirror? सर दो ही तो mirror हैं. Concave, convex. Concave mirror ना.
when object is between pole and focus. So this head bigger wala is concave mirror. Okay. Then middle portion of our body, middle portion, this is same size. Which mirror gives you virtual erect same size? Sir, plane mirror. Plane mirror. Okay. Legs smaller. Legs are looking smaller. Which mirror can give you virtual erect and diminished image? Peace loving mirror. कौन सा mirror? Sir, convex mirror. And that's the answer. ठीक, fine, easy. बहुत बढ़िया. अच्छा, सबके आंसर थे. ही. Okay. चलो भाई. With this, we are done with reflection. Reflection खत्म हो गया. ठीक है. With this, we are done with reflection. अब refraction कर लें फटाफट थोड़ा. See, reflection में I spent some time. Refraction में I will not spend some time. Why? Because refraction में the only thing different is refractive index. Apart from that, everything is equivalent to reflection. It can be plain also. Write in question number A. No, a tall building. That is why the word tall is given to you. It's a tall building and you have to see it completely. Best is a convex mirror. ठीक. हाँ. Don't worry. अरे refractive index पे I will spend time. But apart from that, I will not spend time. Why? I will give you all the tips and tricks because that is same as your mirrors. हाँ जी. No, अरे नहीं. Team 7 का है. अब इतना बड़ा plane mirror कौन सा लाओगे? Convex mirror है तो life difficult क्यों करना है? Okay? Very good. भाई refraction क्या होता है? In very simple words, refraction is the bending of light when it travels from one medium to another. ठीक? इसको बोलते हैं हम refraction. ठीक? Okay. Two types of medium, rarer medium and denser medium. Sir, rarer and denser मतलब in terms of optical density. Sir, what is optical density? Optical density, it's a measure of how it treats light. है ना? How much light becomes slow in a medium, that's how we say it is optically denser, right? तो जिस medium के अंदर light की speed ज़्यादा slow हो जाएगी, that is a denser medium. जिस medium में light की speed उतनी slow नहीं होगी, थोड़ी fast होगी, compared to other medium, उसको बोलते हैं rarer medium, है ना भाई? ठीक है, it's a comparative term. Rarer compared to what? इसके. Denser compared to what? इसके. Fine, right? So two types of medium है, rarer medium और denser medium. ठीक है. लाइट क्या है कि भाई बेंड कब करेगी? When it travels from one transparent medium to another of different optical density or refractive index. Optical density का एक numerical measure है, measurable quantity है refractive index. Fine. Yes. More than one magnification. Shivansh. Okay, I hear a question. So everybody, there was one question I missed. कि भाई why convex mirror or more than one? What? नहीं, अरे शिवांश, it forms less than one magnification. I'll come to it. Virtual, erect and diminished. What is magnification? See, magnification पे, what is magnification? It is height of image upon height of object, right? In convex mirror, height of image will always be less than height of object, correct? In convex mirror, height of image will be always smaller than height of object, which means m will be less than 1. m will be less than 1. अच्छा, एक और चीज, virtual है, erect है, इसका मतलब sir, height of image is above principal axis means positive. Height of object is above principal axis means positive. Positive upon positive means positive. So magnification is less than +1. Magnification positive होगा और 1 से कम होगा. It is about convex mirror. ठीक? What is the magnification of plane mirror? Magnification of plane mirror. Now that you have understood magnification, you tell me magnification in plane mirror. Yes. 1. Height and size in the magnification formula. No. Same. Rupesh, I'll do. 1. Not 0. 1. Sir, why? Definition of magnification. M is equal to HI upon HO.
in a plane mirror, height of image is equal to height of object. Height of image is equal to height of object. Means hi upon hi is equal to 1. Magnification only tells you कि भाई how much bigger the image is compared to object. Tension वाली बात ही नहीं है. If the image is virtual and erect, magnification is positive. If image is real and inverted, magnification is negative. बस इतनी सी बात है एकदम. ठीक? चलो आगे आओ. Now, when light ray goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Sir, normal होता है क्या इसमें? हाँ जी. The point where the light ray strikes the interface of the two mediums, that point is called as point of incidence. ठीक? तो light ray, it bends towards the normal when it goes from rarer to denser medium. It bends away from normal when it goes from denser to rarer medium. ठीक? Fine? हाँ. कौन सा मिरर यूज होता है? मन्नत, स्ट्रीट लाइट में बच्चा होता है कॉन्वेक्स मिरर. अच्छा, इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन यार. एवरीबॉडी, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मन्नत. मन्नत इज सेइंग स्ट्रीट लाइट हैज व्हिच मिरर? यू टेल मी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? सर, कार हेडलाइट हैज कॉनकेव मिरर. स्ट्रीट लाइट हैज व्हिच मिरर? कॉन्वेक्स और कॉनकेव? क्रोबी, यस? नो, आई डोंट नो डेरिवेशन. खुश? यस. Convex. Convex. हाँ. Sandra, it is negative when image is real inverted. It is positive when it is virtual and erect. Yes? हाँ. देखो, listen. Again, think of the role. Your car's headlight has a role of what? कि sir, when the car's headlight, it wants the light ray to be narrow and to go as far as possible. Road तो इतना ही है ना भाई. Road is this much, and your car's headlight, you want light ray to go as far as possible so that you can see the road. But street light, what happens in street light? Street light में क्या होता है? You want light ray to illuminate as much as of the street. आपको ज्यादा street cover करना है. Imagine if you are using concave mirror in the street light, what would happen? क्या होगा? कितनी street light लगेगा यार? Your street lights, all the street lights, they will be giving you, if you use concave mirror, all of them will give you parallel beam. Arey, this is not possible. How much of the street light will you make? So what do you want? Sir, I will make a convex mirror, so that if the bulb is kept na, light rays will diverge. They will illuminate a lot of street. That is why we use convex mirror in street lights. Clear? Yes or no? Jaldi batao. Yes. Where the bulb is placed in street light? Mannat, you can say focus, but doesn't matter. You have to spread the light. So in this case, it doesn't matter that much. Bilkul. Light street. इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स अनमोल बच्चा कम से कम 1 से 2 न्यूमेरिकल पक्का आएगा. करेक्ट. हैज लेंस नॉट मिरर? अभिनव, इट हैज मिरर ऑल्सो. You will see the lens also. You will see like it's a glass casing to protect it. Lens नहीं होता है, it's a glass casing which acts slightly like a mirror, लेकिन उसके ऊपर रिफ्लेक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिरर. ठीक है ना? हेलो रूपा. क्लियर? कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव? यस, मी. क्लियर हो गया ना भाई? डोंट मेक मिस्टेक. द रीजन आई एक्सप्लेन दिस इज बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन. फाइन, चलो आगे आओ. रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल. इजी. चलो, तो भाई लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द डेफिनेशन रिमेन सेम भाई. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द angle between refracted ray, not reflected, refracted ray and the normal is called as angle of refraction. Fine. So R is less than I. ध्यान से देखो, if light ray is bending towards normal, this is supposed to be I, लेकिन R तो कम है I से, so that's why R is less than I in the case of light ray going from rarer to denser medium. And R is more than I in the case of when light ray goes from denser to rarer medium. अच्छा, एक चीज और ध्यान देना everybody.
notice, if light ray is going from denser to rarer, these arrows are very important, because if this is how the light ray is coming, the first one, this is I, and when the light ray is going from denser to rarer, this is I. I have seen lot of students, what they have a क्या होता है intuition हमारा, सर normal ये है, light ray ऐसे है और ऐसे है. They always think this is I and this is R. Depends on from where light ray is going. This is when light ray is going from there to here. If light ray is going from here to here, this is I. Why? Because this is your incident ray. ठीक है, गलती नहीं चाहिए भाई. Yes. हाँ, Fermat's principle of least time Rupesh. You're right. Correct. ठीक है. शिवांश, board exam is on the NCERT and exemplar level. उससे ऊपर नहीं जाता है वो. So you can say all questions are important. Fine. चलो आगे आओ. Now this is what you guys were saying. Sir, refractive index is very difficult, na? Listen. Everybody listen to me very carefully. What is refractive index? Sir, you said optical density. I told you optical density is a measure of how much slow the light becomes in that medium. That number which determines optical density is refractive index. Refractive index is a measure of optical density. So in a way you can say it is a measure of the factor by which the speed of light is reduced in a medium. ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है कि भाई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, स्पीड ऑफ लाइट विल रिड्यूस मोर, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर. सिंपल सी बात है एकदम, है ना. ठीक है, तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी. क्लियर, मतलब ज्यादा डेंसर होगा मीडियम. यस सुष्मित, I'll come, I'll derive, I'll give you this formula. Now देखो, अब देखो. Now what is refractive index? It is a measure of the factor of how much the speed of light decreases. मतलब if you think about absolute refractive index, absolute मतलब नंबर बताना ही काफी है. N, it is the speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium. क्या बोल रहा है ये? It is comparable to vacuum. Absolute refractive index is the refractive index with respect to vacuum or air, we can say. In this case, vacuum and air we take one and the same thing because थोड़ा distance में ना हम दोनों को same मान लेते हैं. For shorter distances, we can say vacuum and air are both equivalent. Fine, ठीक है. Speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. मीडियम के कंपैरिजन में वैक्यूम में लाइट कितनी तेज थी, और यू कैन से मीडियम में लाइट कितनी हो गई, हाउ मच लाइट हैज स्लोन डाउन. सो इन अ वे दिस V will always be less than C. This V will always be less than C because speed of light cannot be more than vacuum anywhere. वैक्यूम से ऊपर स्पीड हो सकती है क्या लाइट की? ना. वैक्यूम में कितनी होती है? सर लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. फाइन, इससे तो कम ही होगा, which means your refractive index will always be more than 1. Why am I asking this to you? Because it is one of the question in your practice paper. Practice या sample किसी में तो था ये question, right? This is a question asked by CBSE previously. That is why I'm telling you. Okay, why cannot an absolute refractive index be less than 1? Why? Because a speed of light in that medium can never be more than speed of light in vacuum. That's why. Correct. Which chapter next? Human eye. Fine. So this is clear. Absolute refractive index is the refractive index with respect to vacuum. Without even saying, you know that. If someone tells you refractive index of glass is 1.5, you know it is with respect to vacuum. बोलने की जरूरत ही नहीं है. ठीक, चलो. Next is relative refractive index. Relative refractive index. Now here comes a small terminology. लैंग्वेज की बात करते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज की. इट इज रिटन एज N21. सिंपल N मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इफ यू सी दीज नंबर्स N21, इसका मतलब N21 का मतलब है 2 with respect to 1. 2 with respect to 1. In ICSE, normally in Selena and ये सब में ना क्या होता था, ऐसे लिखते थे mu21 N21. इसका मतलब भी सेम है. Right, this means
also the same thing, but in NCERT, in CBSE, N21 is the famous convention. ऐसे ही मिलता है और ऐसे ही लिख दो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. जो पहले है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बाद वाले के, फाइन, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ओके. N2 अपॉन N1. अब ये चीज क्या होती है? N21 मीन्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. जो पहले है दैट विल बिकम न्यूमरेटर, जो बाद में है दैट बिकम डिनोमिनेटर, राइट. सो N21 के अंदर 2 कम्स फर्स्ट ना, सो N2 अपॉन N1. दिस इज absolute refractive index of 2. This is absolute refractive index of 1. This is N21 is relative refractive index of 2 with respect to 1. Right? Getting my point? ये clear हुआ? पहले ये बताओ. Is this thing clear? First of all, you tell me this. जल्दी बताओ. Is this clear? Yes or no? What is 1 and 2? Oh, mu h नहीं. Oh, that is not h. Mu 2 1. This is for ICSC. ICSC के अंदर नॉर्मली बच्चे ऐसे लिखते हैं mu 2 1 और n2 1. It means 2 with respect to 1. Same thing is equal to n2 1. Yes. Repeat. Okay. Listen. I'm saying n is absolute refractive index, which means speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. Fine. If I write n21, this is relative refractive index. Relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. The number which comes first, uska refractive index with respect to the number which comes second. Right? Refractive index of first number with respect to refractive index of second number. Fine. Okay. Now, whatever is the first number, that becomes the numerator. N2 upon में N1. This N2 is what? It is absolute refractive index of 2. N1 is absolute refractive index of 1. See, absolute refractive of 2 क्या है? With respect to vacuum. Absolute refractive index of 1 क्या है? With respect to vacuum. Right? Now, N21 क्या है? It is relative refractive index. N2 single is absolute refractive index. N1 single is absolute refractive index of 1. जल्दी बताओ. हाँ अनमोल बच्चा करेंगे ना, आज ही करेंगे, डोंट वरी. क्लियर है? Is this clear? Because if this is clear, now I'll tell you the formula also. What is N2? Sir, N2 is vacuum upon speed in medium 2. N1 is vacuum speed upon speed in medium 1. Divide कर दो. Sir, N2 upon N1 is coming out to be how much? C cancel. V1 by V2. Convinced? Agreed? Formula is equal to V1 by V2. Fine. Speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. So you can also think refractive index is inversely proportional to the speed of light in that medium. Clear? It's so confusing. Nah, come on guys. It's not confusing here. Just listen to me very carefully. No. Rasha, this is a short on the channel because both have almost similar refractive index. That's why. Clear hai? Jaldi. Yes or no? Fatafat. The reason I'm spending time on this because you said it is difficult. I'm proving it to you it is not. If this is clear to you, that is the whole formula. और कुछ नहीं है. Yes? Not clear? Usha, why? Come on. N21, relative refractive index. Number which comes first will be numerator N2 upon N1. N2 is what? Absolute refractive index of second medium. Right? N1 is absolute refractive index of first medium. N2 upon N1 कर दो. क्या बनेगा? V1 upon V2. अभी तो मैंने prove किया. ठीक? Fine. चलो आ गया. Laws of refraction भी होते हैं क्या सर? Easy होते हैं. Like reflection. First वाला. The incident ray, the normal and refracted ray, they all lie in the same plane at the point of incidence. अरे sir, same thing was in reflection ना? Easy. Second law is important. Snell's law. Snell's law. The ratio of sine of incidence to the sine of refracted ray is constant. Sine I upon sine R is equal to N2 upon N1 is equal to N21 is equal to V1 by V2 is equal to constant. नील बटे सन्नाटा. सर कुछ समझ नहीं आया.
सर कुछ भी समझ नहीं आया, क्या बोल दिए? यस, कुछ समझ नहीं आया ना इसमें? V1 is numerator y. Aditya, N21 is equal to N2 upon N1. What is N2? C upon V2. What is N1? C upon V1. Refractive index is inversely proportional to velocity in that medium, है ना? Velocity of light in that medium. If refractive index is high, velocity in that medium is low. Inverse relation हो गया ना भाई? N2 upon N1 is equal to V1 by V2. Simple. नहीं आया ना? हाँ. Yes. अब listen. Yes, this is your point of incidence. Okay, light ray is going like this. अरे यार drawing कब सुधरेगी मेरी? हाँ जी, this is your I and this is your R. ठीक? Yes sir, very good. This has refractive index N1. This has refractive index of N2. Snell's law is telling you very simply कि भाई refractive index from mathematics they have derived it, right? Snell's law है ये. law कैसे निकलता है? experiment से. fine. so क्या पाया गया? right? using lot of experiments, in each and experiment we did the same thing and then we found कि भाई sine, what is sine? trigonometry याद है? sine of I upon sine of R is equal to N2 upon N1. एक बात बताओ सर, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम दैट टू दिस मीडियम बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब N2 इज डेंसर मीडियम कंपेयर टू N1, है ना भाई? N2 इज डेंसर कंपेयर टू N1. ये तो पक्का हो गया, राइट? Why can't we write N1 upon N2? रुपेश, आई एम टेलिंग यू बच्चा, डोंट वरी, लिसन. वन थिंग इज फॉर श्योर कि भाई N2 इज मोर देन N1. ओके, नाउ थिंक sin I upon sin R होगा या sin R upon sin I? In this case, angle I will be more than angle R. Now you tell me, sin values कैसे होती हैं? 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. As you move from 0 to 90, value of sin of angle increases, decreases. अगर angle बड़ा होगा, sin value will be more or less? Yes, Hanshi, come on, tell me. Increasing ना, right? It will be increasing. 0 पे होता है 0, 30 is 1 by 2, 45 is 1 by root 2, मतलब 1.414, 60 is root 3 by 2, 90 is 1. It is increasing. Angle ज़्यादा, sin का value ज़्यादा. So अगर N2 upon N1, sorry, अगर N2 is more than N1, sin I upon sin R में क्या होगा? It will be more than 1. N2 N1 में बड़ा कौन है? सर N2. ऊपर कौन आएगा? सर is equal to N2 upon N1. This is one more method. लेकिन I have a better method. This is one way. This is how you can write the Snell's law. Simply कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है, ये लॉ लिख देना, कुछ नहीं, एकदम easy है. But when you use this law in numericals, let me teach you a method which will never give you a wrong result. यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ? Slightly is it clear to you? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, right? हाँ, more than one. Is it clear? 60%. I'm not saying 100%. I'll give you a method for 100%. This is only for writing. कि भाई sin I upon sin R is equal to refractive index होता है, which is N2 upon N1. ठीक है ना? 0.1%. ठीक, fine. Okay sir. Okay, fine. I understood. Now I'm saying, imagine a method where doesn't matter how you apply, never write sin I upon sin R. Let's say light ray is going like this, right? Let's say light ray is going like this. This is your I and this is your R. Sir, now what will happen? अब कैसे लिखेंगे Snell's law? How to apply Snell's law, है ना? Let's say this is N1 and this is N2. I'm tweaking everything. मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं so that you understand. If everything goes beyond your way, अगर तुमसे हर चीज अलग हो जाती है तब भी तुम आंसर कर पाओ. That's why. Yes, I have a doubt. Ask a doubt. Which question? Bhumi, I'm telling you, this
The thing I'm explaining right now, this is a question. From here only refractive index question will come. Come on. When is now valid? Conditions. बच्चा conditions आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूं अभी. Good, Meeta. Very good. बच्चों, listen to me. Kids, I know. Many of you want to ask about derivations, conditions, lot of things. But today it's a very important session. But I don't want to deviate from this session because otherwise, anyway, this session 2 घंटा हो गया हमको. समझ में आ रहा है? 2 घंटा हो गया. अभी भी लाइट पे हैं हम लोग. Which means this is going to be a long session. I don't want to deviate the class from extra questions. That is why I'm not taking all your questions about different things. Please understand, है ना? तुमको अच्छा लगेगा लेकिन 100-150 बच्चों को और अच्छा नहीं लगेगा. That's why. ठीक. Important is you have to get marks in your board examination. हम आराम से बातें करेंगे यार. गैलेक्सी की, मिल्की वे की, रिलेटिविटी की, है ना? स्ट्रिंग थ्योरी की, है ना? स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटीज आराम से बात करेंगे. आज नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं आज. सुनो ध्यान से. How to apply? कैसे अप्लाई करना है? N2 मीडियम के अंदर कौन सा एंगल है? सर R. इन मीडियम N2 which angle is there? R ना. Multiply both. How? Sine of R multiplied by N2. One side done is equal to. Now you come to this. N1 मीडियम के अंदर कौन सा एंगल है? सर I. राइट. सो यहां मल्टीप्लाई कर दो. सर N1 इंटू साइन ऑफ I रख दो इक्वल साइन ऑफ I इंटू N1. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ. अब मेरे को ये बताओ, इन दिस मीडियम विच वन इज डेंसर? इन दीज टू मीडियम्स विच मीडियम इज डेंसर? N1 और N2. कौन सा डेंसर है? नंबर पे मत जाओ सर, हमेशा N1 ही रेयरर होगा. कौन बोला? लॉजिक लगाओ. यस, बट व्हाई ओनली साइन? तानवी, इट्स अ लॉ बच्चा. इट केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, राइट? सो दैट्स व्हाई. Mathematics in grade 11 you will learn about the derivation proper. Relax, don't worry. Break, I'll give you break, don't worry. After light I'll give you break, right? Fine. N1 no, not N2. N1 is denser. अरे भाई एक चीज देखो ना, light ray is going from this medium to that medium and bending away from normal, which means sir this is denser, that is rarer. N1 will be more than N2. ये तो पक्का हो गया. Right? So refractive index of N1 with respect to N2 will be more than 1 or less than 1? N1 upon N2 will be more than 1 or less than 1? Sir, more than 1. Question ने पूछ लिया तुमसे. By chance, let's say if the question asks you, find the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. Means you have to find N1 upon N2. क्या करोगे? Sine of R upon sine of I is equal to N1 upon N2. कैसा आएगा? मोर देन 1 आएगा. क्लियर? क्लियर? जल्दी. अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया, इफ क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मींस लुक एट द लैंग्वेज. इफ क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, व्हाट विल यू डू? सर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब पहले 2 आएगा, मतलब ऊपर 2 आएगा. N2 upon N1 पूछा है, राइट? सो क्या करना है? इसी फॉर्मूले के अंदर व्हाट विल यू डू? सर आई विल डू N2 upon N1 is equal to साइन ऑफ I upon साइन ऑफ R. क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले तुम कर दोगे ना भाई. एंड दैट्स हाउ द क्वेश्चंस ऑफ स्नेल्स लॉ कम. यस, करेक्ट. जल्दी बताओ. व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ, इससे क्वेश्चन आएगा और ऐसे वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. अदरवाइज फंस जाओगे. इज इट क्लियर? जस्ट रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? 2 with respect to 1 means N2 upon N1. 1 with respect to 2 means N1 upon N2. अच्छा sir, this will be more than 1. N1 upon N2 will be more than 1. You tell me, N2 upon N1, it will be more than 1 or less than 1? Sir, N2 will be less than 1 ना. So यानी कि N2 upon N1 will be less than 1. इसकी वैल्यू आएगी less than 1. Absolute refractive index can never be less than 1, but relative refractive index can be less than 1.
गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है भाई? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1. एग्रीड? भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ऊपर कौन होगा? बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1. यस, yeah, Ritika, I'm explaining, bacha. See, N1 is the denser medium, N2 is the rarer medium. Sir, how do you know? Look at the ray diagram. Bending away from normal, rarer. Take. If the question asks you, find the refractive index of 1 with respect to 2, means N1 upon N2. है ना? 1 with respect to 2 means N1 upon N2. ठीक है sir, I will find it like this. If question asks you, क्या लूँ? कलर खत्म कर दिया है मैंने. If I ask you, if the question asks you, find the refractive index of 2 with respect to 1, N21 means N2 upon N1. How will you find? Sir, I will find it like this. Easy? Yes? I just explained it again, बच्चा. ठीक है? Clear है? इसका मतलब absolute refractive index कभी 1 से कम नहीं होगा. क्यों? Because it is between vacuum and a medium. But relative refractive index can be less than 1. Sir, कैसे? Glass has refractive index Ng is equal to 1.5. I am giving you true values. Water has refractive index of 1.33. Now you tell me. This is absolute refractive index. This is absolute refractive index. Refractive index of glass with respect to water will be more than 1. Sir, why? Glass with respect to water is equal to Ng upon Nw. मतलब 1.5 upon 1.33. This will be more than 1. Refractive index of water with respect to glass will be Nw upon Ng. मतलब 1.33 upon 1.5. This will be less than 1. ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. वो ऊपर वाला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. क्लियर हुई बात? आहान बच्चा, ऑप्टिकल डेंसिटी भूल जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखो. ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है. राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस. आई विल नॉट गो इन डिटेल. जल्दी बताओ. रेसिप्रोकल, यस यू कैन डू. डिपेंड्स. अगर क्वेश्चन ने पूछा है देन ओनली डू रेसिप्रोकल. यस. नेगेटिव वैल्यू क्या थी? नो. कब यूज होगा? काव्यांजलि, हमेशा. इन एवरी न्यूमेरिकल यूज द मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला. यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक. क्लियर एवरीबॉडी? वेरोनिका, आई एम सेइंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी, सॉरी, relative refractive index can be less than 1. This is the proof. Absolute refractive index can never be less than 1. Why? C upon V. C will always be bigger. ठीक है? Fine? हाँ. Is due to imaginary converse. That's how ray optics begins. Light travels in straight lines. And here it bends. ये सब आता है for maths principle of least time से. In BYJU'S the learning app it's explained. Today I'm not going to go in that. हाँ जी. Diamond 2.42. चलो भाई, क्लियर है? लिखने के लिए स्नेल्स लॉ अच्छा है, सुंदर है. यूज करने के लिए कैसे करना है? I told you. N1 into sin of I1 is equal to N2 into sin of R1. बस. ठीक? चलो आ गया. Question. Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is इतना. जल्दी बताओ. Answer. Come on. Ashni, N1 upon N2. Tanvi, my name is Saurabh. Aditya, yes, it can be more than 1. Manshi, answer out. 2 into 10 to the power of 8 meter per second. Very easy, sir. C, value of speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Glass का कितना है? 1.5. Sir, Ng is equal to C upon V. है ना भाई? क्या पूछा हुआ है? सर V पूछा हुआ है. इधर ले जाओ. V is equal to C upon Ng. फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया 2 into 10 to the power of 8 meter per second. Means speed of light in glass is slow. That is true. एकदम बढ़िया. B,
The refractive index of diamond is 2.42. Somebody was asking me right now. Correct, Shrutika. What is the meaning of this statement? Tell me. What is the meaning? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? Sin I upon sin R. Whenever someone talks about meaning of refractive index, what does refractive index mean to you? How much the speed of light will become slow in that medium. That is the meaning of refractive index for you. That is the meaning of optical intensity for you. Yes, है ना? Correct. See, everything is fine. But what does it mean to you? क्या मतलब है तुम्हारे लिए? क्या समझते हो इससे? इसका मतलब है, sir, speed of light will become slow in diamond. How much? 3 into 10 to the power 8 divided by 2.42. इस फैक्टर से स्लो हो जाएगी. Fine. क्या लिखोगे? Refractive index of diamond is 2.42. This means that speed of light in diamond will reduce by a factor of 2.42 compared to its speed in air or vacuum. In other words, speed of light in diamond is 1 upon 2.42 times the speed of light in vacuum. That is what it means to you. And that's how you give a good answer. Clear hai? Yes? Hanji? Very good. Nice, Divyansh. That's good. Next question. All these are textbook questions, NCERT, exemplars, everything is covered today, बच्चों. तुम समझ रहे हो क्या चल रहा है? एक टॉपिक पे you are solving NCERT questions, exemplar questions, good questions, board level questions. Ultimate तैयारी बेटा यही है. सुनो, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. मतलब क्या होता है obliquely का? What is the meaning of obliquely? New term. Obliquely. Normally means this. Obliquely means at some angle. Obliquely means कि भाई angle of incidence is not 0. हाँ, तिरछा, good. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Air से water, क्या होगा? Towards the normal. Yes? I know, Dhanvi Bacha. I'm just speeding up. Correct? Sir, light ray is going from rare to denser medium. It means it will bend. Bend towards normal, which means speed of light in water is slower. State laws of refraction. कर लोगे ना यार? Laws of refraction तो easy है. The incident ray, refracted ray, normal. Sir, easy. First वाला, second वाला. A. Simple. कहानी नहीं लिखनी है. Answer चाहिए. Fine. चलो. Refraction through glass slab. If you understood that one, now I'm going to speed up. अब ध्यान से देखो. The emergent ray is parallel to incident ray. Sir, कुछ है ही नहीं इसमें. It is simple refraction. This is air. This is glass. Light ray on this interface is going from air to glass. It is going to bend towards the normal. Sir, I ये रहा. This is R. Very good. ठीक है भाई. AB is the refracted ray. OA is incident ray. ठीक. Now at this interface, light ray is going from glass to air means denser to rarer, going to bend away from normal. So this is my emergent ray. Take this BC is my emergent ray. Now in this case, what happens? It's very easy to prove actually, but बहुत easy है prove करना. लेकिन सुनो, I'm not doing it right now. In glass slab क्या होता है? I and E are equal. जितना bending towards normal glass के अंदर हुआ था, how much bending happened towards normal inside the glass? Similar amount has been bending away from normal outside the glass. तो यानी कि compensate हो गया. यहाँ towards normal bend हुआ, यहाँ away from हो गया, दोनों में कट गए. मान के चलो I is equal to E means emergent ray is parallel to incident ray in this case. ये incident ray. अगर glass नहीं होता, if glass was not there, this is how the ray would have gone. This is how the ray would have gone. Emergent ray is parallel to incident ray, but there is one difference. Yes, it is parallel. The angle between emergent ray and incident ray is 0 only. Difference क्या है? Sir, थोड़ा ना बीच में gap आ गया. That is called as lateral displacement. ठीक? इतना ही है glass slab. हाँ. Yes, Ashraf. चलो, come on. अब
कहानी आती है जिन लोगों ने मिरर समझा था, पीपल हु अंडरस्टूड द मिरर। ये 5 मिनट की चीज है बस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों भाई? मिरर में क्या होता था सर? मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता था। In mirror, reflection used to happen. In lens, refraction will happen, means light ray will go on the other side. In convex, it will converge. Converge होगी, ठीक? It will converge and pass through focus. A parallel ray to principal axis is going to pass through focus in the case of convex lens. ये होता है convex lens. अच्छा, जिन लोगों को दिक्कत होती है, ये था convex mirror. This was convex mirror. This is convex lens. This was concave mirror. This is concave lens. तुम्हारी मर्जी, जैसे याद करना कर लो, ठीक? फाइन। रिवर्स इट, रिवर्स कर दो। Light ray passing through focus will become parallel to principal axis, and the light ray passing through optical center will not deviate. Yes, correct. No refraction will occur. Very well, nice here. Help each other. Very good. How many marks? Ritika, normally it can be asked in Snell's law. As such, बहुत ज़्यादा नहीं आता. Maybe they will ask for a diagram. That's it. Ashni, lateral displacement क्या था? It is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. That is called as lateral displacement. Fine. Concave lens, diverging lens. Convex lens क्या है? Converging है. वहां पर converging कौन था? Converging mirror was concave na? Concave is similar to convex lens. Concave lens is a diverging lens. It is thinner in the middle and thicker on the edges. Convex lens is a converging lens, thicker in the middle, thinner on the edges. ठीक? Light ray which is parallel to principal axis becomes diverge. But if you trace it back, it appears to pass through focus. A light ray which is directed towards the focus will become parallel. And second, optical center से no deviation will occur. These three are important rays. Yes, है ना? Tongue twister. Hee-ha. Fine. Question. Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens as shown in the figures? जल्दी बताओ. Answer quickly. Refractive index of flint glass versus alcohol. 1.46 by 1.36 is the refractive index of flint glass with respect to alcohol. Alcohol with respect to glass 1.36 by 1.46. 2. अरे good यार. Sir कुछ है ही नहीं इसमें तो. Light ray is passing through focus and becoming parallel. This is सही. This is wrong. Focus से focus wrong. This is अरे रे क्या है ये? This is wrong. अरे sir second is the right answer. Passing through focus will emerge parallel. ठीक, चलो. Image formation in convex lens. Here, this is exactly like concave mirror. Same cases. Infinity. वहां क्या था? Object was at infinity. Image is real, inverted, highly diminished at focus. ये रहा at f2. Point size real inverted. इसके अंदर क्या होगा ना? उस तरफ भी f1 और 2f होगा, इधर भी f और 2f होगा. दोनों साइड बराबर. ठीक. f is half of 2f लिखा हुआ है सामने. वो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर. 2f is like center of curvature, f is like focus. Beyond 2f मतलब in concave mirror beyond center of curvature क्या होता था? Sir real, inverted, diminished. Between center of curvature and focus image बनती थी ना, right? The image was between center of curvature and focus. Same thing. Beyond 2f image will be real, inverted, diminished between f2 and 2f2. ये क्या था? C. ये क्या है? f. Same चीज. Yes, है ना? Correct. Very good. At 2f क्या हो रहा है? मतलब at center of curvature. In concave mirror, when the object was a center of curvature, क्या होता था? Image was real, inverted, same size. Same thing, same size, real inverted. बस एक चीज देखो. In concave mirror, all the real inverted images were in front of mirror because it's a mirror. In convex lens, all the real inverted images are on that side. अब ये तो easy है ना भाई, क्योंकि lens है. That's why. Fine. चलो आगे आओ. Between f and 2f, मतलब
व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस क्या होता था, इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, इमेज चला गया 2f के पार, बियॉन्ड 2f एनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड, करेक्ट, हाँ वेरी गुड, यस आगे आओ। एट f when object is kept at focus of a concave mirror, image is real inverted highly magnified, कहां पे, infinity पे, same thing at infinity infinite size real inverted। देखो रे डायग्राम बड़े इजी हैं, अगेन रे डायग्राम में दिक्कत होती है, आई हैव गिवन यू अ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, उसमें समझा रखा है, ट्राई करके देखना, बढ़िया, ठीक। चलो सर ये भी एकदम बढ़िया। बिटवीन f and o एक्सेप्शनल केस लाइक इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में एक्सेप्शनल केस होता था ना, सेम यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and o, यस शिवानी इलेक्ट्रिसिटी आएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर के मतलब ह्यूमन आई के बाद, ह्यूमन आई छोटा चैप्टर है। बिटवीन f and o वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इनसाइड द मिरर, यहां पर always real inverted images were forming on the right side, in mirror on the left side। मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज कहां बनती थी, राइट साइड, यहां कहां बनेगी, लेफ्ट, उल्टा हो जाना है बेसिकली, whatever happens normally ना उसका उल्टा, whatever happens normally in other cases उसका उल्टा करना है हमको। So virtual image in the case of convex lens is formed on left side, so object and image are on the same side, ठीक, right, this is सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, बाकी एकदम सेम है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। तो भैया अगर तुमको आते हैं कॉनकेव मिरर के केस तो कॉन्वेक्स लेंस एकदम इजी है, राइट है ना, समझ गया, बहुत बढ़िया। हाँ ब्रेक आई विल गिव यू, डोंट वरी, आफ्टर लाइट आई विल गिव यू अ 5 मिनट ब्रेक, पानी वानी पी के आना। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, अगेन कॉन्वेक्स मिरर क्या था, पीस लविंग मिरर, कॉनकेव लेंस क्या है, पीस लविंग लेंस, बोलता कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आई विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, एकदम इजी। इंफिनिटी पे इमेज बनेगी फोकस पे, कैसी, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। कहीं और कैसी बनेगी, बिटवीन f1 एंड o यहां बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी हमेशा, करेक्ट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा फटाफट, यस सही पकड़े ना, बहुत बढ़िया। हाँ 10 मिनट, अरे वेट we have to go a long way बच्चों, come on textbook question, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object A, yes कहां होना चाहिए, wide lens है two focus AV, because on this side and that side we had to name something ना, तो हमने सेम रखते हुए बोल दिया 2f f f 2f, that's it, come on, B B B B B good, बढ़िया। At twice the focal length मतलब at 2f, easy, at twice the focal length। एक और question, draw ray diagram showing the image formation by a concave lens when object is placed at the focus of the lens, बना दोगे, concave lens when the object is placed at focus of the lens, बना दोगे। concave lens has only two cases, one infinity, second anywhere else, इमेज कहां बनेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना, इंफिनिटी नहीं, अरे दोस्तों यही तो गड़बड़ हो रही है, अरे कॉनकेव लेंस है, इंफिनिटी मत बोलो, यस करेक्ट, इमेज विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, राइट, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, अरे सर क्या बात कर दी, क्या बनेगा, रे डायग्राम बनेगा, सेम बनेगा भाई, फर्स्ट का फोकल एफ पे रखा है तुमने, क्या बनेगा सर, इमेज यहां बन गई, कोई बात नहीं। सेकंड बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, यहां रख दो ऑब्जेक्ट को, क्या बनेगा सर, सेम थिंग, ऐसे ऐसे करना है, ये रही इमेज। थर्ड वाला बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पीछे बना दो, क्या फर्क पड़ेगा सर, यहां रखेंगे तब भी रे डायग्राम तो सेम ही बनेगा, कितना इजी क्वेश्चन है ना, बट रे डायग्राम का प्रैक्टिस करना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज इज एग्जैक्टली सेम लाइक मिरर्स। न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं जरा,
मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, सुनो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट. कुछ चेंज हुआ? इज देयर एनी चेंज? नो. डेफिनेशन वाज सेम, स्टिल द सेम. HI upon HO is equal to V upon U. सर इसके मैंने उसमें नहीं है. फॉर मिरर्स आई टोल्ड यू, मिरर के मैग्निफिकेशन फॉर्मूले माइनस आता है, तो लेंस में उल्टा माइनस नहीं आता है. ठीक, फाइन. इफ this is the case, in the concave lens image is virtual, erect and diminished. Virtual erect means magnification will be positive, diminished less than 1. So magnification will be less than 1, it will be positive because it is virtual erect. Always जहां जहां virtual erect image होगी magnification होगा positive. ठीक, अगर diminished होगी तो less than 1 होगा. यहां पर between f and 2f images real, inverted, magnified. रियल इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना है. क्यों? सर हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी माइनस अपॉन प्लस. क्या आएगा? माइनस ना, दैट्स व्हाई. यस, यस गोविंद, नॉट राइट नाउ. आई नो व्हाट यू आर आस्किंग बट नॉट राइट नाउ. लिसन, हाँ, इट्स ह्यूमन आई. बच्चा रुक जाओ. इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वेरी गुड. नाउ लिसन लिसन लिसन. एनलार्ज्ड इमेज क्यों आया? सर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव होगी ना भाई, तो माइनस अपॉन प्लस क्या हो जाएगा? सर माइनस हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई. फाइन, ठीक है. चलो अब देखो, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में आता था प्लस, लेंस में क्या आएगा? माइनस. कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला है. क्या आएगा? माइनस आएगा. देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे ना बच्चे लोग याद कर लेते हैं. अब यू ऑलवेज विबग्योर, क्या है ये? निमोनिक्स, राइट? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेंस फॉर्मूला में देयर इज अ माइनस साइन. मैग्निफिकेशन इज HI upon HO and it is V upon U. And U and V, everything is same. U is object distance, V is image distance, F is focal length, HO is object size, HI is image size. Fine. Again, sign convention is same, एकदम same है, कोई दिक्कत नहीं है. अब सुनो, सर mirror, lens, formula is always 1 upon V, 1 upon U equals 1 upon F. 1 upon V, 1 upon U is equal to 1 upon F. फॉर्मूले में लेंस में आता है माइनस. ठीक है जी, माइनस लगा दिया, मतलब यहां प्लस हो गया. मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं. सर m इज इक्वल टू HI अपॉन HO रिमेन सेम. m इज इक्वल टू HI अपॉन HO रिमेन्स द सेम. मैग्निफिकेशन, मिरर के मैग्निफिकेशन में माइनस आता है, माइनस V अपॉन U. लेंस में उल्टा, V अपॉन U. in mirror's magnification formula there is a minus sign. Fine, lens is minus for that and m is minus for this. Take m. Clear? This is how you can remember these formulas. Fine. Yes. Divyansh, very small image but still we can mention it's real, so inverted, right? Come on. Question, numerical, and this is a question which will come. I'm not saying this question, I'm saying a numerical. आपके एग्जाम में, in your exam you will get at least one question from either lens or mirror. पक्का. उठा लो प्रीवियस ईयर पेपर, उठा लो सैंपल पेपर, उठा लो प्रैक्टिस पेपर, कुछ भी उठा लो, you will get one numerical. लिखवा के आओ. A concave lens of focal length 15 centimeters forms an image 10 centimeters from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. Come on. Oh, Sojit. I mean, for me it looks difficult, but if you can remember, then good, not a problem. Zara, class, क्या टाइम हो गया? 8:22. By 8:30 will be done by light. ठीक है, I'll give you 5 to 7 minutes break, and then in another 1 hour will be my human eye. बज गया 9:30. ठीक, देखो 12 तो बजेगा. बिल्कुल मिरर नहीं, मिरर का पावर नहीं होता गोविंद.
देखो पावर क्या है, कौन कितना, पावर मतलब पता है क्या होता है, पावर मतलब है कौन कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है। तो इन अ वे थियोरेटिकली यू कैन से, बट हम बात नहीं करते हैं। फोकल लेंथ तो उसका भी होता है। यस, -30 आई गॉट वन आंसर। एनर्जी, नो टेंशन, अरे वाह। -6, -30. How far is the object placed from the lens? Everybody now listen to me how to attempt these questions. अगर ये समझ गए कोई भी न्यूमेरिकल कर लोगे। क्या पहली चीज, I tell this every time to all my students, question is your girlfriend. Question कौन है? Your counterpart. Question wants to talk to you and you have to listen to the question. ठीक है जी, क्वेश्चन तुमको कुछ बोलना चाह रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो, सुनो तो क्या बोल रहा है। अ कॉनकेव लेंस, सर कॉनकेव लेंस है क्या? अच्छा, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओ सर कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक, फाइन। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज -15। सर वाई? सर कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ इज टू द लेफ्ट ना। ओ दैट्स वाई f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्लियर? फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ यू नो दिस वेरी गुड, फाइन। अब सुनो, forms an image 10 centimeters from the lens. V is equal to 10 centimeters plus or minus. प्लस और माइनस क्या है? प्लस और माइनस भैया। वर्चुअल इरेक्ट इमेज इन लेंसेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड। कोई भी लेंस उठा लो, इफ यू टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, there also whenever you have a virtual and erect image, it is to the left only, right? So image will be to the left only, correct? So V will be minus of 10 centimeters. Plus plus, no, 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 no. All the real inverted images are to the right. All the virtual images are to the left. In the case of mirrors उल्टा था। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इज सेम। ये छोटा छोटा बस याद कर लिया ना, और याद नहीं, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करो, यू विल गेट इट। ये वो चीजें हैं, यू शुड, दे शुड बी बाय हार्ट इन यू। ये वो चीजें हैं, कोई नींद में पूछेगा तुमको आनी चाहिए। अब वो टाइम आ गया है। इफ यू टेंड टू फॉरगेट, यू ड्रॉ दीज थिंग्स, यू मेक अ टेबल एंड स्टिक इट ऑन द वॉल। अपने रूम को बना दो वो ब्योमकेश बख्शी, ऑल द डिटेक्टिव्स, व्हेन दे वांट टू फाइंड द सीरियल किलर ना, व्हाट दे डू, दे क्रिएट दिस थिंग, यू डू इट इन योर रूम। दीवार पे गंद मचा दो, आई डोंट केयर, बट याद करो, ठीक। V is equal to -10 centimeters. Fine. How far is the object? क्या पूछा है? What is asked? Sir, U I don't know. It's a lens, so I will use a lens formula. Fine. And lens has minus. So 1 upon V minus 1 upon U equals 1 upon F. Apply. 1 upon क्या निकालना है? 1 upon U ना. So 1 upon V minus 1 upon F is equal to 1 upon U. Put the values. In the question, whenever you write the values na, use sign convention. Using sign convention, बहुत बच्चे क्या करते हैं, फोकल लेंथ है 15, V है 10, सर फॉर्मूला में रख देंगे ना। Write the values using sign convention and use the formula as it is. कुछ होते हैं तेज बच्चे, कोई है ऐसा? Do I have somebody here right now who does this? कोई कोई करता है ऐसे, I have seen a lot of students कि सर वैल्यूज तो आई विल राइट नॉर्मली इन द फॉर्मूला ना, मैं चेंज कर दूंगा बाद में। कोई ऐसे करता है, फॉर्मूले को चेंज कर देता है और वैल्यू रख देता है? कोई है ऐसा? जल्दी बताओ। नो राइट मी? अरे नहीं यार, ऐसा मत करो प्लीज, नहीं ऐसा नहीं करना। फॉर्मूला सेम रखो, वैल्यू को साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखो, राइट? कीप द फॉर्मूला सेम एंड राइट द वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। इट विल बी इजी यार, व्हाई यू वांट टू मेक योर लाइफ टफ? परेशानियां कम है तुम्हारी और बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो 1 अपॉन V, V इज हाउ मच? सर V इज माइनस ऑफ 10, 1 अपॉन माइनस ऑफ 10, माइनस में 1 अपॉन F, F इज माइनस में 15, ठीक। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 15 30, ठीक है। 30 हो गया है, माइनस में 3, दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस में 2, इट बिकम्स 1/30 इज इक्वल टू 1 अपॉन U। सर U इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस में 30 सेंटीमीटर। होल्ड ऑन, बिफोर यू से दिस इज माई करेक्ट आंसर, सर U इज कमिंग टू बी नेगेटिव, मतलब U माइनस में है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट है, सही तो है। इन लाइट न्यूमेरिकल्स
don't always rely on the math because you will make calculation mistake. ये होंगी भाई, human error है, होता है, it's okay, but use logic. Math plus logic, aha, फिर आएगा मजा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक, -30 आया मतलब लेफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट है. हाँ ओके सर, करेक्ट है, ओके बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट. फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट हो गया -30 पे. ड्रॉ द रे डायग्राम, बना दोगे ना भाई. ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f एक्चुअली, बना दो. एक रुक जाओ, इस सबको हटाना दो मेरे को. हाँ जी, यस गोविंद, put the question in the comment section, I'll reply back. Correct, that's why u is equal to -30, object is kept at 2f. why? because u is -30 and f is minus में 15 सेंटीमीटर. तो भाई u कितना है, 2f है ना, तो यहां रखा 2f पे. बना दो रे डायग्राम, बना लोगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. all these are board level questions. Next, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeters away from a converging lens at focal length 10 centimeters. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of image formed. Come on, एक और question. Ritika, very easy numericals, relax, I'll tell you. It won't even take more than 2 minutes. इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. नहीं गोविंद, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फिर इमेज पूछा है. यस, ग्लैड टू टॉक टू यू. हार्ड, अरे नहीं, आई एम टेलिंग यू, लिसन टू द क्वेश्चन बच्चा. क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, यू हैव टू लिसन टू इट. अच्छे सुखी परिवार का यही होता है सीक्रेट, एक दूसरे की बातें सुनते हैं लोग. सो यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन. सुनोगे नहीं तो क्वेश्चन बुरा मान जाएगा. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? An object 5 centimeter in height, sorry in length. क्या है ये? You keep doing rough work ना. सर ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस. सर ऑब्जेक्ट तो वी ऑलवेज कीप अबव प्रिंसिपल एक्सिस ना, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव ओनली. सर +5, ओके. डू वी हैव एनी आंसर्स? इजी आंसर, इजी मत बोलो, जल्दी. is held 25 centimeter away from a converging lens. ओह, converging lens, कौन सा लेंस है सर ये? Convex lens. क्वेश्चन बोल सकता है converging lens, magnifying lens, convex lens, doesn't matter, तुमको पता होना चाहिए. Yes, अरे बातें कर रहा, सुनो तो. 16.67, okay, लक्ष्य has got the answer. रीमा 16.66. शुक्ला जी u equals -7.14. मेरी साइड की हो क्या? Shri 16.7, 16.6, 16.7. So Shri, relax, listen. Converging lens हो गया, convex lens, ठीक है सर. Object is held 25 centimeter away. ओहो, u. सर u तो always minus, u is minus में 25 centimeters. Okay sir, not a problem. Very good. Focal length 10. F is equal to 10 centimeters. यार 10 will be positive or minus? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ और अ नेगेटिव फोकल लेंथ. कंफ्यूजन है तो बना लो डायग्राम. सर लाइट रे पैरेलल में ऐसे ऐसे, अरे वाह सर फोकल लेंथ तो राइट में है, पॉजिटिव होगा, राइट. एफ विल बी +10 सेंटीमीटर्स, करेक्ट. ओके सर. नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, you will draw the diagram and then solve this question, or you will solve this question and then draw the diagram? जल्दी बताओ. You will, I mean, ideally question is saying draw the diagram and find the position, size and nature of the image formed. मैं पूछ रहा हूं तुम डायग्राम बना के सॉल्व करोगे या सॉल्व करके डायग्राम बनाओगे? सॉल्व एंड देन ड्रॉ. ज्यादा अच्छाई के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, ज्यादा अच्छे भी नहीं बनने का, है ना, दुनिया पेल देगी. आई एम सेइंग इट्स ओके, थोड़ा स्मार्ट हो जाओ यार. सब कुछ दे दिया है, माना क्वेश्चन बोल रहा है सर डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व करो. व्हाट विल यू डू? यू सॉल्व इट एंड देन ड्रॉ द डायग्राम ना. लाइफ इजी. किसको पता है तुमने क्या किया?
आंसर तो वही लिखोगे सर। एफ है, यू है, एच ओ है, क्या पूछा है? ड्रॉ द रेड ऑन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है सर, पहले इफ आई हैव यू एंड एफ आई कैन फाइंड वी यूजिंग लेंस फॉर्मूला। इट इज लेंस ओनली ना, आई विल यूज लेंस फॉर्मूला। सर 1 अपॉन वी माइनस में 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्या पूछा? वी पूछा है ना। सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। करेक्ट है ना? यस हाँ। अरे प्रपोज किया है तो मना कर दो, अभी चक्कर मत पड़ो। हाँ जी, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, उसको बोलो कुछ बन के आओ फिर बात करेंगे। ठीक, सो 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन में माइनस 25 इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 50। 1 अपॉन 10 यानी कि 5 माइनस में 2, सर आई एम गेटिंग 3/50। So my V is coming out to be 50/3। पॉजिटिव में होल्ड ऑन, होल्ड एक सेकेंड सर, ठीक है ना सर? फोकल लेंथ है 10, ऑब्जेक्ट इज 25। अच्छा, इफ F is 10, 2F is 20, object is kept beyond 2F ना? Logic, you have got the answer. I am saying stop, wait for a minute and check your logic. Sir, focal length है 10, 2F will be 20, U is minus 25। अच्छा सर, यानी कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F। इमेज कहां बनेगा? सर इमेज शुड बी बिटवीन F एंड 2F, मींस इमेज शुड बी बिटवीन 10 एंड 20। कितना आ रहा है ये? सर इट इज कमिंग आउट टू बी 3 1 3 20 16.67। बिटवीन 10 एंड 20 करेक्ट है, माई आंसर इज करेक्ट। ठीक, यस। Math plus logic is a deadly combination. केवल math might fail you. केवल logic might fail you. But both of them together, you will be invincible. You will be शक्तिमान। ठीक, अब आगे। Yes, V is equal to 16.67 centimeters. Okay sir, we have got the answer positive, which is correct. Positive मतलब on the right side, real inverted है तो बनेगा ही भाई, कोई बात नहीं। Logic is also supporting. I have got the answer. Question is, sir position I have got, size. Oh, size. मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या आता है उसमें? प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि मिरर के मैग्निफिकेशन माइनस आता है भाई। M इज इक्वल टू सर HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। H ऑफ I आई डोंट नो, H ऑफ I आई हैव टू फाइंड। H ऑफ O इज हाउ मच? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V कितना है? सर V इज 50/3। यही रखते हैं, क्या पता कट जाए, आई डोंट नो। 50/3। U कितना है? सर U इज माइनस में 25। ऑलवेज पुट द वैल्यू यूजिंग साइन कन्वेंशन, तेज नहीं बनना। माइनस 25। ठीक, चलो भाई 25 25 2 कितना आ रहा है? 5 2 10। सो हाइट ऑफ इमेज इज कमिंग आउट टू बी माइनस में 10/3 सेंटीमीटर। होल्ड ऑन, एक सेकेंड। लॉजिक, अरे लॉजिक एक बार। सर इमेज इज कमिंग टू बी नेगेटिव, मतलब इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा ना। ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड 2F, image will be real inverted diminished. Logic tells you image will be real inverted diminished. You are getting answer as minus 10/3 है ना? मतलब सर minus 10/3 होता है माइनस में 3.33, right? Height of object is 5, image is 3, diminished। सही है भाई आंसर, एकदम बढ़िया। Yes, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? दिस वॉज द टफेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट इन योर बोर्ड्स, इससे टफ नहीं आएगा। क्लियर? ठीक, इतना ही है। सो व्हेन यू राइट द आंसर, यू राइट इट प्रॉपरली। इट्स नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग, हाउ यू रिप्रेजेंट द आंसर, कैसे लिखते हो तुम, दैट मैटर्स। वॉट इज गिवन टू यू, राइट दैट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला यू डू दिस फर्स्ट। ठीक, अब इसके हिसाब से बना दो डायग्राम, कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट बनाओ यहां, इमेज बनाओ यहां, लाइनें जोड़ो टनाटन एकदम, और उसके बाद ये लिख दो द एंड। रे डायग्राम देख के नहीं बनाना भाई, जुगाड़ कर देना एकदम। यस, करेक्ट है ना? यस, सॉल्व करो, यही वैल्यूज के हिसाब से डायग्राम बनाओ। आई एम नॉट सेइंग 16 सेंटीमीटर्स, छोटा कर दो, प्रोपोर्शनल कर दो।
डायग्राम बनाओ, लिख, कौन जा रहा है मेजर करने, तुम बनाओ बिंदास, डायग्राम बनाओ और लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि भैया ऑब्जेक्ट वाज केप्ट बियॉन्ड 2f एंड इमेज शुड बी बिटवीन f एंड 2f। थोड़ा सा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये यहां पे आना चाहिए, ठीक, इट विल नॉट बी हियर, इट विल बी समवेयर ओवर हियर, फाइन, ठीक है। अरे नहीं यार, डोंट वरी बच्चा, दिस इज लाइक द मैक्सिमम लेवल फॉर बोर्ड, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक। फीलिंग कॉन्फिडेंट, यस और नो? फीलिंग गुड, फीलिंग कॉन्फिडेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात कर लेते हैं फटाफट। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है सर? वेरी इजी, कन्वर्जिंग। इफ यू एड वन मोर कॉन्वेक्स लेंस, बोथ आर कन्वर्जिंग, बोथ विल सपोर्ट ईच अदर, both will together become stronger, है ना? Focal length will be less than 20, correct? Both lengths combined. When you combine two lenses, or if you combine two convex lenses, power of similar lenses add up, causing more bending of light. ठीक? ये clear है? Small concept, power, very easy. Sir, what is power? Power of a lens is measure of हाउ मच अ लेंस कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज, कितना पावर है लेंस में, कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है। पावर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। व्हाट इज पावर? 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, इन मीटर, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक। तो ठीक है भाई, फोकल लेंथ तो ठीक है, तो बहुत ईजी है। पावर का फॉर्मूला, व्हेन यू कंबाइन लेंसेज सिंपली एड देयर पावर्स। सर कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव, कॉन्वेक्स का power will be, sorry, convex focal length will be positive, means power will be positive, ये will be negative, add p1 plus p2, simple algebraic addition, p1 plus p2 करना है, ठीक। diopter, very good, and unit is diopter d, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या करना है सर? p1 plus p2 plus p3 plus p4 ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर, ठीक। Magnifying lens, Renu, it is the convex lens, right? With this, बच्चों, we are done with light. Formula sheet. Main formulas were law of reflection, curvature, mirror formula, magnification, refractive index, Snell's law, lens formula, magnification, and power of a lens. With this, light is done. Any doubts till now? Jaldi. Ripolac. There is a link in the description given to you in which I have explained you how to draw diagrams using pencil, compass, scale, everything. What is bifocal lens? Bifocal lens will come in human eye. Bifocal lens is where both lenses are there, है ना? ऊपर अलग टाइप का लेंस, नीचे अलग टाइप का लेंस, चश्मे के अंदर, that is bifocal. One is cook, you will not. I know you are slightly late, but you will not if you listen very carefully and listen to the whole session. ठीक है? कोई सीरीज है? असल प्रैक्टिस पेपर, हाँ सीरीज है ना, वी हैव डन प्रैक्टिस पेपर बच्चा। गुड इवनिंग, यस माय लेंस, अरे बात करेंगे आंखों की। नेक्स्ट चैप्टर विल बी द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नाउ आई इट्स 8:40 टिल 8:45 यू टेक सम ब्रेक, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ब्रेक ले लो, स्टिल 8:45 PM, पानी वानी पी लो। सी 8:45 to 9:45. My goal is till 9:45, around 9:45ish. I will finish your human eye. ठीक है? And then I'll give you a 20 minutes break for dinner. And if you are doing it right now, I don't mind. कर लो, घर में डांट नहीं खाना, गाली नहीं खाना, बिल्कुल ठीक? Yes. और खाना I know बच्चा, I know. अभी एक बार बताओ, you want अभी 5 मिनट का ब्रेक और 15 मिनट का ब्रेक? You want 5 मिनट ब्रेक और 15 मिनट ब्रेक? मैं ही पूछ रहा था। 5 मिनट, अरे दिस आई कांट राइट ना, चलो रुको, अरे रुको, ठीक है, आई डू समथिंग, जल्दी बताओ। 5, 15. Ideally, I should give you a poll वैसे तो। रुक जाओ। Yes. अरे तुम रुको यार, पूरी तैयारी से बैठा हूँ। 3. Combination on type of lenses, बच्चे combination is very easy. Find individual powers and just add them up.
5:15. चलो भाई. See, the poll is live on chat. 5 minute or 15 minute. You tell me right now. I'll give you 20 second to answer. मैं बोलूंगा यार अभी 5 मिनट कर लेते हैं. आफ्टर ह्यूमन आई लेट्स टेक अ 15 मिनट ब्रेक. आई एम पर्सनली इन दैट फेवर. अदरवाइज एवरीथिंग इज अप टू यू. ठीक. देखो मैं तो खाना खाऊंगा रात को घर जाके. ठीक है. अपना बताओ तुम. पोल इज एक्टिव. पर्सनली आई वुड सजेस्ट लेट्स फिनिश ह्यूमन आई बिकॉज अदरवाइज ह्यूमन आई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट इफेक्ट 3 चैप्टर बचेंगे फिर. AB because we are symmetrical, no, that's why we don't show. Asymmetrical things show. 0 minute. Oh. Yes. %54. Almost equal चल रहा है यार. 0 minute. चलो ठीक है. Everybody listen. अरे सुनो ना. I'm telling you something. I know 15 minutes की ज्यादा majority है. I'm saying 8:45, 8:43 तो हो गया यार. I'm saying let's take a 5-minute break right now. See, I'm telling you the reason. अभी 5 मिनट ले लो and in this 5 minutes if your dinner is ready you go and pick it up. You go and pick up the dinner और फोन और डिनर साथ में कर लो आज. I know this is not the ideal thing. We should not see or watch while eating. आज कर लो. सुनते रहना. ठीक है. 15 मिनट वाला ब्रेक ना इसके बाद लेंगे because otherwise no. इसके बाद we have electricity. Electricity is a big chapter. Humanize a small chapter. ठीक है. We'll do it very quickly. उसके बाद दूंगा 15 मिनट का ब्रेक बिफोर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फॉर इलेक्ट्रिसिटी आई वांट यू टू बी फ्रेश. ठीक है. हाँ जी सारे चैप्टर होंगे एकदम. ठीक है. टीम 7 गाय अरे ले लो यार 5 मिनट का ब्रेक ले लो. वी विल मीट एट 8:44 हो गया ना. 8:50 PM. 8:50 पे हम लोग मिलेंगे. भाग के जाओ खाना लेके आओ. ठीक है. फटाफट जाओ गो गेट योर डिनर. मैं भी जरा चार्जर ले आऊं यार. फोन चार्ज होने वाला है. गेट योर डिनर एंड ब्रिंग इट टू द टेबल एंड टेल योर पेरेंट्स प्लीज आज करने दो. पढ़ाई चल रही है. ठीक. बोर्ड का सवाल है. ओके. यस.
यस, ऑल सेट। रुक जाओ यार, चार्ज पे लगाना दो। हाँ, अरे वाह, नाइस। 850, हाँ हाँ ठीक है यार, 851 हो गया, रुक जाओ यार। Okay, Xavier, I'll give you the updated link of the Telegram group if that is the issue. हाँ जी, चालू करें? क्या बोलते हो? So, light chapter, the most important chapter is light, that is truth. Let's start human eye. Human eye की बात करें अगर तो syllabus before this year's sample paper, practice paper, people used to think human eye does not have weightage. लोगों को लगता था ह्यूमन आई ना ऐसी बेकार चैप्टर है सर, 1-2 नंबर का आना होता है, क्या ही फर्क पड़ता है। बट दिस ईयर सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर हैज प्रूव्ड फ्रॉम ह्यूमन आई इट हैज गॉट अराउंड 5 to 6 मार्क्स। 5-6 नंबर कम से कम आए ही आए हैं ह्यूमन आई से। सो दिस चैप्टर फॉर दिस ईयर इट फील्स लाइक, एंड दैट्स व्हाई while doing sample paper and practice paper, that is one thing I was telling each and every one of you कि भैया ह्यूमन आई ढंग से कर लेना। तुम लोग को लगता है सर बेकार चैप्टर है ना, ऐसी है, लेकिन अच्छा चैप्टर है, टुच्चा मत समझना इसको। राइट, मैगी फिनिश्ड? हाँ चलो। कृष्णा, यस, बट डोंट जस्ट लिसन टू द मैराथन, आफ्टर मैराथन डू हार्ड वर्क, सॉल्व एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जाम्पलर, दैट इज गुड। ह्यूमन आई क्या क्या आएगा सर? फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, पहली चीज आंख की बात होगी। ह्यूमन आई के अंदर थोड़ा सा बायो आएगा। Then we'll talk about defects of vision and their corrections. ठीक, application of spherical mirrors, refraction of light through a prism, dispersion, scattering, applications in daily life. ठीक, एक और चीज, there is one omission which your seniors had to know properly क्योंकि उनकी NCERT बुक में था, बट तुम्हारी NCERT बुक में है ही नहीं। Color of sun at sunrise and sunset is not there. But why is sky blue is there? ठीक है, अब अगेन अभी इसको देख के लग रहा होगा सर समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लाइक इन लाइट आई विल गिव यू अ क्विक ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन आई। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अरे कलरफुल पूरा ही नहीं रहा, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। पहली चीज सर ह्यूमन आई क्या क्या है इसमें? डायग्राम and functioning of the parts. इससे normally from this section either we get a short answer question or a MCQ, एक नंबर लगभग इससे आ जाता है ना। normally 1 marker comes from this. Then we have prism, we have dispersion, then we have डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन के बाद क्या आता है इसमें? चलो रुक जाओ। रेनबो फॉर्मेशन, देन वी हैव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यस शिवांश, आफ्टर दिस लेक्चर एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर इज इनफ टू स्कोर टॉप मार्क्स इन साइंस। बस उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Sample papers, when you are done with this, then you can just to create a habit, तुम लोग फिर प्रॉपर साइंस के सैंपल पेपर बाद में कर सकते हो, which will tell you कौन से करने हैं। लेकिन अभी के लिए इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सैंपल पेपर करना। उसके बाद कोई बुक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। डिस्पर्जन इजी है, रेनबो फॉर्मेशन में वेरी वेरी इजी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना, स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों होती है, वाई डू यू हैव एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये सब का एक ही रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वेरी वेरी इजी। उसके बाद क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात आएगी। इसके अंदर आएगा क्या सर? टिंडल इफेक्ट आएगा और ब्लू कलर ऑफ स्काई। इतना सा है चैप्टर। यस,
Oh, sorry, I forgot one thing. Defects of eye. Yes, thank you. Lot of people are saying defects of eye. एक चीज भूल गया था मैं. Defects of eye और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स. ठीक, बस इतना ही है चैप्टर भाई. दोस्तों, I am not a bot. We are starting next chapter. One chapter is done. Yes. हाँ, correct. And numericals. So this is complete human eye. Normally, numericals this time you can expect. I'll teach you. I'll give you a proper flow chart for numericals of defect of human eye. ठीक है, डरने वाली बात नहीं है. But to solve these numericals, light chapter should be good. And especially lens of light chapter. ठीक है, numericals are very easy, but you should know the basics of light chapter. Otherwise, this chapter becomes waste. ठीक है, fine. चलो start करें जल्दी. How's the जोश? सर 9 बज रहे हैं. अरे फिर भी how's the जोश? अभी तो 9 बजे मेरे दोस्त. अभी तो रुक जाओ, रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो. कल को करवा देना. नहीं यार, एक वीडियो बनेगा. This will be one video with full physics of grade 10th. Sleepy? No, abhi nahi. Struggling with numericals? Don't worry. Relax. Let's do it. Blueprint ready? Let's move forward. Pehle, bio. Sir, you guys are expert in bio. क्या जरूरत है मेरे को बताने की, है ना? पहली चीज, भाई देखो, the first layer in your eye is cornea. It is a transparent layer that allows light to enter the eye. One more property. Maximum bending of light occurs on cornea. ठीक है, one more property of cornea, maximum bending of light occurs at cornea, more than lens also. सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये वही बात हो जाती है. You have glass and you have air. You have water, you have glass. ठीक है भाई, ये water है. Your light ray is this. Both have the same angle of incidence. Now you tell me. This is R1. This is R2. First option, R1 will be more than R2. Second option, R1 will be less than R2. Third option, R1 will be equal to R2. Fourth option, none of these. Yes, very good. Difference in optical density. कहां से कहां? That matters ना भाई. 1, 2, 1, 2, 3. B. Cornea transparent, how reflection? Prakriti, cornea is transparent, like glass is transparent, but it is not one sheet. Behind it we have aqueous humor, na? Correct? More bending will occur when light is going from air to glass. Why? Because sir, refractive index changes very much. Refractive index is 1, refractive index 1.5, refractive index is 1.33, refractive index 1.5. जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज बहुत ज्यादा होगा, वहां पर बेंडिंग ज्यादा होगा, राइट? सो हियर एयर टू ग्लास इट इज चेंजिंग 1 to 1.5, करेक्ट? एंड आई हैव डन अ शॉर्ट आल्सो ऑन दिस, इफ यू रिमेंबर. पता नहीं तुम भूल गए हो तो अलग बात है, बट आई हैव डन अ शॉर्ट ऑन दिस, राइट? वाटर ग्लास 1.33 to 1.5, change in refractive index is less now, so bending will be less, correct? So R1 will be less than R2. Second is the right answer. Difference in refractive index अगर ज्यादा, bending ज्यादा, ठीक? So that is why air inside cornea we have liquid ना, aqueous humor. That is why bending is more. Air to water you can say. ठीक, fine. तो भाई cornea है पहली layer. क्या क्या function है? Protection. All the dust particles, they should not enter your eye ना. So cornea protects you. And maximum bending of light occurs. Very good. Next, we have aqueous humor. क्या होता है aqueous humor? Sir, aqueous humor is the fluid lying between cornea and the lens. Cornea के पीछे क्या है? Liquid है. Aqueous humor. Fine. Yes, Sanvi, it is there. कौन था 1 वाला? अच्छा, 1 वाला था R1 is more, यानी कि air to glass में refractive
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा ना, कम होगा, है ना? ठीक है, वन मोर टाइम श्री बच्चा, आई एम सेइंग if the ratio of refractive index between two medium is more, magnitude of ratio doesn't matter, 1 upon E or 1 upon E, ठीक है? If the ratio of two media refractive index is more, bending is more, correct? Getting my point? If tomorrow someone asks you light is going from 1.5 to 1.7 and someone tells you light is going from 1.3 to 2.3, or wait, light is going from 1 to, light is going from 1.5 to 2 and light is going from 1 to 1.5, बेंडिंग कहां पे ज्यादा होगा? क्या करोगे सर? 2 अपॉन 1.5 एंड 1.5 अपॉन 1 कितना होगा भाई? ये है 20, 5 4 जा 20, 5 3 मींस 1.33, यहां है 1.5. सर बेंडिंग विल बी मोर इन दिस केस. क्या किया? रेशियो निकाला. इफ रेशियो इज मोर, बेंडिंग इज मोर. दिस इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन थिंक अबाउट इट. ठीक है जी, फाइन, चलो आगे आओ. नेक्स्ट, आंखों में जो कलर आते हैं, नीली आंखें, है ना, ग्रे आंखें, ब्राउन आंखें, ब्लैक, व्हाट इज दिस? दैट इज iris. What is iris? Iris is a set of muscles responsible for changing the size of the hole in your eye. Yes, your eye has a hole. This hole is called as pupil. This pupil is responsible for light entering in your eye. अपनी अपनी आंखों में ध्यान से देखना भाई. There is a hole, right? This hole can become big. When you go to dark room, it can become big. When you come in bright light, it can become small, right? So pupil is the hole in your eye from which light enters, and a set of muscles can change the size of pupil. That is iris. Take yes, हाँ. Will temperature affect the medium? Yes, Aditya, it does. More temperature, medium becomes rarer, थोड़ा सा. हाँ, very good. And giving color characteristic, बहुत बढ़िया. So pupil is the hole through which light enters the human eye. Fine, ठीक है. And iris is the set of muscles. Okay, बढ़िया. अब when you go into a dark room, your pupil is more, so that more light can come in your eye. By outside light is less, you want to see, so you want light. Your pupil become more. It's like opening a window. घर में अंधेरा होता है तो खिड़की खोलते हो ना भाई, ताकि लाइट आ जाए. Same is with pupil. Your pupil is the window of your eye. If you are in bright light, you don't want this much light here, so your pupil will become small, so that amount of light can become less. It's like if it is very sunny outside, तुम window close कर दोगे, अरे बहुत धूप है यार, कम करो. Same, ठीक. यस, चलो भाई, अब बात करते हैं आई लेंस की. कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल एंड आइरिस, देन कम्स योर लेंस. आहा, आंखों का लेंस. यस शिवांश, एवरीबॉडी, न्यूमेरिकल्स के लिए आई हैव गिवन यू अ डिस्क्रिप्शन में अ लिंक ऑफ द सेशन. आई हैव, यार तुम रेगुलरली आते नहीं हो चैनल पे, है ना? एवरीबॉडी, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कर देना. Whatever links I have given in the description, na, all those I have done already. I have given you proper sessions only for numericals of human eye also. ये है, तुमको मिल जाएगा description में, ठीक है? Lateral shift in refraction, बच्चा, Nisa, this we have done in class lab. Lateral displacement. Today only we have done. Eye lens, ठीक? क्या काम है eye lens का? देखो, the job of eye lens is to form the image on the retina. आई लेंस की जिंदगी का एक ही मकसद है, क्या? रेटिना पे इमेज बनाना. ठीक, फाइन. अब आई लेंस कैसे करेगा ये काम? हाउ विल आई लेंस डू दिस वर्क? इफ आई लेंस इज ओनली लाइक दिस, इट विल नॉट बी एबल टू डू इट. उसको क्या करना है? ऑब्जेक्ट कैन बी नियर और फार, मींस आई लेंस हैज टू accommodate. आई लेंस हैज टू मॉडिफाई इटसेल्फ. Its shape needs to be changed, right? Which means ciliary muscles, they contract. Whenever ciliary muscles contract, the lens becomes thick, right? And when ciliary muscles become relaxed, lens becomes thin. Sir, कोई तरीका है याद करने का? बिल्कुल है. Take your finger, फटाफट, everybody. जो लोग इस, I have been teaching this for a very long time, यार. People who have been regular, you know what I'm going to tell you. But people who are listening for the first time, listen. Take your finger, bring it very close. Look at the finger. Sir, दर्द हो रहा है. It is straining. This strain is your ciliary muscles which are trying to contract and make your lens thick. आपके लेंस को ना ciliary muscles try कर रही है मोटा करने का, ताकि you can see your finger which is close to you. If you take your finger away,
सर अच्छा लग रहा है ना, easy, no strain, means now your ciliary muscles are relaxed, your lens is thin. Ciliary muscles are relaxed means lens is thin. Ciliary muscles are contracted means lens is thick. अब एक बात बताओ, which lens will converge more, मोटा lens और पतला lens? Which lens will converge more, a thicker lens or a thinner lens? Tell me that. Yes, Bunny's cook, you're right. You're right, come on. मोटा है ना? A thicker lens will converge more. A thicker lens will have a smaller focal length, right? बहुत बढ़िया. सर कहाँ यूज करेंगे? अरे सुन तो लो. So, your lens can change shape. How? Because of ciliary muscles, so that you can see near objects and far objects clearly. Doesn't matter. तुम्हारी आंख adjust कर लेती है, तुम्हारी आंख accommodate कर लेती है. This is the power of your eye. This is the power of accommodation. Means diverging rays coming from a nearby object needs high converging power. Object pass होगा, so you need high converging power. ज्यादा converge करना पड़ेगा. दूर के लिए ओके पतला लेंस चलेगा, लो कन्वर्जिंग पावर चलेगा. बट व्हाट इज, है ना, फार के लिए पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड लो कन्वर्जिंग. क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन? व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? इट इज एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. योर आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन. इट कैन अकोमोडेट. देख सकती है वो क्लियरली. फाइन, यस, करेक्ट. शिवांश डिग्री? अरे बहुत टाइम हो गया यार, NIT त्रिची से निकले थे, बीटेक किया था, है ना. सी, अच्छे कॉलेज अच्छे होते हैं लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है. अभी हम वही कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो. आ जाओ, कम ऑन. नाउ लिसन टू मी. नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. क्या होता है नियर पॉइंट? देखो बच्चों, नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट वेयर यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट स्ट्रेन. यू माइट हैव सीन योर पेरेंट्स, दे टेल यू ऐसे मत पढ़ो, आराम से पढ़ो, है ना. 25 centimeters is the near point of a healthy eye, of a normal eye. Sir, I can see below 25, है ना, मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ. Yes, but you feel strain. That is the problem. 25 centimeter is a point where you don't feel strain, you see good. Fine, है ना? Correct. So near point for a healthy eye is 25 centimeters. Sir, should we remember this number? Yes. You should know this number. I'll tell you why. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. ये बहुत काम आएगा, इसको याद रखना है. सर हम भूल जाते हैं, तो लिख लो, चिपका दो. कुछ नहीं करना, चिपका दो भाई. दीवार एकदम चिपका दो पूरी दीवार पे, सब, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, सुनो. फार पॉइंट फॉर अ हेल्दी आई इज इंफिनिटी. यू कैन सी द सन, यू कैन सी द मून. वेयर आर दे? दे आर वेरी फार. यू कैन सी स्टार्स वेरी वेरी फार. Sir, far point for an eye is infinity, right? But sir, I cannot read very far. That is readability. That's a different thing. I have made a video on that. I'm not explaining right now. But I'm saying for a healthy eye, far point is infinity. From infinity, we have parallel rays, by the way. Light में पढ़ा था. We just studied in light, है ना? And near point is 25. Very important. Correct? Yes. चलो आगे आओ. Next comes after lens vitreous humor. सर कॉर्निया हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया. नाउ वी हैव दिस एरिया, दिस बड़ा सा एरिया. दिस इज विट्रस ह्यूमर, राइट? विट्रस ह्यूमर फंक्शंस: प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू योर आई, राइट? आई लेंस, आई के अंदर के पोर्शन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना. इट सपोर्ट्स द रेटिना एंड हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई. यस. माइक्रोस्कोप रेगुलरली, दैट्स फाइन. नो, माइक्रोस्कोप, it doesn't bring the object very close to you, it magnifies. Hello Teja, 9th ka to we have a session running right now. What is blind spot? Imaginary canvas, I'm coming to it bacha, don't worry. Very good. Giving shape, it's like having a empty balloon and having a water filled balloon. Water filled balloon has some thoda sa shape na, same. Your eyeball is like a balloon only. Yeah, ऐसी होती है, ऐसे पुचुक पुचुक वाली. But it has vitreous humor na, so it becomes थोड़ा सा shape, sturdy. So okay, that is the function of vitreous humor. ठीक है. Next, image कहाँ बनता है? The screen of your eye is retina. Image is formed on the retina. It has delicate membrane with light sensitive cells. Your screen is not like a plain paper or plain sheet or plain wall. Na,
Your screen is special. It has photosensitive cells, you know, and it convert the image into neural signals. भाई आँख है यहाँ पे, and you can see it. Now, your brain is interpreting, and your brain understands electrical signals, right? So your eye, the screen, has these cells which are converting the image into electrical signals and sending to your brain, and that's how your brain sees. Brain देख रहा है भाई, तुम थोड़ी देख रहे हो, आँख थोड़ी देख रही है. Eye is the tool, brain is the mind, the processor. Fine, ठीक है? Yes sir. Why sensory? It's okay, Leo, don't worry. Now listen, your retina has two types of cells. I told you it has photosensitive cells, but we have two types of photosensitive cells. One is called as rod cells, which are sensitive to light. तुमने ध्यान दिया है? When you turn the light off in a room, रात को सोने जा रहे हो, you turn the light off. Suddenly you feel like very dark. कहाँ हैं हम लोग? अच्छा पकड़ पकड़ के जा रहे हो. But after some time you start seeing things, हल्के हल्के. Slowly you start to see things. अच्छा वहाँ पर टेबल है, वहाँ पर अच्छा okay वहाँ कुछ रखा हुआ है, वो कुर्सी है. At least you can figure out where is what, right? Rod cells. Your rod cells were activating. Yes? Yes, don't worry. Your rod cells are activating. Rod cells, they are sensitive to light, correct? And they see black and white image. Cone cells, they are sensitive to color, bright light, colors, correct? What is pupil dilation? I just told you, no? This is pupil dilation only. When light is less, pupil dilates to get in more light. And your rod cell starts to function in dim light. Very good. Rods in action and cones in action. Cone is colorful, cheerful, full of colors, right? Cone cells are sensitive to color. Rods, light. Colors, cone cells, colors. Take. Now you tell me, your retina has so many cells which are converting into electrical signals. Up from eye to brain, we need a wiring, na bhai. That wiring is optic nerve, right? That is optic nerve. So what is optic nerve? It carries signals from retina to the brain. That is optic nerve. Each cell has a wiring. Then this wiring forms a bundle and goes towards the brain. So this bundle is called as optic nerve. Okay? It enables the brain to control the eye. Your optic nerve is the relation between your eye and the brain. It is the two-way communication path. Tick. Fine. Now, wherever this optic nerve forms a bundle, this optic nerve is what? It's a bundle of nerves. Wherever this bundle is formed, and then it goes to the brain, where it bundle is formed, no, that portion, that place is called as blind spot. What is blind spot? Blind spot is the point in your eye where photosensitive cells are not there. जहां पर डिटेक्शन सेल्स नहीं है, फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं है, मींस ये वो पॉइंट है जहां आपको नहीं दिखता है. यस, करेक्ट. सेंसरी न्यूरॉन्स, यू आर राइट. ब्लाइंड स्पॉट इज वेयर द ऑप्टिक नर्व्स फॉर्म्स अ बंडल एंड गोज टुवर्ड्स द ब्रेन. ठीक है जी, फाइन. हाँ, वेरी गुड. Bunny's cook, हाँ, that's true. The different colors is because your eye has just उसका पूरा सिस्टम हिल गया, that's why. But I will not go deep into that. Draw the eye diagram. Zipolak has a question. Can they ask to draw diagram of the eye? Normally they don't, but if this comes, it will come for 5 marks. If the diagram of eye comes, it will come for 5 marks. But normally, what kind of questions are coming nowadays? They will give you diagram of eye and they will ask you to label the parts or tell the function of each part. So that's why structure of human eye and function of each part of human eye is very important. But I'm saying practice the diagram. Zaruri hai. And from retina, optic nerve ke through, it goes to the brain. So this is your diagram of the human eye. Is it important? Yes. If you are learning about all the parts, why not as well just practice diagram once? And I'm not saying some fancy diagram. I'm saying simple diagram. यार, very very easy. Cornea, aqueous humor, lens, iris, retina, इतना बताना काफी है. ठीक? हाँ. Yes. No. Manish को vitreous humor is liquid. ठीक? अब सुनो. This kind of questions are very common. Column 1, column 2. जल्दी बताओ. Column 1.
controls amount of light entering the eye, aids vision in dim light, controls the focal length of eye lens, aids in sensing colors. Column 2 बोल रहा है ciliary muscles, rod cells, cone cells, iris. हाँ जी, it's a MCQ, multiple choice question. फटाफट. सो गए थे 5 minute break में. Actually, this is CBSE, purely CBSE, but all these content topics are there in ICSE also. So if you think it will help you, you are welcome to watch, bacha. Harsh, that's true. Brain inverts it. Brain. B. When we rub our eyes, no, we mess up with the vitreous humor and everything. Your eye kind of gets little squished and then regains. There, all the sensory these neurons, no, all these cones and rods, they get little messed up here and there. See, it's biology question, but I'm just saying it's not healthy. It damages the eye, और ये sensory neurons में effect पड़ने से होता है. Details. Hello, Varsha. Okay, lot of B's and C's. Now C's actually. हाँ, listen to me यार. Controls amount of light. कौन करता है? Amount of light. Ciliary muscles? No. Rod cells? No. Cone cells? No. Iris. So 1 is D. Aids vision in dim light. Oh, sir, rod cells. Okay. 2 का B. Control the focal length of eye lens. कौन करता है? Focal length of eye lens. Sir, ciliary muscles. Aids in sensing colors. अरे वाह, sir, cone cells. So option C is the right answer. Not a problem. चलो भाई, question. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the 4 options. फटाफट. On optic nerve, no. Pandit ji, no. Retina. Optic nerve is a connection between all the retina wala cells, all the sensory neurons, all the rods and cones to the brain. C. Very good, you're right. Focal length of eye lens is changed by ciliary muscles. Correct answer is ciliary muscles. They are smooth muscular fibers. Relaxation and contraction change the curvature. Curvature मतलब होता है मोटाई और पतलाई of the lens. ठीक. The change in curvature of eye lens changes the focal length of the eyes. ठीक. चलो. Second question. The human eye forms the image of an object at its. Hey, easy question. Retina. Human eye forms the image of the retina. ये अरे structure of human eye से मुश्किल question नहीं आते normally. ठीक है? Easy. Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25? Aha, good question. Yes. क्यों? AIDS means supports. AIDS ही वो नहीं है बीमारी. अरे ये AIDS मतलब होता है support. Not able to converge. Good. It's okay. Come back. Near point. Strain. Accommodation lost. All of you mean the right answer. But that is what I'm telling you. Answer सबके दिमाग में होता है. But how to write the thing which really makes sense to the examiner? क्या लिखोगे? सबको feeling है क्या आंसर होगा, but answer है क्या? देखो भाई, when you bring your finger close, your lens is becoming thicker and thicker and thicker and thicker. But after 25, the ciliary muscles are not able to contract further. अब तक क्या हो रहा था? Ciliary muscles were trying to contract, make the lens thick. But after 25, ciliary muscles बोलती हैं बस अब नहीं हो रहा मेरे से, मेरा हो गया, I'm done. So what happens? A normal eye is not able to see the objects placed closer than 25 clearly because ciliary muscles of the eyes are unable to contract beyond a certain limit. भाई उनकी भी लिमिट है ना, वो भी तो मसल्स ही हैं तुम्हारी. तुम इंसान हो, तुम्हारी मसल्स इंसान की मसल है, तो भाई लिमिट होगी ना उनकी भी. ठीक, फाइन. This is the right answer. No stories, correct, perfect answer. ठीक, हाँ, very good. Can't be adjusted because your muscles have given up. Ciliary muscles have reached its limit. That's why. Take question B. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? Yes. What happens to the image distance in the eye
when we increase the distance of an object from the eye? Aditya, the question you're asking, I don't have its right answer. I have a feeling, I don't have the right answer. That's the truth. Accommodation, decrease, no change, unchanged. हाँ, good. अरे ट्रिक क्वेश्चन है. देखो क्या होता है, लेंस का काम ही ये है. Your lens and retina, they are at a fixed distance for a healthy eye at least. They are at a fixed distance. Lens कुछ भी करेगा, lens will become thick, become thin, become thick, become thin to make sure image is formed at the retina. आप, if you bring the object closer, your lens will become thick and thick and thick, so that image is formed on the retina. If you take your finger far from you, your lens will become thin, so that image is formed on the retina. Image तो बनेगा retina पे ही भाई, ठीक है? It will not change. तो लिखोगे क्या? See, image is formed on the retina even on increasing the distance of an object from the eye. But difference, what is the difference then? Difference is the eye lens becomes thinner and its focal length increases as the object is moved away from the eye. Hence, the image distance will not change. These two are very good questions. These two questions check your proper understanding of the working of human eye. अच्छे question है बहुत ये, ठीक है? Yes, I know बच्चा, same. Good, very good. अब बात करते हैं डिफेक्ट की. मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दो बातें करेंगे. मायोपिया क्या होता है? सी, दिस थिंग I will explain you थोड़ा सा quickly because it's something I have done multiple times, and people who are listening for the first time, relax, listen carefully, don't panic. I will give you a method which will make sure you don't have to cram anything. तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. I have seen people cramming myopia. Sir, myopia होता था short sightedness, long sightedness, याद नहीं आ रहा क्या होता था. Myopia and hypermetropia, you have two types of defects majorly, है ना? Myopia versus hypermetropia. Which word is short? Myopia, hypermetropia. Myopia short है ना? Short sightedness or near sightedness. Short or near. Objects which are shorter length to you, जो short length पे है तुमसे, right? और near sightedness, जो near है तुम्हारे. Whatever word comes in the name, that is okay. Short sightedness or near sightedness, near objects are good, far objects are bad. You can't see them properly. In hypermetropia, long word, long sightedness. Long range objects good, short range objects far objects good. In hypermetropia, near objects not good. एकदम opposite, ठीक है ना? हाँ, very good. तो क्या होता है myopia में? सर near sightedness है, means near objects are good, far objects are not good. And most of you right now are suffering from myopia. Even me, I am also suffering from myopia. ऐसे ही पता चलता है सबको, ठीक है सर. So in myopia, normal vision में you can see near objects also clearly, far objects clearly, but in myopia near objects are good, far objects are blurry. मजा नहीं आ रहा, ठीक? क्या दिक्कत है? What is the problem? You tell me, what is the problem? Yes, true. Golden test. Listen, sir, near objects good, far objects blurry. Near objects, to see this object, your lens needs to be thick or thin. To see a near object, your lens needs to be thick. Means your lens does not have a problem in becoming thick. Lens को मोटा होने में दिक्कत नहीं है. कहाँ दिक्कत है? सर, lens को पतला होने में दिक्कत है. Right? Your lens is thick, and that is the problem. Problem क्या हो रहा है भाई? Thicker eye lens. रुक जाओ, यहीं लिखता हूँ मैं. Thick eye lens. Sir, my eye lens has become thick, and that is why it is not able to become thin, and that is why I am not able to see far object. ठीक है? Thick हो गया पक्का? चलो, पहला रीजन हो गया. अब सुनो जरा. Eye lens अगर thick होगा, it will converge more, right? If your eye lens is thick, it will converge more. Image will be formed in front of retina or behind retina. This is your eye lens, ठीक है भाई? Your eye lens is thick and this is your retina. Let's say
your lens is converging more. Image will be formed in front or in front. क्यों? Sir, जल्दी converge कर दे रहा है. It is converging more. So image is formed in front of retina. So in myopia, image is formed in front of retina. Take second point. I am telling you very, very important points and using experience. You will never make a mistake. Sir, lens thick. बढ़िया हो रहा है, thin नहीं हो पा रहा. My lens is not able to become thin. That is the problem. Which means it is converging more. Which means image is formed in front of retina. ठीक. अब यार एक बात बताओ. अब when image has to be formed in front of retina, there could be two reasons for it. Either your lens has become thick, or what if your retina has moved back? What if your normal retina should have been here, but retina has moved back? Normally, क्या पता तुम्हारा lens ठीक हो? Maybe your lens is fine, है ना? Your lens is supposed to form the image on the retina. But if the image is supposed to form in front of retina, there could be two causes. One, lens is thick. Second, your retina has moved back. How is this possible? If your eyeball becomes long, elongated eyeball. Take. And those are the two reasons. Myopia के cause क्या हैं? Sir, we have two causes. Either your eyeball has become long, because image needs to form in front of retina ना भाई, or your eye lens has become thick. दोनों में आपको क्या मिलेगा? In both of these two cases, you will get image in front of retina. रटोगे? ना, रटने की जरूरत नहीं है. Will you cram these things? क्या जरूरत है भाई? Understand them. Fine. So myopic eye में your lens is converging more. Your lens is thick na? It is converging more. To correct myopia, what do you want? You want your lens to converge less na? So which lens will you use? Concave. You want your lens to converge less, which means you will diverge. You will use a concave lens. So correction of myopia is concave lens. Concave lens. Power of concave lens is negative. अपना power बताना जरा. People, myopians assemble. Tell me your power. अरे I am telling you mine. Minus 1.75 and minus 2 in one eye. Tell me your power. Myopians. Negative. Anji. Myopia is optical condition. Yes, Anisa, you're right. Hello, Sharif. No. Purnima, ciliary muscle से lens is joined. Retina is the back portion of your eyeball. So if your eyeball becomes long because of injury, because of multiple things, then your retina can move back. Yes, नहीं है. अच्छा नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं बच्चा. If glass नहीं लगाया तो बहुत अच्छा. Touch wood. खैर मनाओ. ठीक है? Yes. Minus ना. All myopians have minus, negative number. I also have negative number. Why? It's a concave lens. That is the proof. Simple. क्या दिक्कत है? Clear हो गया? अब numerical की बात करते हैं. Listen, अरे सुनो ना. For numericals, क्या करना है? Sir, myopia numericals are the easiest. क्यों? Myopia में क्या हो रहा है? Sir, myopia में it is nearsightedness, na? Which means far object you cannot see. Ideally, your far point should be infinity. But in myopia, your far point is not infinity anymore. It is close, right? So this red area, blurry area is not visible to you. Ideally, far point is infinity. But what is your far point? Because you have myopia, your far point is somewhere here. So this is the far point of myopic eye. ये myopic eye का far point है. ठीक है सर. अब if you want to correct your myopia, what is the job of your lens? तुम्हारा lens क्या करेगा? अगर object infinity पे है, your lens will form the image where you can see, and where you can see at your far point. तो तुम्हारा lens, your lens has one job. If object is at infinity,
means u is infinity. ध्यान से सुनना, I'm telling you, if u is infinity, if u is infinity, right, what is the position of image where your lens should form? कहां तुम्हारा लेंस बनाएगा? तुम्हारे फार पॉइंट पे, that is v. So my friends, in myopia numerical, u becomes infinite and v is what? Your far point. Bas. Yes, Nisa, diopter is SI unit. First thing I'm telling you about numericals. In myopia, your far point is not infinity, it comes close. So, the function of your lens, the corrective lens, the concave lens should be, if object is kept at infinity, it should form the image where? At your far point of myopic eye. So, u, where object is kept, that is infinity. Where is the image formed by concave lens? Where your far point is there. So, that is v. So, you have v, you have u, it becomes f. So 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. अब 1 upon v, u, 1 upon infinity क्या होता है? 0. So 1 upon v is equal to 1 upon f. So f is equal to v. In myopia, focal length is the far point of the myopic eye. Getting my point? बच्चा लोग, myopia numericals are actually easier than hypermetropia. This is what I'm trying to prove you. U is infinite, V is far point. If you keep this in lens formula, 1 upon V minus 1 upon U equals 1 upon F. 1 upon infinity is what? Infinity is a large number. So 1 upon infinity is 0. 1 upon infinite is 0. 0 होता ही है, ठीक है? ठीक? वो तो 0 हो गया. 1 upon V equals 1 upon F. F equals V. Focal length of your concave lens is actually the far point of your eye. Clear? जल्दी बताओ फटाफट. सिलेंड्रिकल एस्टिमेटिंग की बात चल रही है क्या? आ गया? रिपीट. headache Aditya is because strain in the eye, that's why. What I'm saying is, in myopia, near objects are cool, far objects are not cool, है ना? So far objects you cannot see, which means your eye lens is thick, right? ठीक है? So now you have to correct it. To compensate, you want your lens to converge less. You will use a diverging lens. You will use a concave lens. ठीक? Now, the job of your concave lens is, if some object is kept at infinity where it is not visible to you. क्यों? अरे भाई तुमको myopia है. That's why. So your concave lens has one job, to form the image of that object where you can see. कहाँ पे? At your far point. So your far point becomes the position of the image formed by the concave lens. The object kept at infinity is your object. Your object distance becomes infinity. So u is infinite, v is far point. इसको रख दो formula में. You are getting the focal length of the concave lens is actually the far point. और दोनों lens के left side हैं, तो focal length becomes negative. Correct? Yes. अक्षय, possible. समझ गए? Very good. आगे आओ. I will repeat the same thing in hypermetropia. Listen to me very carefully. Myopia अच्छा लग रहा है? Clear हो रहा है? बढ़िया है ना? Alvina, बच्चा, I'm saying in myopia, I will give you a proper working method for this, and I have done a special session on these numericals. It's in the description, by the way. Right? Listen very carefully. I will give you a proper working method also. Right now, I'm just saying in myopia, the focal length of lens comes out to be equal to the far point of the myopic eye. ठीक? चलो आगे आओ. Hypermetropia means far sightedness. Sir, far sightedness. Long word, long sightedness, long range objects good. मतलब far objects good. Near objects मजा नहीं आ रहा. Not good, not cool, blurry. Fine. In hypermetropia, far objects are clear to you. Near objects are not clear to you. Problem क्या है? Sir, if far objects are clear to me, means my lens is able to become thin. To see a near object, I want a thick lens. But it is not clear to me. मतलब my lens is not able to become thick. These diagrams, yes, Swanandi, not this diagram actually, but this diagram can come.
दिस डायग्राम, ये वाला, these two diagrams are important और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि भाई what happens to far point comes close, that is important. ठीक, चलो आगे आओ. सो हाइपरमेट्रोपिया क्या दिक्कत है सर? लेंस पतला तो ठीक ठाक हो जा रहा है, मोटा नहीं हो पा रहा. ओह, योर आई लेंस इज थिन आई लेंस. फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक, यस. हाँ, कन्वर्जिंग मोर कुड बी एनी प्रॉब्लम, सिलियम असेंबली डिफेक्ट हो सकता है. ठीक, फाइन. तो आई लेंस इज थिन, दैट इज प्रॉब्लम इन हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? Because of thin eye lens, image will be formed in front of retina or behind retina. अगर eye lens पतला होगा, if eye lens is thin like this, and here is your retina, image will be formed in front or behind. U is infinity. I'm confused. Manish Cook, बच्चा, U is infinity means object is kept at infinity, right? That you cannot see. So for your concave lens, that infinity वाला object is the U. And where this lens has to form the image, where you can see, right? Where your far point is, जहां तुमको दिखेगा, that is the V for the lens. ठीक? Behind retina, good. क्यों? अरे सर कन्वर्ज नहीं करना ढंग से, ये तो कन्वर्जिंग पावर कम है इसकी, ये दिक्कत है. That is why image is formed behind retina. Okay sir, image is formed behind the retina. Image is behind retina. ठीक है, image is behind retina, fine. Now you tell me this कि भाई there could be one more reason for this. Either your lens is thin, maybe your lens is not faulty, maybe your lens is okay, but maybe your retina has moved forward. ये भी तो हो सकता है भाई. इमेज रेटिना के पीछे बनने का तरीके क्या क्या हो सकते हैं? आइदर आपका लेंस थिन हो या फिर रेटिना आगे आ गया, यानी कि शॉर्टर आई बॉल, आपका आई बॉल शॉर्ट हो गया, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव टू रीजंस. शॉर्टर आई बॉल, थिनर आई लेंस, both of them have the consequence of image forming behind retina, right? In hypermetropia, what is happening? Near point for a healthy eye should be 25, but for a hypermetropic eye, you cannot see at 25. क्यों? अरे भाई तुमको hypermetropia है, you have long sightedness, you have far sightedness. तुमको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, right? So what do? You अरे यार, you study like this, है ना? आप क्या करते हो? आप दूर रख के पढ़ते हो. अरे यार एक सेकंड रुको. ओके, हाँ, इट्स ओके सौजीत. हाँ, now listen. So that's why your your near point has moved back. Ideally your near point should have been 25, but now your near point is not 25, it is somewhere behind that, है ना? तो कहीं दूर हो गया तुमसे, ठीक है? So near point goes away. That is what is happening in hypermetropia. Fine. अब एक बात बताओ, your lens has a problem in converging. तुम्हारा लेंस कन्वर्ज कम कर रहा है. If you want to put a corrective lens, what will you do? क्या करोगे? Sir, I will use a lens which can help in converging. You will use a convex lens. That is why we use a convex lens. ठीक है? Clear? Yes? हाँ, बढ़िया. चलो, अब ये भी हो गया. अब ध्यान से सुनना जरा बात. न्यूमेरिकल की बात हो रही है. सेम लॉजिक विल अप्लाई. क्या बात होगी? सर, I have far sightedness, I have hypermetropia, मतलब दूर का देखने में दिक्कत नहीं होता मेरे को. I can see far objects बढ़िया. Means all this is my visible area, right? All this is my visible area. The green area is my visible area. ठीक है? What is your problem? Sir, this is my problem area, blurry area. I cannot see in this region. ठीक? Why? When you keep an object at 25, that is where you should be able to see, because a healthy person can see.
if a healthy person is there, an object is kept at 25, they can see, but you cannot see because you have hypermetropia. Tick. So now what is the job of your lens? तुम्हारे लेंस का काम क्या है? The lens which you are going to use as a corrective lens, it has one job. When the object is kept at 25, भाई एक बात सोचो, all the corrective lenses, what is their job? So that a defective eye can function as a normal eye. भाई बराबर दिख जाए ना हमको भी, माना कि डिफेक्ट है लेकिन हम भी जी सके ना जीवन में, right? So that's why all the corrective lenses, they are trying to make you function like a normal eye, like a healthy eye. Fine. So your corrective lens has one job. If an object is kept at 25, you should be able to see it. But how will you see it? तुमको तो नहीं दिखेगा 25 पे. Your lens should form an image where at your new near point. तुम्हारा near point ये है actual में, but because of hypermetropia your near point has become this, which has moved away. अब तुम्हारा lens क्या करेगा? What will your lens do? It will form the image of this object kept at 25, where at your near point. यानी कि u is minus 25, v is your near point, and that's how you will apply the formula. 1 upon v minus 1 upon u equals 1 upon f, where u will be minus में 25 centimeters. Clear? Yes. विपिन जी रहे हैं. Yes, far point of hypermetropic person infinity. जानवी, for a hypermetropic person far point is infinity. Yes, बहुत तेज understand. जल्दी बताओ, clear हो रही है बात? See, whatever I'm trying to teach you, my whole and sole purpose is that these numericals you should be able to solve without cramming a lot of things. Human eye का chapter ऐसा है ना, it's purely theoretical. For me, light chapter had something, human eye chapter में कुछ नहीं है, केवल theory है. ये सब theory है भाई. No need to cram. समझ लो, हो जाएगा. Yes. Not clear? Convex lens is positive? Yes, you're right. Not clear? Again, I'm telling you, the job of any corrective lens is to make sure this faulty eye should be able to function like a healthy eye. In myopia क्या हो रहा था? Sir, in myopia I was not able to see a far object, infinite वाला object, है ना? Your lens was doing what? If object is at infinity, मतलब u is infinity, the image should be where? Where your far point is, right? So that becomes your v. Simple. Here, what is the function of this corrective lens, which is convex lens? The focal length will be positive. ठीक? यहाँ क्या हो रहा है? Sir, if object is kept at 25, where a healthy eye can see, but I cannot see because I have hypermetropia. So my lens has one job. If object is kept at 25 centimeters, its image should be where? Where I can see. But where can you see? At your near point. So u is minus 25, which is what you want to see. And v is your near point where you will see, where you want the image to be. Clear हो गया? Yes, Komal, come on, जल्दी बताओ. With this logic, you can solve any numerical. Any numerical. Believe me, I will tell you how. Don't worry, practice करेंगे यार. Sir, myopia, hypermetropia तो हो गया. अब होता है एक press myopia, and this is where bifocals will come. देखो भाई, with age क्या होता है ना कि with age your ciliary muscles become weak. मतलब sir, power of accommodation it decreases with aging. So gradual weakening of the ciliary muscles happen. Gradual weakening of ciliary muscles. ठीक? Diminishing flexibility of the eye lens. तो ये reason है press myopia का. It's a mixture of hypermetropia and myopia, right? Mostly hypermetropia होता है. इसमें दूर की ज़्यादा खराब होती है वैसे तो. अब press myopia के अंदर, if you have myopia also, you have hypermetropia also. कौन सा लेंस लगेगा? Sir, for myopia I want concave. For hypermetropia I want convex. But if I have both, what you will do? You will use both. Bifocals. You might have seen your grandparents, like for example my parents, they have bifocals. In their specs, there's a small portion in the bottom where they have correction for far-sightedness, and they have nearsightedness वाला lens ऊपर. ठीक? ऊपर myopia के लिए, नीचे है hypermetropia के लिए. Very good. Question में समझ लेंगे ना, बहुत बढ़िया. ठीक है? So bifocal lenses,
एंड नाउ इट इज वी हैव प्रोग्रेसिव लेंसेज कि भाई उसमें ग्रेजुअली होता है, ऐसे अलग से ना वो नहीं होते सेक्शंस. फाइन, ओके. द बुश इज ब्लरी. हाँ, प्रोग्रेसिव के अंदर जरा ये अच्छा होता है. ठीक है, इसे छोड़ो तुम, जरूरत नहीं है. फाइन. We need bifocals for presbyopia. Okay. Now one more defect, cataract. In Hindi we call it motiyabind, we call it, right? So cataract. Cataract is a defect in which your eye lens becomes hazy. It becomes opaque, right? So normal eye के अंदर eye lens is allowing the light to pass through. But in cataract, your eye lens has become opaque, so it is क्या ही करेगा वो, ठीक. So clouding of eye lens, इसको बोलते हैं हिंदी में मोतियाबिंद, and this has only one solution, which is surgery. They have to replace your eye lens. ठीक, fine. हाँ, Blizzdom, Telegram. हाँ, astigmatism बच्चा होता है, it is because of irregular curvature. आपकी आई का ना कॉर्निया का कर्वेचर इरेगुलर होता है, उसमें लगते हैं कई बार सिलेंड्रिकल लेंसेज. चलो भाई, क्वेश्चन फटाफट आ जाओ. क्वेश्चन. A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in the textbook. Which of the following statements is correct? क्या पढ़ सकता है सर ब्लैकबोर्ड, क्या नहीं पढ़ सकता है, what he cannot read, textbook. Problem. Yes, come on. अरे सोनिया एंड कोमल, क्या हो जाएगा बच्चा if I take your name? You answer, you learn, that's how it goes. Progressive lens. Aman, progressive lens is like a gradual refractive index changes in that. In bifocals, what happens? Concave, concaves. And it's a very drastic change. That's what happens. A, B, 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 B. हाँ, very good. अरे एक बात बताओ यार, दूर का सही दिखता है. Yes sir. मतलब far point is infinity. Yes sir. Not able to read near objects. Textbook क्या है? It's a near object. He is not able to read the textbook. मतलब sir, near point is not 25 anymore. Near point has gone away. Near point has receded away. अरे वाह, बढ़िया लग रहा है. Near point has come close, गलत है. Far point, no. So option A is the right answer. Near point has moved away from 25. ठीक. Question number B. A person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meters. This defect can be corrected by using a lens of power. Numerical for you. Come on. Receded. Receded means gone far. Receded मतलब दूर हो गया. B. Cyclone gave an encoder B, C. Mars. ब्लैक होल बच्चा, ब्लैक होल में तो बहुत दिक्कत है, बहुत दूर है पहली बात. और दूसरा, यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ थिंग्स विच एमिट लाइट, बट ब्लैक होल तो योर हबल टेलीस्कोप इज एबल टू सी ब्लैक होल्स विद सच बैड क्लैरिटी. और आई की बात कैसे कर सकते हैं? राइट, बी, सी. हाँ, अरे सुनो ना, लिसन टू मी. अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 meters. पहले ये बताओ, विच डिफेक्ट इज दिस? भाई 2 मीटर के दूर नहीं दिखता है, मतलब सर far objects, अब beyond 2 meters you are not able to see. Beyond 2 meters मतलब far objects, near objects, मतलब near sightedness, मतलब short sightedness, short word myopia. Myopia हो गया. This is myopia sir, very good. And myopia का numerical होता है very very easy. Yes sir. In myopia V is equal to F. Yes sir, correct. So this 2 is the far point. So your focal length will be 2 meters. Positive or negative? Myopia में what do we use? Sir, concave lens. Concave lens, right? It is minus 2 meters. Very good. Your power is how much? Sir, 1 upon focal length in meters, मतलब 1 upon minus में 2, यानी कि 1 upon 0.5 minus में. Done. B. Yes. Right? Minus 0.5. That's why. करेक्ट. अरे वेरी वेरी इजी यार, बता रहा हूं मैं तुमको, न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं. सिंस मायोपिक करेक्शन नीड्स कॉन्केव लेंस एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, मिक्स लॉजिक एंड मैथ.
चलो आगे चलते हैं. अब थ्योरी है भाई प्योर डिस्पर्जन. सॉरी, पहले बात करते हैं जरा प्रिज्म की. प्रिज्म क्या होता है सर? इट्स अ 3 डायमेंशनल ट्राइंगल ग्लास का बना हुआ, राइट? दैट इज सिंपल. सो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. प्रिज्म इज लाइक अ ट्राइंगल, इट्स जस्ट 3 डायमेंशंस. ठीक है ना? फाइन. नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म है ए. एयर, ग्लास, एयर. ठीक है? यस, डाउट? किंग, अरे हम बन जाएंगे यार, तुम रुको तो सही. 60 डिग्रीज. रिसीडेड मीनिंग सोनिया बच्चा, रिसीडेड मीनिंग होता है गोइंग फार. इट गोज फार फ्रॉम यू. 60 डिग्रीज. सृष्टि, normally equilateral prism has 60, not all prisms. Yes. Good यार, you feel yourself improving. That's the whole motive of today's session. Time. आदित्य, टाइम हो गया है लगभग. It's 9:50. It'll go till 10:30. You and I. Come on. नहीं करोगे कोई बात नहीं, मत करो. Nice. Doubt. अरे आज द डाउट जल्दी बताओ. हाँ, अब सुनो. Refraction through a prism. Angle of prism है air and glass. Now listen to me very carefully. In glass slab, you have to simply use the simple things of refraction. Rarer to denser, denser to rarer. That's it. ठीक. Here also let's do the same thing, and you will realize कि भाई it's a very common question which is there in sample papers. I think sample paper or practice paper we have this question. क्या? Angle of incidence is the angle this one. ठीक. Fine. First interface is air to glass, means light ray will bend towards normal. Sir, bending towards normal. Angle of refraction will be less than angle of incidence. Yes sir. Now second interface is this one. है ना भाई? ये वाला interface second है. इस interface पे क्या हो रहा है? Light rays going from glass to air, denser to rarer. It will bend away from normal. ठीक है sir, away from normal. बहुत बढ़िया. Angle of emergence हो गया. Correct? Yes sir. Angle of emergence. Very good. Now what do you see? In a prism, at the two interfaces, the light ray is bending towards the base. भाई पहले वाले पे देखो, light ray would have gone like this, straight, है ना? But because of prism, it is bending नीचे की तरफ, towards the base. Fine. At the second interface, it would have gone like this. But because of this glass to air, it is bending. In both the cases, this light ray is bending towards the base. And how did you do it? Simple ray diagram. क्या दिक्कत है ना? Yes, defect diagram will come. Swanandi, बच्चा, near point, far point diagram you can practice. Yes, Aditya, there is a relation. But right now I will not go into that because ICSE के लिए हम लोग पढ़ाते हैं. We teach this for ICSE, but for CBSE right now I'm not going into derivations and those things. ना, okay? But one thing is important in this, if you notice. But if this prism was not there, what would have happened? Sir, without the prism, light would have gone like this. Agree? Without the prism, light would have gone straight like this. But because of the prism, light is going like this. Right? क्या हुआ? Sir, light would have gone like this. But because of prism, finally it is coming out in this direction. There is a angular displacement. कितना divergence आया? कितना deviate हुआ light? Light कितना deviate हुआ? इतना. This much, right? So this here, it becomes your angle of deviation. This becomes your angle of deviation. Clear? क्यों आया deviation? Because without prism light would have gone like this, but finally it's coming out. No, it will not show dispersion. Divergence meaning deviation. Divergence meaning this, but deviation meaning अपने रास्ते से भटकना. Deviation meaning deviate हो जाना, भटक जाना, right? So deviation means change, right? So you have angular deviation. Now you tell me, angle of deviation in glass slab कितना था? 0, non-zero. Angle of deviation for a light ray in glass slab, it was 0 or non-zero? It's okay, so I'll tell you, don't worry. Sandra, I'll do it. 0 or non-zero? अरे तुम ये तो बताओ. I'll tell you, don't worry.
Yes. Zero. Why zero? Why zero? Because emergent ray and incident ray in glass slab was parallel. That's why zero. But here what is happening? This light ray, it's going there. Right? It's going there without the prism. But finally, because of prism, it is becoming like this. कितना आया change? इतना. Right? इतना change आया इसमें. ये. This is the angular deviation. Angle of deviation. इसको बोलते हैं angle of deviation. Correct? ठीक है सर. Glass slab में this angle of deviation is 0. But this angle of deviation is coming because of prism. ठीक? Yes. Okay. हाँ. Correct. बढ़िया. Polychromatic light. I'm coming to it. Don't worry. Is this clear? Now listen to me. This is a single color. When a single color passes through the prism, nothing happens. It just goes the way it is shown right now. But different colors will show different types of bending. Let me ask you. If let's say this is glass and this is air. Take. This is your normal. This is glass, this is air, this is your normal. Now this is the red colored ray. Tick. This is red colored ray. It has eye. Now we have a. चलो ठीक है. Here we have a violet colored ray. It also has eye. This one has R2 and this one has R1. R1 or R2, which one will be more? Sir, R1 is more than R2. R2 is more than R1. R1 is equal to R2. 1, 2, 3. Tell me. Mars, we have a shot on this. I only made this short here. A. Focal length will increase, by the way. Yes, Ajay, you're right. Two, one. Arey suno na, listen to me. I'll tell you something. Red color, in air all colors have same speed. But in the medium, na, red color has least effect because of the medium. And violet color gets most affected. Matlab, speed of violet color will slow down more compared to red. और जिसका speed ज़्यादा slow होगा वो ज़्यादा bend होगा. Right? जिस पे ज़्यादा effect होगा वो ज़्यादा bend होगा. So, in short, what can you understand? कि भाई, if you have red color and violet color, red color will bend more. Sorry, bend less compared to violet color. Take. Why are we doing this? Because we have vigor. Red is one extreme, violet is one extreme. As you go from violet to red, wavelength increases. Right? Wavelength increases. Wavelength क्या होता है? सर ये होता है wavelength. आप जब violet से red की तरफ जाते हो तो wavelength increase होता है. Simple सी बात क्या है? Violet पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है. Violet is the color which gets affected the most. Yes, हाँ, good. Govind, I'm sorry, bacha. I don't want to take this question right now. Right? Yes, thank you, Komal. We have so much to cover, bacha. We can't deviate a lot. Come on, listen. So that's why red bends the least, violet bends the most. Different colors, they bend through different angle. Rays of each color emerge along different path. But why are we talking about this? Why are we talking different colors here? What we just saw, a single color will come out as a single color.
but each color will bend differently. But why are we talking like this? Because white light is not a single color. White light is a spectrum. White light is a spectrum. And how do we know about this? Because of Newton's disk. This Newton's disk experiment showed us कि भाई, if you have these 7 colors on a disk and you rotate the disk very fast, क्या होगा? The disk will appear white. इसका मतलब है white light is a mixture of these 7 colors. It's a spectrum, है ना? क्या है spectrum? Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक. White light is composed of all wavelength भाई. इसका मतलब किस पे इफेक्ट ज्यादा? वॉयलेट पे. वॉयलेट ज्यादा बेंड होगा. स्पीड ज्यादा स्लो किसका होगा? वॉयलेट का. Which color will have the maximum effect? Violet. Speed of violet will decrease the most. Yes. Red will bend the least. Violet will bend the most. Easy. Yes. Can be 180. Ooh, 180 तो मतलब हो गया ऐसे ना. No. हाँ, सुना दी dinner break. I'll give you बच्चा. Don't worry. Red bends the least. And by the way, बच्चों, please don't wait for dinner. For me to give you dinner break. You keep studying and you bring your dinner. It's okay. ठीक है? I'll give you dinner break in another 30 minutes. Sorry. चलो ठीक है. Now you tell me, भाई prism की वजह से prism is able to split the light. Which light? White light. Why? Because each color is bending differently. Because of each color bending differently, these colors get split. And that is why a prism can split the white light. And this is what we call as dispersion. So what is dispersion? Dispersion is the splitting of white light into 7 colors using a prism. That is called as dispersion. Take fine. Recombination क्या होता है? Now this is an important topic. Why? Because ये बार-बार पूछ रहे हैं. If you take the historical perspective from last 2 years, recombination पे we are getting a lot of questions. Yes? Yes? Come on. Yes? Govind? Okay. You ask me in the comment section, I reply you back, bacha. ठीक है? Because this we don't teach. Yes? If I go into this right now, others will be confused. और अभी क्या ह्यूमन आई है 10:30 है, उसके बाद हमको इलेक्ट्रिसिटी करना है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी करना है और आज ही करना है. That's why. ठीक है? You tell me in the comment section, I'll reply back. पक्का, don't you worry about that. Come on. Activity नहीं है Sandra, not today. बच्चों, this activity, it's a diagram based question which is asked very commonly in the exams. Diagram is asked in this year's sample paper, practice paper. Also, this is one of the question you can see. ठीक है? ये important है कि how to recombine. One prism will split, one more prism inverted will recombine. और same चीज है ना भाई. ऐसे जा रहा है, it is splitting, then it will recombine. ठीक, fine. Because why? These two prism, if you think about it, ध्यान से देखो, ये दोनों prism क्या है? Don't you think they are acting like a glass slab? In glass slab, do you think dispersion happened? No. Glass slab के अंदर dispersion हुआ था क्या? नहीं हुआ था. क्यों? Because both the opposite surfaces were parallel. ये दोनों surface parallel थे. तो inside the glass slab थोड़ा बहुत splitting हुआ होगा. It's okay. अंदर ना हुआ होगा. But when it comes out, recombination हो गया था. But when it comes out, recombination happened. So that's why when opposite surfaces are parallel to each other, what happens? Recombination. No splitting, no dispersion happens. ठीक, fine, बढ़िया. क्लास कब तक चलेगी बच्चा? 1 तो बज ही जाएगा. देखो, don't worry. आओ, come on. Question करते हैं, चलो. Frequently asked question. Question number 1. How will you use two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light? Draw the diagram. This is a very common question. Previous year question है ये. Yes. Come on. जल्दी कर लोगे ना. डायग्राम बनाना है. और डायग्राम में don't go into drawing the colors. मैं ये नहीं बोल रहा कलर बनाना. पता है what you have to do? Make one prism. Yes. Make one more prism like this. And I am expecting you will be using a scale and not doing this like me. क्या करना है हमको?
सर हम लोग दिखाएंगे, कलर छोड़ो यार तुम, आई विल यूज द सेम थिंग, ऐसे, ठीक, शो इट लाइक दिस, इट विल बी ला 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 ला, ऐसे और ऐसे, दिस इज रेड, दिस इज वॉयलेट, ठीक, देन वी हैव लाइक दिस एंड फाइनली ऐसे, ठीक है, रेड, वॉयलेट, वाइट, वाइट। आई एम नॉट सेइंग ड्रॉ कलर्स, फुल चित्रकारी नहीं करनी है भाई, डोंट शो ऑफ योर डायग्राम मेकिंग स्किल्स, डोंट शो योर आर्टिस्टिक स्किल्स, सिंपल इज गुड, क्लीन इज गुड, ठीक, फाइन, हाँ, वन सिंपल वन इन्वर्टेड, वेरी गुड, चलो, और ऐसे हम बनाएंगे डायग्राम, बहुत बढ़िया। So by placing two identical prisms inverted with respect to the other, we get a narrow beam of white light incident on one prism, emerges out of second prism as white light, easy एकदम, ठीक, चलो आगे आओ। Formation of rainbow, अब सुनो जरा, prisms can split white light and form spectrum, है ना, give you different colors, give you the 7 colors, right? In rainbow what do we have? 7 रंग का इंद्रधनुष बोलते हैं हम लोग ना भाई, इंद्रधनुष कैसा होता है? 7 रंग वाला, फाइन। So rainbow लगेगा तो prism, if you want to form these 7 colors, you want a prism। अब यार आसमान में prism कहां से आएगा? Yes, चलिए बताओ, marks for this question, this question will be 2। Yes, the reason kept inverted, Sandra, same thing, recombination is happening because whatever bending happened here, opposite bending happened there, that's why। Water droplets, they are acting like a prism, right? क्या हो रहा है? Water droplets are acting like a prism. From here, I will give you one simple thing from where question comes. क्या? What is the process? What is the sequence in which the rainbow is formed? कैसे form होता है? Sir, rain droplets are acting like a prism. First thing, white light enters the raindrop, ठीक, अब रेन ड्रॉप के अंदर क्या हो रहा है? ऑन फर्स्ट इंटरफेस व्हाट आर वी गेटिंग? सर वी आर गेटिंग डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन। भाई लाइट रे बेंड भी हो रही है और स्प्लिट भी हो रही है, राइट? वी आर गेटिंग डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, फाइन। रिफ्रैक्शन बेसिकली, डिस्पर्जन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से तो होता है, अलग अलग कलर का अलग अलग बेंडिंग होता है, दैट्स व्हाई, ठीक। सो ऑन फर्स्ट सरफेस वी आर गेटिंग डिस्पर्जन। Next surface, this is the most important point I tell each and everyone every time. On the second surface, on the back side of the raindrop, all these light rays, they are reflecting back and we call it internal reflection. We call it total internal reflection, right? Good. People, हाँ, सुनो ध्यान से, आई नो पार्शियल इंटरनल, जिन लोग को पता है उनको पता है, वेरी गुड। पीपल हु डोंट नो, आई हैव सीन 50 to 60% ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल हैव दिस कंफ्यूजन कि सर ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अंदर आता है क्रिटिकल एंगल। नहीं, गलत, दिस इज नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन रियलिटी दिस इज पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब सर लाइट रेज will actually come out, but thoda sa light ray will get reflected back. Light rays are not reflecting completely. Light rays actually go out, but few, small amount, partially they reflect back. So it is actually a partial internal reflection, right? ये pure internal reflection नहीं है. Clear? Partial. हाँ, very good. बहुत important है भाई. Total मत लिख देना यार. I have seen many people writing total in exams. ना, नहीं लिखना है. So this here happens internal reflection, which is partial internal reflection. Finally, the light ray comes out and refraction happens. तो भाई ध्यान से देखो यार, क्या हुआ? We finally got what? Splitting of light. ठीक? Sunlight was coming from back. उसके अंदर first dispersion happened, then partial reflection happened, है ना? Partial internal reflection happened, then refraction happened and it came back. सूरज चाहिए पीछे, कहां चाहिए? अरे पीछे देखो. You want the sun behind your back.
and then only you can see a rainbow. Not every time. There needs to be a particular angle. So that's why violet color has a 40-degree angle from the incident ray and red has a 42-degree angle. Kyun or kaise? I have explained this in human eye chapter. When I was explaining it, I brought a proper cone and explained you कि भाई क्यों ये circular होता है, why these angles come. Today I'm not going to go into this. Take fine. So that's why. What do we get? You get from different raindrops, red color, violet color, और तुमको मिल जाता है rainbow. ये समझाने के लिए. But question कहाँ से आएगा? Question कहाँ से आएगा? Question आएगा dispersion, internal reflection और refraction से. Question आएगा make a diagram of rainbow formation from a raindrop. That is the question which will come if it comes. ठीक? Fine. Forcing to come, what should I do? Nothing is happening. Your parents can talk to your teachers. If nothing is happening, then what do we do? Only half the rainbow. Because half is inside the earth. If you see it from an airplane, you will see full. Thick. Chalo. Questions. Why do we see rainbows in the sky only after rainfall? Because you want something to cause the dispersion. Who will cause the dispersion? It's a raindrop. So raindrops are formed by dispersion of sunlight by tiny water droplets. See, all of you know the answer. I'm telling you how to write the answer. Because today is not just about sharing our knowledge, learning. Arey bhaiya, it's also about how to write a good answer. That is why we are here today. Present in the atmosphere. The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Simple. Correct? Hai na? Yes. Bahut badhiya. This is there in BYJU'S app. You're right, Vipin. Avinash sir did this. Question number 2. What is the condition to observe the rainbow in the sky? Good question. Why I'm saying good question? It's not a difficult question. It can be asked in a 2-marker or a 1-marker question. वैसे तो 1-marker नहीं, it will be a 2-marker question if it comes. Yes. First, condition to observe rainbow. क्या है? Person between sun and water. Yes. What is critical angle? Vasant, critical angle वैसे तो बच्चा उसका concept है ICC का. I have actually a video on total internal reflection. If you want to see, you can see it, है ना? It's there on the channel. Just write total internal reflection, BYJU'S class 10, you will get it. Angle when a light goes from denser to rarer medium, angle for which angle of refraction is 90 degrees. That. Very good. देखो भाई, first thing, you want sun behind your back. Second, there should be droplets. For this, you want something which will give you droplet. मतलब rain चाहिए, fog चाहिए, कुछ भी चाहिए जिससे कि water droplet आ जाए. Fine, ठीक. And you can also see it in a fountain. कभी देखना ध्यान से. Sun needs to be behind the viewer, and rain, fog, or some other source of water droplets must be in front of the viewer. So these are the 2 conditions. ठीक. अब चलो atmospheric refraction की बात कर लेते हैं. हाँ. Yes, Vijay, that's very important. Atmospheric refraction, भाई देखो, I will not spend a lot of time on this because it's a very easy topic here. What is atmospheric refraction? Bhai, normally we say vacuum and air have the same refractive index, but I told you it is for short duration. Up to 200 kilometers above you. Kilometers. 200 kilometers actual है वैसे तो. लेकिन 12-13 kilometers we have dense air, right? So up to 200 kilometers we have atmosphere. Troposphere, stratosphere, ionosphere, mesosphere, है ना, ये सब तो है ही, right? So this air with such large distances, now refractive index matters. Now you cannot say, okay, sir, I will take air also and vacuum also same. Now air is acting as a denser medium compared to vacuum. In space there is vacuum, pure vacuum. But here, because of this such large distances, air is acting like a denser medium, right? So what is happening? When light from this far objects is coming, it is passing through all these different layers of air or atmosphere, and the refractive index is not constant throughout this. It is gradually changing. As you come closer and closer to Earth's surface, the refractive index keeps on increasing.
क्यों? एयर डेंस हो जाता है, राइट, ठंडा हो जाता है, दैट्स व्हाई, करेक्ट है ना? वेरी गुड। चाय पियेंगे? अरे सुनो यार तुम। सो ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, यस सर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अ स्टार इज वेरी फार, राइट? Light from that star is reaching you after passing all these layers. तो क्या होता है सर? Every time it reaches a layer ना, it is going from rarer medium to denser medium. So it is bending towards normal, bending towards normal, and finally when it reaches you, what do you get? The illusion which is happening in all the virtual images. क्या होता है? You trace the light back. Your mind and your eyes, they believe that light is coming from here. उनको लगता है कि भैया लाइट यहाँ है, यानी कि स्टार यहाँ है. So actual position of the star is here, but because of bending of light through all of these atmospheric layers, you are getting a feeling that your star is here. This is your actual position. This is your apparent position. It is happening because air is denser compared to vacuum, right? है ना? It's okay, don't worry. Correct? चला, अबे तुम पिक्चरों की बातें कर रहे हो. क्लियर हो रही है बात एवरीबॉडी? देखो ह्यूमन आई को आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन, ह्यूमन आई को बहुत लाइट लेते हैं बच्चे, लेकिन ह्यूमन आई चैप्टर ऐसा है ना, इन सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर इफ यू सी 5-6 मार्क्स फ्रॉम ह्यूमन आई. इस बार अगर ये चैप्टर छोड़ दिया, भूल जाओ, टॉपर बनने का सपना सपना रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा. फिर आएंगे हम बोलेंगे काश पढ़ लिए होते, उस दिन पिक्चर की बात ना करी होती. पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, एक दिन की बात. चलो आओ. Apparent position, fine, it is happening because of atmosphere. This is called as atmospheric refraction because of varying physical conditions of the atmospheres. ठीक है? अब your atmosphere is not fixed by, this is all the layers of air. Do you think they are sitting quietly like this? No, there's a lot of wind happening, there is so much turbulence in your atmosphere. So this light ray keeps on ऐसे ऐसे. Have you seen this? कभी तुम्हारे bonfire, if you have seen bonfire happening, और घर में हवन हो रहा हो, right? If you have seen some bonfire and there's a person sitting behind the bonfire. Let's say घर में हवन हो रहा हो, हवन की जो आग निकलती है उसके पीछे पंडित जी बैठे होंगे. But have you noticed the person behind that bonfire or the havan, they appear to go like this, ऐसे, right? Why? Because of turbulence in between. That's why. Similar thing is happening over here. यहाँ क्या हो रहा है? Apparent position of star is not fixed. It keeps ऐसे. Why? Because of all the turbulence in the atmosphere, right? This is twinkling. Twinkling मतलब ये नहीं होता है. We always believe twinkling means जल बुझ. ना भैया, that is not twinkling. Twinkling means this. But you are trying to focus here. But your star has gone here, and that's why you feel like it is going like this. Getting the feeling? Yes. Drizzling, getting the feeling? So apparent position keeps on shifting because of turbulence in the atmosphere. That is called atmospheric refraction, and that is why your stars twinkle. इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं. ठीक? Sir, Venus, Jupiter, they don't टिमटिमाएंगे, they don't twinkle. Why? क्यों भाई? क्योंकि your star is very far from you, है ना? And when a thing is very far, it is very small, right? Correct? Star is acting like one point source of light. एक छोटा सा light source है, correct? But think about it. If you have an extended source, मतलब imagine करो, you have a LED bulb over here. Take very close to you, LED bulb is there, and whatever happens, it will be there. Correct? है ना? अब यही LED bulb बहुत दूर ले जाओ, then you will feel like it is doing this. Why? Because when it is very far, now it is acting as a point source. But when a thing is close to you, it acts as an extended source. Planets are closer to you, right? Stars are seen as point sources, while planets as a collection of point sources. So planet में क्या होता है? Imagine करो, there are these points. अब इसके अंदर at one point 1, 2, 3 गायब हो गए, but still this much is visible. उसके बाद
सर 1 2 3 ये थोड़े से गायब हो गए, बट स्टिल यू कैन सी इट. सो दिस इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. लेकिन अगर वी हैव ओनली वन पॉइंट, ये वन पॉइंट अगर इधर उधर जा रहा है, विच मीन्स अब तो प्रॉब्लम है भाई, राइट? सो दैट्स व्हाई स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डोंट. व्हाई? बिकॉज so why night is dark? Mars because very far. No, light is very dim from them. Yes. Very well. Greetings from Germany. Very good. It is not because the planets much bigger than the stars. No, planets are not bigger than the stars, but planets are much closer to you than the star. Your nearest star is sun, which is quite far, है ना? उसके बाद तो बहुत दूर है यार ये अल्फा सेंटोरी वगैरह तो, है ना? राइट? चलो बढ़िया. So planets क्यों ट्विंकल नहीं करते? क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन, why do stars twinkle? लिख दोगे? Everybody, it's a very common question, very cliched question, but we should know how to write the answer of this question. I have seen people who have the knowledge, but they don't know how to write the answer. लिख दोगे? Yes or no? जल्दी दिल पे हाथ रख के बोलो, सर I can write and I will get full marks. पक्का? Yes? मंदिर क्या वो सुनिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट प्लैनेट्स पास है मेरे यार, सो दे विल नॉट ट्विंकल. यू कैन नो. गुड. अरे सुनो ना, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? Stars emit their own light and they twinkle due to the atmospheric refraction of light because they are very far from the earth. Hence, they are considered as point sources of light. When light coming from the stars enter, उसके बाद समझाना है कुछ नहीं, atmospheric refraction. कैसे light आया, कैसे bend हुआ, कैसे apparent position बना, all this, right? So, different levels because of variation in the air density. अरे यार ठंडा हो गया तो है ना, इसको बंद कर देते हैं. ओह 20 डिग्री है क्या? 24. Yes. When the star light refracted by the atmosphere, it comes towards us. It appears brighter than when it comes less towards us. So basically, उसकी light deviate हो रही है, and that is why. ठीक, fine. हाँ, yes. अरे वाह, मयंक, welcome यार. Question number B. Explain why planets do not twinkle. Explain why planets do not twinkle. It's a second level question. Stars twinkle, sir. We explained it because they are point sources and because of atmospheric refraction, their light is getting disturbed, and that's why we see their apparent position changing frequently, and that's what we call as twinkling. But planets, why don't they twinkle? Because extended sources. Good. This word is important. Extended sources, right? They do not twinkle because they appear larger in sky than the stars as they are relatively closer to Earth. Now, planets can be considered as a collection of a large number of point-size sources of light. The different parts of these planets produce either brighter or dimmer effect in such a way that average of brighter and dimmer effect is zero. But the average light coming to you from the planet does not change. They are extended source of light. The average light coming from them to you does not change, and that is why you don't see any effect in their position, right? Hence, the twinkling of planets are nullified and they do not twinkle. ठीक? अच्छा, atmospheric refraction is another reason for advanced sunrise and delayed sunset. Same reason. Whatever you did for stars, the same reason. Not the turbulence. Vacuum to air. From this sun, which is actually below horizon. ठीक है, this is your horizon. अभी सूरज उगा नहीं है भाई. Sun is below horizon. So horizon क्या होता है? फलक. वो जो एंड में दिखता है ना, उसको बोलते हैं horizon. अभी सूरज उगा नहीं है, नीचे है. But क्या हो रहा है? The light from the sun, because of vacuum to air refraction, is bending towards normal again and again, right? In this case, ध्यान से देखो, light ray is bending towards normal, towards normal, towards normal, and finally when you trace it back, you will feel, अरे अच्छा sun यहाँ है क्या? Sun is below horizon, but you are seeing its image above the horizon. तुमको सूरज जल्दी दिख गया, कितना? 2 मिनट, right? So you are actually seeing 2 minutes early sunrise, and same thing is happening in the case of sunset. Sun असल में set हो गया है. In reality, sun is set, but again, because of light ray bending towards normal, you will feel it is there.
2 मिनट लेट, सो एक्स्ट्रा तुमको 4 मिनट का सन मिलता है. All of you are getting 4 minutes of extra sun because of atmospheric refraction. Yes, है ना? Correct? सो जाए? अरे नहीं यार, अभी कैसे? इसके बाद electricity. How? Again, because of atmospheric refraction. Light ray is bending towards normal now because atmosphere air is denser than vacuum, right? Light ray from this sun is coming from rarer to denser medium, vacuum to air, है ना? It is bending towards normal. Every time it is bending towards normal because as you go closer to Earth's surface, more and more density, or you can say more and more refractive index of air is there because it is denser. ठीक, fine. That's why you will see it over here. चलो बढ़िया. So what is atmospheric refraction? क्या होता है भाई, लिख दोगे? What is atmospheric refraction? The refraction of light by the Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction. It is caused by the bending of light rays when they pass through layers of Earth's atmosphere which are of different optical densities. उसको ही बोलते हैं optical है ना, atmospheric refraction. What causes early sunrise, delayed sunset? Very simple question. Because of atmospheric refraction. समझाना है बस. Due to atmospheric refraction of sunlight during sunrise, the sun is just below the horizon, and thus light rays travel larger distance than usual in the atmosphere, and due to this the apparent position of the sun appears slightly above than its actual position. ठीक है? Similarly, at sunset the sun is again just below horizon. Same thing हो रहा है. Light is bending and the apparent position is not the actual position, जो कि ऊपर है उससे. Fine. To sum up, due to refraction, we see sunrise about 2 minutes before actual sunrise, and sunset we see it around 2 minutes more. ठीक है ना? Should be bright, Sharak, because all the stars are very very far from you. Your nearest star is sun, which is very bright for you. है ना? बाकी all the stars are very far from you, and that's why they are very small. The light coming from them is very less. You are actually seeing the past. Yes, Jasraj, welcome here. नहीं, it is not deleted, honey. Deleted क्या है? Color of sky during sunrise and sunset is deleted, not this. It is there in your syllabus. It can come in your exam, भाई. Last topic of human eye. फटाफट करेंगे भाई. ठीक. Last topic of human eye. Scattering of light. The absorption and re-emission of light rays by the particles of a medium. क्या होता है scattering? Scattering मतलब ऐसा नहीं होता है कि light is coming and you are doing ऐसे ऐसे scattering. ना, scattering मतलब होता है light rays are coming, you catch them and then you scatter. This is something you can say scattering. The absorption and re-emission of light by the particles of a medium is what we call as scattering of light. ठीक? कहाँ देखते हो? सर्दियाँ चल रही हैं, right? Nowadays it's the winters. So when you have this clear sunlight coming in your room from that small hole, you can see the sunlight and you can see those small particles in it, है ना? तुमको वो छोटे छोटे particles दिखते हैं, धूल के, बोलते हैं धूल के कण. That is what? That is scattering of light. But this scattering has a name. This scattering has a name, and this is something I have taught you many times. तुम know, have you seen that short I have done? Color of sky, scattering of light पे I have done a short on the channel. पानी में milk डाला था. I was explaining you why sky looks red, orange वाला चीज. Remember? हाँ, it has a name, Tyndall effect. याद रखना है, टिंडो से कर लेना भाई. टिंडा कितने लोगों को पसंद है? I don't know. When I was small, I used to remember it. अच्छा है, ये वाला scattering होता है Tyndall effect. Okay, ठीक है. Tyndall effect. But whenever you explain Tyndall effect, one word becomes very important. What is that? Colloidal particles. ठीक? Whenever you are mentioning Tyndall effect, please never forget this word, colloidal particles, because in Tyndall effect the scattering happens because of colloidal particles. ठीक? Yes. चलो, बहुत बढ़िया. Scattering occurs due to dust and smoke particles in the air. किसी भी सॉल्यूशन में अगर colloidal particles होंगे तो उसके अंदर लाइट पास करते हुए स्कैटर करेगी, उसको बोलते हैं Tyndall effect, Tyndall scattering. ठीक है ना? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. ओहो जसराज, बच्चा बहुत लेट हो गया है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए. लाइट चैप्टर खत्म हो गया है और ये चैप्टर ऐसा है जो क्लास 6 के बच्चे बता सकते हैं, तो प्लीज. यस, हाँ, वेरी गुड. अच्छा, मयंक बुरा हो गया तुम्हारे साथ? ओके, कोई बात नहीं. यस, वेरी फाइन पार्टिकल्स की बात करते हैं. एवरीबॉडी, see, I know, there could be a lot of things, there could be a lot of problems when you buy a course. I understand,
but there are channels to take care of that. You can tell us in the comment section. I'll try to forward it to our team. अभी लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, right? I'm trying to teach something over here. Listen, if you really want to learn, you will learn. बाकी सब distraction है अभी मेरे लिए कोई काम कोई मतलब नहीं है. सुनो, very fine particles. अगर size of particles is small, it will scatter shorter wavelength, right? अगर particle का size बड़ा है, it can scatter longer wavelength, right? Clouds white क्यों दिखते हैं? Because clouds are made up of bigger water droplets, ना? वो बड़े होते हैं. They scatter all the colors. They appear white, correct? So larger particles, they scatter longer wavelength also. Shorter particles, they scatter shorter wavelength. ठीक है. The color of scattered light depends on the size of scattering particles. And very large particles, scattered light may appear white, like in the case of those white clouds. ठीक है ना? Yes, very good. हाँ, because they are near. अच्छा, okay, there was a question, huh? Correct. हाँ. Why afternoon sun is red? Sun is not red, बच्चा. Sun looks yellow because remaining colors have gone away. Blue निकल गया, that's why. लेकिन होता white है sun. ठीक? Atmosphere has air molecules. Now, air molecules have a very small size. है ना? They have very fine particles of very small size. They scatter shorter wavelength. अच्छा एक बात बताओ. Air molecules are scattering the light. ठीक? अभी पूछूंगा मैं. Shorter wavelength. Vibgyor में, which has shorter wavelength, violet or red? Violet. Means violet will scatter more. ठीक? If you go downwards, scattering will decrease. So what is the poem I told you? I told you red bends the least and violet bends the most. इसमें एक और चीज ऐड कर दो. Violet bends the most, scatters the most. Red bends the least, scatters the least. बस. If you know this much, you can answer all questions of scattering. बहुत है. देखो, I'll teach you. Don't worry. क्या दिक्कत है? विबग्योर में सर वॉयलेट शॉर्टर वेवलेंथ विल स्कैटर मोर. यस. क्यों? ब्लू कलर ऑफ स्काई में क्या हो रहा है ना, ऑल दीज एयर मॉलिक्यूल्स दे आर स्कैटरिंग वॉयलेट कलर, ब्लू कलर मोर कंपेयर टू रेड कलर. ठीक है ना? अब जो स्कैटर कर गया, दैट इज समथिंग यू विल सी. पीपल, इफ यू हैव वॉच्ड द स्कैटरिंग वाला शॉट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. जो स्कैटर कर गया ना, whatever scatters, that will become the color of the sky. Whatever remains will become the color of the sun. ठीक? And violet and blue are scattering more because they have shorter wavelength. Correct? So that's why sky looks blue. But sir, why not violet? You can ask me a question. Sir, if violet has the shortest wavelength, why is sky not violet? Why is sky blue? क्यों भाई? नहीं बच्चा, because planets ना, they are extended source of light. Imagine they are like multiple LEDs together. If few of them are not working, if few of them don't work, still average amount of light coming from a planet is still the same. But stars are very far and very small, so they are like one LED. If that LED goes like this or goes like this, it becomes twinkling. Yes. Dance for a shot. Our eyes are more sensitive to blue color. That is one reason. Sunlight has more of blue color. हर color equally नहीं होता है, right? When you go to higher classes, when you go to MSc Physics, then you will realize कि भाई they teach the amount of color in a spectrum. Blue color is actually more in the sunlight spectrum. Two reasons now. One, your eyes are more sensitive. Blue color is more in the sunlight spectrum. Violet कम होता है, and that is why effect of violet is less. Secondly, तुम्हारी आंखों को blue color ज़्यादा sensitive है, so that's why you see sky as blue. ठीक, fine, clear. That's why. Important thing, जो scatter हो गया, that is color of sky. जो बच गया, that is color of sun. ठीक, हाँ, correct. Yes. Mayank, I agree with you, bacha, but right now people are getting disturbed because of this, right? So that's why I'm putting you on timeout, and I'm telling you this to you. Confirm. Hanji. I have control with me, yaar.
Now listen to me. I'm sorry I don't like doing this, but I don't want people to be disturbed right now because we are in very seriously studying right. ठीक, अब सुनो. Frequently asked questions. Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? It's a very, very, very common question. Space में sky कैसी दिखेगी? Black. क्यों? That is the question. Yes. No air, no atmosphere. Ha, correct. Yes, no atmosphere. That's true. See, scattering was happening because of atmosphere. In space, there is no atmosphere, means no scattering. So, sunlight will go in front of you, but you will not see it. तुमको नहीं दिखेगा. अंधेरे कमरे में अपने सामने से टॉर्च लगाना नहीं दिखेगा. Sunlight is going. When do you see the light? When there is something to scatter the light. लेकिन वहां पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है. That's why you will not see anything. The sky appears dark instead of blue to an astronaut because there is no atmosphere in the outer space that can scatter the light. As sunlight is not scattered, no scattered light reaches the eyes of the astronaut and the sky appears black to them. With this, human eye is done. इंसान की आंखें, चैप्टर खत्म मेरे दोस्त. Right? Any doubts? Come on, quickly. We won't see rays. Yes, Mahi. You will see the sun, but you will not see the rays. You will not see the sky. You will see everything black and just the sun. Yes. शिवम यार देखो फोन तो करते हैं, I understand. लेकिन देखो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो. If you think that app has good things, which it has, lot of free stuff is there on the app, which is very very helpful, and that is what I'm telling you. तुम अपना काम करो ना भाई. तुम्हें क्या मतलब है? तुमको पढ़ने से मतलब है. तुम पढ़ो यार. They are doing their job. You do your job. That's it. है ना? Crystal like clear and clear like crystal. You have a question? Please ask the question यार. Because no particles. नींद आ रही है. I know बच्चा अक्षय. देखो नींद तो आ रही है लेकिन यार आज का दिन ऐसा है ना, जितना खींच सकते हो खींच दो. Relax. देखो मैं तो खत्म करके जाऊंगा. I will make sure there is one video in which full physics of grade 10th is there. ताकि कल दिन तुमको किसी और को दिक्कत ना हो. What is TIR? Divyanshi bacha, TIR pe I have done a special concept bite session. It's a 15-minute video. It will explain you everything. That's why. Today I don't want to go na. बाकी बच्चे confused होंगे. Yes. Prism in short. उषा बच्चा prism कुछ नहीं होता. It's a 3D triangular glass. ठीक है ना? तो अभी मैंने समझाया. By the way, prism is the cause for dispersion. Yes है ना? बिल्कुल खत्म करके जाएंगे ना. बहुत अच्छे. अच्छा सुनो. एक चीज बता रहा हूं मैं. Again. Grade 10 students, ध्यान से सुन लो जरा. This is a reminder. In the starting I told, I'm just telling this to you again कि भाई there is a link in the description for a career counseling workshop. 10th class के बाद बोर्ड होते ही एक सवाल जो सब पूछेंगे तुमसे, बेटा जेई लोगे, नीट लोगे, कौन सा एग्जाम, क्या करोगे, तैयारी कैसे करोगे, क्या होता है इस एग्जाम में, रिजल्ट्स क्या होते हैं, डॉक्टर बनने का क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ रूमर्स. तुम्हारे दोस्त आएंगे कुछ भी बोलेंगे. So you need guidance. कुछ नहीं है. You should be prepared for whatever people are going to ask you and what you want to think. Decision will be yours. Just learn everything. So that's why there is a small counseling session. Ashwin San is taking this, by the way. It is happening on December 31st, 12 p.m. Sunday है. 1 घंटे का है. Go with your parents. अकेले मत जाना. कोई फायदा नहीं है. अकेले फायदा नहीं ना. तुमको मजा नहीं आएगा. The journey after 10th. It's better if your parents are with you. क्योंकि अच्छा रहता है. पेरेंट को समझ नहीं आता बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है. सिलेबस they won't realize ना your syllabus has become from this much to this much अचानक से, right? So that's why all of this they should be aware. So that's why go with your parents. It'll be very informative for everybody. रजिस्टर कर दो, फ्री है, फायदा होगा. ये मत बोलना सर 10th क्लास है, टाइम नहीं है, पढ़ना है, 1 घंटे की बात है, फ्यूचर के लिए ही है, चले जाओ. ठीक है ना? यस रचित, जब तक तुम लोग हो यार कैसे डूबेगा, कैसी बात कर रहे हो. हाँ, क्रिटिकल एंगल बच्चा, आई जस्ट टोल्ड यू ना, डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degrees, that is critical angle. By the way, go and watch the concept bite session. No, I'm telling you. ठीक है, fine. Next will be electricity, but before that I see the time is 10:40. Let's meet at 11 p.m. I'm giving you a 20-minute break. I understand कि भाई you have been sitting for a long time.
I have been standing for the long time. It's been almost 5 hours. ठीक है, ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो गए हैं, लगभग 11 बजे मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज अ चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट में से अलग 13 मार्क्स आते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स, दैट्स व्हाई। ठीक है ना? शरण आ गया, वेरी गुड। और 4 घंटे, 11, 12, 1, 2, 3, लेट्स सी। अरे लेट्स सी यार, सी मैग्नेटिक इफेक्ट विल टेक 1 आवर, इलेक्ट्रिसिटी विल टेक 2 आवर्स। अभी 3 घंटे और लगेंगे यार, मुझे लग रहा है 2 बज जाएगा। आई थिंक इट विल बी 2, लेट्स सी। ठीक है, आप अगर कुछ खाया नहीं है, यू ईट समथिंग, अदरवाइज डू अ प्रॉपर स्ट्रेचिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है, बिकॉज आई नो दिस इज अ टायरिंग क्लास बट वी विल फिनिश एवरीथिंग प्रॉपरली। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ऐसा लगा भगाया, आई हैव रश्ड इन एनीथिंग? नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू रश इन एनीथिंग बिकॉज माई ओनली थिंग इज पीपल who have done it, you revise it properly. Otherwise people who are doing it for the first time, you do it today. आज के बाद मौका नहीं मिलेगा, right? ठीक है। दागा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? I have told you, it is the measure of how optically denser a medium is. Its value is C upon V. ठीक है ना? सनराइज once again, शुक्ला सर listen to me. सनराइज में क्या होता है? ये है आपका होराइजन। होराइजन क्या होता है? सूरज अभी निकला नहीं है, इन रियलिटी सूरज नीचे है, लेकिन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ना, लाइट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल एंड व्हेन इट रीचेस यू, तुमको लगता है कि यहां से आ रही है, तो तुमको सन अभी निकला नहीं है, सन हैज नॉट एक्चुअली राइजन, है ना, सन हैज नॉट एक्चुअली रिजन, बट यू आर सीइंग इट ऑलरेडी, इट हैज रिजन। ठीक है, तुमको लग रहा है निकल गया, 2 मिनट पहले निकल गया, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस सनराइज एंड सेम थिंग हैपेंस इन सनसेट, डिलेड सनसेट। ठीक, बिल्कुल फोड़ के आएंगे ना, बहुत अच्छे। देखो ये कुछ महीने की बात है यार, 1-2 महीने की बात है, जो इसमें तप गया, जो इन 1-2 महीने में कर गया ना, भूल गया सब कुछ, बस वो पार हो गया। तुम एग्जाम के बाद मेरे को आके बोलोगे सर वो 2 महीने बड़े काम आए। यस, हाँ करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, डेट शीट आ गई है, तारीख सेट है 2 मार्च। ये वो दिन है जिस दिन साइंस की किस्मत लिखी जाएगी, राइट? 2 March is the day where the fate of science exam will be decided, and you, my friend, are going to perform. And all between that and today is this session and me, right? So for science, I'm telling you, today is the second most important day. Yesterday we did full chapter bio, right? Today we are doing full physics for grade 10th, and in detail, by the way. Right? So all of this is for you. It's free. Enjoy. पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना? चलो चलो चलो, 11 PM will meet. मैं बोलता रह जाऊंगा, फटाफट जाओ कुछ खा के आओ। मैं भी लाया यार, I have also brought my apple and orange. मैं भी एक सेब खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं 11 बजे, ठीक है ना? 11. And everybody, if you have joined late, press the like button. Subscribe to the channel and press the bell icon, by the way, important है, ठीक है? See you at 11, ठीक है? चलो, bye bye. I'm coming back, by the way. I'm saying go and eat something and we'll meet at 11.
वी आर रेडी. नाइस. फेल हो जाना चाहिए था. अच्छा, अब यार सीक्वेंस बना है तो कर लेते हैं. देखो, लाइट के बाद अगर ह्यूमन आई नहीं किया अधूरा रह जाएगा. ये वैसा है, इफ यू गो टू वैष्णो देवी एंड यू डोंट गो टू भैरव बाबा तो बोलते हैं कि अधूरा रह जाती है. राइट. सिमिलरली लाइट के बाद ह्यूमन आई करना जरूरी है भाई. महक, यार मेरा एप्पल बड़ा चूई चूई था इसलिए लेट हो गया मैं. हाँ जी. क्या बोलते हो, चालू करें? बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. यस. सीक्वेंस में याद नहीं रहता. फुल्ली कन्विंस ना. चलो बहुत बढ़िया. चलो अब सुनो जरा ध्यान से. हाँ, लिसन टू मी. के इसको हटाते हैं पहले तो. Light and human eye, they make a good pair. Similarly, electricity and magnetic effect, they make a good pair. इन दोनों की एक जोड़ी है, इन दोनों की एक जोड़ी है. Both of them together, they constitute around 12 marks. Electricity plus magnetic effect, they constitute around 13 marks. ठीक? Okay. Electricity is one chapter from which I have seen lot of students are scared. Why? Because of so many things which are coming. इससे ना बहुत कुछ ऐसा लगता है, सर ये भी है वो भी है फलाना है ना. इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, heating effect. Oh ho. And then we have applications of current in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R. ऐसा लगता है कि यार सर ये तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना. कितने लोग को लगता है सर इलेक्ट्रिसिटी टफ है? यस और नो? अच्छा, ओ यस. दूसरी जोड़ी में है आई विल ट्राई 2 hours, सॉरी 3 hours. न्यूमेरिकल स्केयर यू? नो, आई एम ओके. हाँ, अरे यार see when you talk for such a long time, no, your throat becomes slight croakish, but don't worry yaar, we'll manage. मॉडरेट. तनु, बच्चा फिजिक्स हो रही है अभी, 2 चैप्टर हो गए, 2 बचे हैं बस. चलो आओ. सो लेट मी टेल यू इन दिस ना, इफ यू थिंक इतनी सारी चीजें हैं नहीं इसमें. अगेन ब्लूप्रिंट, इलेक्ट्रिसिटी. थिंक अबाउट, इसके अंदर पता क्या है? पहले तो आएगा करंट. इन करंट यू विल हैव चार्जेस, फॉर्मूला ऑफ करंट यानी कि Q/T वाला फॉर्मूला आएगा. राइट? ठीक. ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट करंट. यस. देन विल हैव पोटेंशियल. What is potential? Work done in carrying a unit charge from infinity to a point called a potential. All of this. ठीक है. Potential will be there. ठीक है. Small topic. See, in light, one topic was big. It was covering a lot of things like concave mirror, convex mirror, है ना. These were having things to do. But in electricity, you have a lot of topics, but small topics. Current is small, potential is small. Then we have resistance. In resistance, you will have resistivity. Yes, है ना. Correct. Yes. Avni, you're right. Resistivity will be there. Factors on which resistance depends will be there. Combination of resistance will be there. So this is slightly big topic. Why? Because a lot of numericals are possible in electricity. Resistance के बाद क्या आएगा? Resistance के बाद आएगी कहानी. फिर क्या आएगा भाई resistance के बाद? हाँ, very good. अरे ओम्स लॉ करंट में आता है. ओम्स लॉ करंट में बोल रहा हूं मैं. It's a mixture of current and potential. Small topic. In electricity, the thing I want to mention is topics are small. So don't be scared of them. है ना? It's not like one topic is carrying so much. Small topic. But where is the problem? In the end, in numericals, all these small topics now they try to join hands. And especially in this combination. Combination के अंदर सारी चीजें मिलने लग जाएंगी धीरे-धीरे. And then comes heating effect.
heating effect in which you will have power वाले formulas, energy वाला formulas, numerical बिल्कुल yes, हाँ Joule's law of heating, right? Then we have applications. So in a way ये चैप्टर केवल करंट का है, पोटेंशियल का है, रेजिस्टेंस का है, हीटिंग इफेक्ट का है और उसके बाद एप्लीकेशन है, बस और कुछ नहीं है. इनके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम बात करेंगे. ठीक, चालू करें, क्या बोलते हो? आई एम होपिंग एवरीबडी लाइक वाइक प्रेस कर दिया होगा. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करेंगे, है ना. थोड़ा सा लंबी सांस लो, सीधे बैठो, तैयार एकदम, चालू करें. लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिसिटी, यस, we'll try for a doubt session, don't worry. Bilkul, yes we should. Come on, let's start. Magnetic effect after this. See, magnetic effect is small. Without electricity, if you do magnetic effect, waste. It's like without light, if you do human eye, waste. Without electricity, if you do magnetic effect, it's waste. ठीक है, important. सुनो, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं. What is electric current? सर कुछ नहीं है. Amount of charge that flows a particular area in unit time. कितना चार्ज फ्लो किया वो जरूरी नहीं है, वो मैटर नहीं करता. कितने टाइम में भी फ्लो किया वो भी मैटर करता है, राइट? हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग इन हाउ मच टाइम. सेव अटक गया यार. 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. ओके सर, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 0.01 सेकेंड. ओहो सर, ज्यादा करंट है इसमें. ठीक है, फाइन. सो इट्स अबाउट rate of flow of charge. I is equal to Q by T. Q क्या है? It is the charge. T क्या है? It is the time. ठीक है. Now charge, the smallest unit of possible charge could be, एक चार्ज जो है वो मैक्सिमम कितना, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है? Yes, only speed matters. हाँ, you're right, correct. जल्दी बताओ. Quantization of charge. Minimum charge possible is the charge of 1 electron. ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 electron has 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Why? Because sir, unit of charge is coulombs, right? ठीक, that is the charge on 1 electron. Okay sir, ठीक है. अब let's say आप मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन मांगो. If you are asking me 2 electrons, how much charge am I going to get? Sir, you will give me 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, है ना? कितना हो गया? 3.2 into 10 to the power minus 19 coulombs. So, sir, you can give me 1 electron, 2 electron, 3 electron, and equivalent amount of charge. You cannot transfer 1.5 electron. जी भैया 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो जरा, 2.25 दे दो जरा, 3.5 मिल जाएगा, 4.5, 5 नहीं मिलेगा, 5.25 मिल जाएगा. There is nothing called as 0.5, 0.75, 0.3. No, it's either 1, 2, 3, right? So it's about integers, correct? So this is what we call as quantization of charge. So 1 electron has 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs, which means in 1 coulomb how many electrons are possible? You can ask me that. Sir, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? कितना लगेगा? Sir, 1 upon 1.6 into 10 to the power of minus 19 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम. कितना आएगा? ये आ जाएगा लगभग 0.625, लगभग इतना आएगा into 10 power of 19, right? This is called as number of electron. You want this much electron to form 1 coulomb of charge. So charge को you can also represent as number of electron multiplied by charge on each electron. So Q can be represented as N into E. N is what? N is the net number of electrons. What is E? It is the charge on 1 electron. Tick. T is what? Time for which electrons flow. 1 coulomb isn't possible. See, I'm saying 0.625 into 10 to the power of 19 electrons means 625 into 10 to the power of 16 electrons. मतलब 625 0 0 0 कितना बार? 16 times 0. Possible? Why not possible? Right? हाँ, चित्रा 2 बजे तक. ठीक है? Yes. Now listen.
टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये भी हो गया. तो फॉर्मूला क्लियर है, I is equal to Q by T. Rate of flow of charge. Charge can be written as N into E upon T. N क्या है? Number of electron. E क्या है? It is the charge on one electron. Amount of charge can be represented in number of electron multiplied by charge on one electron. Correct है ना? Yes. Rishan, for your problem, I have given you something in the description. I'll help you. Don't worry. ठीक, fine. यूनिट क्या होता है करंट का? एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर. ठीक, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, रिटन एज ए. ठीक, करंट कितना है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर. फाइन. सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. वेरी गुड. एक क्वेश्चन हो जाए जरा. Oh, I just did this question actually. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. I just did this question for you. Answer: value of charge of electron is this much. According to charge quantization, quantization का मतलब क्या होता है? Electron can be transferred only in integers. 1, 2, 3, 1.5 का कोई चक्कर नहीं होता इसमें. ठीक. Q equals Ne, where N is the number of electrons and E is the charge of an electron. So Q equals Ne. 1 coulomb equals ये हमने सॉल्व किया, कितना आया? 6.25 10 to the power 18. अरे यही तो आया था. So there are number of electrons constituting 1 coulomb of charges इतना. ठीक. Yes. Hello. No, Bhumit, no need of minus sign बच्चा. Minus and plus is to represent negative charge, positive charge, but it's okay. Here we don't, because magnitude of charge matters, right? ठीक है. So no need of writing minus. अच्छा, अब आगे आओ. How much current is flowing? That is one more question. So current can flow in a wire. See, this is something we have been studying since class 6th. Class 6 में पढ़ा था कि भाई सर current requires a closed path, right? Current को wire चाहिए, current ऐसे नहीं घूम सकता, correct, right? So current is flowing in a wire. Question is कितना current कौन बताएगा? Ammeter बताएगा, right? So ammeter and galvanometer, we have two devices which can detect the current, tell how much current. Now difference क्या है? कितने लोगों ने ये दोनों देखे हैं लैब में? पहले ये बताओ. How many of you have seen these two things in your physics lab? What is magnitude? Ishan, magnitude means होता है amount, कितना. That is, I'm explaining, Pranjal. Yes, me. Good. देखो, ammeter has a needle on one end, 0. It starts from 0 and goes till some value. Depends on the range of ammeter. Galvanometer has a needle in the middle. It can go right also, left also. Depends on direction of current. So ammeter, it's a device used to determine the magnitude of current flowing in a circuit. मतलब how much ammeter will tell you how much current is flowing in the circuit. It is less sensitive but more accurate. है ना? ये sensitive कम है, लेकिन यानी कि छोटे छोटे करंट नहीं बता पाएगा ये, है ना? बहुत जरा सा करंट होगा ना, it might not be able to tell you, but it will give you correct reading. अगर करंट हुआ 2 एम्पियर सही बताएगा, करंट हुआ 0.00002 एम्पियर तो बोलेगा अच्छा क्या है ये. सेंसिटिव कम है, एक्यूरेट है लेकिन. ठीक है. गैल्वेनोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट प्रेजेंट इन द सर्किट. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, स्मॉल करंट, नॉट बिग वंस, small current. It is more sensitive but less accurate. If you people have used galvanometer and ammeter, you will notice ammeter has a stable needle. ammeter करंट दिखाएगा ना, रुकेगा वहां पे. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर ऐसे करता रहता है, राइट? हाँ, यस. सो गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव, एकदम से ऐसे, बट इट विल नॉट गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट, राइट? करेक्ट. So wherever you have to tell how much current is there, ammeter is used. Correct? Current is a vector quantity. Ooh, Bhumit, it's a good question. Current actually is a tensor quantity, but I will not go deep into it. Listen. यहाँ तक clear है? Ammeter is going to measure the current. Okay, sir. Define the unit of current. Or this question, and guys, all of these questions are board level questions, previous year questions, exemplar questions, NCERT questions. Today's, I told you what I'm doing. Each topic we finish, we do questions on that, because that's how we learn here. If I just keep teaching you, तुम्हें क्या पता चलेगा तुमने समझा नहीं समझा?
क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. जल्दी बताओ. Define unit of current, or I can say define 1 ampere. Yes. Yes, Himani, you're right. दो चैप्टर बचे हैं. You're right, संगीता. Correct, Himani. 1 coulomb per second. भाई फॉर्मूले पे जाओ ना सर. I is equal to Q by T. मतलब सर 1 coulomb upon 1 second is equal to 1 ampere. Oh, sir, if 1 coulomb charge flows in 1 second, that is called as 1 ampere. So define the unit of current. SI unit, ये क्या है? Current का unit क्या है? Amperes. So the SI unit for measuring electric current is ampere, which is the flow of electric charge across a surface at the rate of 1 coulomb per second. Question आ जाए define 1 ampere. क्या बोलोगे? 1 coulomb charge flowing in 1 second is called 1 ampere. Done. बहुत easy है. बहुत अच्छे. Second, a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. Oh, this is an exam level question. मतलब वो भी है obviously, but this is a numerical. Correct. Yes, Shrishti. Good answer. Yes, चिल गए. सही है. Mentally question. Pranjal, it will take, this electricity chapter will take 2 hours. It's 11:17 na? 11, 12. We'll finish by 1. Yes. Least count of voltmeter. Smallest value that a voltmeter can measure, that's called least count. Listen, देखो भाई. Current of 1 ampere is drawn by a filament. Yes, sir. Number of electron passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. Sir, current is given. मतलब I is equal to 1 ampere. ठीक है. Time is given 16 seconds. What is asked? Number of electron. Okay, sir. I is equal to N E upon T. I is equal to Q upon T. ठीक है सर. I have to find N ना. So I into T upon E is equal to N. अब I कितना है? 1 into 16 upon 1.6 into 10 to the power of minus 19 is equal to N. Solve कर दो. कितना आया? 10 into 10 to the power of 19 मतलब 10 to the power of 20. Correct? Correct answer is option A. Now इलेक्ट्रिसिटी में ना बच्चों क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, मतलब फॉर्मूले बहुत सारे हैं. माय सजेशन वुड बी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ना फॉर्मूले का लिस्ट बनाओ और रोज उसको थोड़ी देर देखा करो. मैं बोल रहा हूँ 2 महीने की बात है. फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है. गिवन दैट I equals 1 ampere, T is given to you. This is how you represent. Write the formula, put the values, get the answer. Answer is 10 to 20. बहुत अच्छे. अब बात करते हैं पोटेंशियल की. करंट क्लियर है, उससे ऊपर नहीं आता उसमें. What is filament? Shreya, it is coming in this. Don't worry. Already made na? What is coulomb? It is the unit of charge. What is ampere? Unit of current. And current is what? Charge upon time. Yes. Okay. Very good. अब सुनो जरा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is the work done per unit charge to bring the charge from infinity to that point. मतलब इमेजिन करो यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, कुछ बढ़िया सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है. ठीक. यहाँ पर आप एक 1 कूलम चार्ज लेके आते हो. दिस इज अ 1 कूलम चार्ज एंड दिस 1 कूलम चार्ज विल गेट रिपल्शन फ्रॉम दिस. भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट है ना. पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज. नाउ डेफिनेशन क्या बोल रही है? इट इज द वर्क डन per unit charge to bring a charge from infinity very far to this point. आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना. करेक्ट है ना. अब वर्क डन करना होगा, कैसा होगा वर्क डन? पॉजिटिव होगा ना. दिस चार्ज इज गेटिंग रिपेल्ड, है ना. ये चार्ज ऐसे आ रहा है और आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन.
दिस चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट तुम्हें फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये चार्ज इधर धक्का दे रहा है, करेक्ट? आपने कुछ भी करके इसको यहां लेके आ गए, तुमने कुछ काम किया, तुमने कुछ मेहनत करी, है ना? यू डिड सम वर्क, दिस वर्क इज गेटिंग स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक? ये हुआ पोटेंशियल की बात। तुमने वर्क किया, कैसा? पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ, कितना काम करना पड़ा? वेरी गुड। वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ ना? गेटिंग माई पॉइंट? वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है ना? तुमको वर्क डन कैसा करना पड़ा? पॉजिटिव ना, है ना? ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, यस और नो? Conventionally, what I'm saying, there is a positive charge over here, big positive charge, है ना? Because of this positive charge, you have a small, let's say 1 coulomb charge, positive. This 1 coulomb charge, if you don't do anything, it will go away. Why? Because it is getting repelled from that. What you are doing, you are pushing this 1 coulomb charge and you are bringing it close to the positive charge. You have to do positive work, है ना? You are doing positive work. Yes. Positive charge में you are doing positive work. It has high potential. Now imagine this was a negative charge. तुमको लगता है कि तुमको मेहनत करनी पड़ती? Do you think you would have to work? Do you think you would have to work to bring this charge ऐसे? जल्दी बताओ. If this was a positive charge, you have to work hard to make sure that you bring it here. If this was a negative charge, do you think you will have to work like this? Yes or no? What is the charge pushing? The charge, this big charge is pushing a small 1 coulomb positive charge. No. If this was a negative charge and this was a small positive 1 coulomb charge, what would happen? This 1 coulomb charge wants to go there. है ना भाई? You will not have to work to do this. ये तो अपने आप चला जाएगा. तुमने काम ज़्यादा कहाँ किया? You have to work hard in bringing, in the case of positive charge. If this is a negative charge, you don't have to work hard. Life is very easy, right? So high potential is positive. If you have to work hard, means potential is more. If you have to work less, means potential is less. So in the case of positive charge, we have high potential. In the case of negative charge, we say we have low potential. Getting my point? 15 classic science. Oh, nice, yeah. Very good, Sharat. Everybody, getting my point? That's why we say positive charge to be at high potential, negative charge to be at low potential. ठीक, fine? Yes. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई. क्या है? एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में एक पॉइंट तक कितना काम करना पड़ा? How much work you have to do to bring a positive unit positive charge from infinity to that point is called the electric potential of that point. Fine? Okay, sir. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में you are bringing a charge from infinity to this point. In potential difference, you take a charge from one point to another point. How much work you have done by unit positive charge? That is the potential difference. Yes, correct. हाँ, yes, Leo. Bye bye. Infinity मतलब very very far. ज्योति, infinity means very very far. Fine. Potential difference क्या होता है? Potential difference is the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point, and this difference of potential is called as potential difference. Very good. अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं? पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल, बट इट ऑल्सो मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना. कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? व्हेन इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स. नॉर्मली एवरीबडी इज न्यूट्रल, है ना भाई? इफ आई गिव इलेक्ट्रॉन टू यू, I will become positive charge. Why? Because now I have deficiency of electron. मेरे प्रोटॉन ज्यादा हो गए. If I give my electrons to you, you have more electrons. तुम्हारे प्रोटॉन कम रह गए, and you have more electrons. So you become negatively charged, right? So if I am positive charge, I am high potential. You have negative charge, you are low potential. If both of us join hand, what will happen? Electron from you will run towards me, no? Because I have deficiency, you have excess. Correct? See? So this is why. Electrons flow from negative potential to high potential. Correct? Right? Getting my point? Yes, man.
Electrons really flow. Electrons are the only thing that can flow. Atoms, protons, they don't flow actually. Yes. EMF is the electromotive force. Blended brains. You are talking about now about cell. I'll come to that. EMF as such is not there in you. We say it is potential difference only. But EMF is without considering internal resistance. Why should the charge be brought? Oh, Shivasni, because in current everywhere charges are moving. That's why. Why are they moving? How much work someone has to do to make them move? That's why potential. Take. Good. रुक जाओ, टेम्परेचर कम करते हैं यार. अब गर्मी होगी भाई. Yes, team 7 guy, you're right. Now listen. Definition of potential difference is fine, but from the definition you are getting a formula also if you think. Work done upon charge. Matlab, sir, joules per coulomb. There's a unit for it. There's a word for it. Volt. SI unit of current is ampere. SI unit of potential is volt. Correct? Clear? हाँ. बिल्कुल. Practice शुरू होगी. Why do we consider proton flow? Himani, it's a long historical thing. I'll tell you, don't worry. अब सुनो. Current measure करता था कौन? Ammeter. Current has unit ampere and it is measured by ammeter. Voltage or potential difference has unit volt. It is measured by voltmeter. Easy, clear, right? Voltmeter क्या करेगा? It will measure the voltage, right? And it is represented like this. This is your voltmeter, correct? बहुत अच्छे. Now, after this, we have to talk about one more thing. Voltmeter is connected in parallel, but right now I'm not going to talk about this. After series parallel, we'll talk. Take circuit diagrams and symbols. This is very important because if you don't know this chapter is not of use. All the circuits will be like in this form only. ठीक है ना? Easy definition of potential difference. रेनू बच्चा, easy definition ना आप यही बोल सकते हो. एक point से दूसरे point तक ले जाने में how much work you have to do, how much effort you had to put, कितना मेहनत करना, कितना काम करना पड़ा, right? That is called as per unit charge. एक unit charge को ले जाने में, that is called as potential difference. ठीक? हाँ. Grade 11th में we derive it very properly. Proper formula के साथ derive करते हैं. हाँ. Fuse is like resistance only. सुनो जरा. देखो. An electric fuse के लिए ना ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा. ऐसे लिख देते हैं, fuse कर देते हैं बस. ठीक? हाँ. अब सुनो. Cell, battery. What is battery? More than one cells connected in series is called battery. Plug, key switch. This is off. This is on. You can also say this looks like this. This looks like this. Resistance, rheostat. What is rheostat? It is a variable resistance. Means you have control of changing the resistance in this. Electric bulb. Wire joint hai. This is wire crossing. Means both of them are not touching in this case. Ammeter, voltmeter. And this is your simple circuit. Two bulbs. ये रहे दो bulb. Switch. Sorry, ये रहा switch. This is battery. This is battery. Okay. ठीक है. Question. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. In a wire, charges are flowing. Matlab, when charges are flowing, someone is doing the work, right? Someone is providing potential difference. If you have potential difference, then only charges flow. We just saw this. High potential, low potential, if you connect, then only charges flow. कौन कर रहा है ये? Voltmeter ना. Voltmeter measures. It measures how much voltage difference is between two points. वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर बताता है कि भाई इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है. बट ये वोल्टेज डिफरेंस लाता कौन है? Who brings this difference? It is the cell. सारी मेहनत आपके सर्किट में सेल करता है ना? राइट? So who does the work? Who provides the potential difference? It is the cell or a battery. It is used to maintain a potential difference across a conductor. Correct? Cell is a source of charge. Nah. Lot of students think like this, that cell is a source of charge. No, cell is a source of energy. Cell does the work to make sure the charges are able to flow. Right? है ना?
What is voltage drop? हाँ Ritika, when a current, from a resistance, when a current flows na, we say at this point high potential was there, but this resistance has used up the energy and here zero potential. So this is called voltage difference. It's called voltage drop. Either positive or negative. How can we check? Rupesh, in your cell it is written plus minus, and if you take a voltmeter you will be able to see it. Okay? What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? Define 1 volt. This is the question. Very common question. Define 1 volt. Jaldi batao. I'll come to this. Series parallel bachcho, I'll come to that. Don't worry. 1 joule per coulomb. That is true. If 1 joule of work is required to move a charge of amount 1 coulomb from one point to another, then it is said that potential difference between the 2 points is 1 volt. Electricity के अंदर, if you remember the definition, means you know the formula, means you can do all these things. कुछ है थोड़ी, definition है, simple, right? है ना? चलो, यहाँ तक ठीक है, everybody. Any doubts till now? Half an hour ना? हो जाएगा 2 घंटे में, I think so. अरे we can finish this in 2 hours, not a problem. Relax. Correct, very good. Aryan, nice, nice. Ritika, Ash, Unnati, good, good, good. Charan, it's okay, bacha. No doubts, na? Very good. Animal Kingdom, your doubt I will take, but not right now. After series parallel, I will take this. यही तो नहीं आता. अरे कोई बात नहीं. Notes are available in Telegram. No, Chitra, I will give these notes in Telegram. Don't worry. Chalo. Oh, come on, come on. Listen to me. Now, there is an experiment. This experiment is called Ohm's law experiment. It's a law, and you derive it using an experiment. What is the sequence? हम लोग कैसे लगाते हैं circuit? How do we make the circuit? Very, very easy. What do you do? Sir, first of all, we take a resistor. In electricity, anything is a resistor for you. Fridge, TV, appliance, bulb, everything is a resistor for you. Take, yes sir, cell, switch, and you have a resistor. Emitter ko you will connect in series. I will take your doubt now. Take, and voltmeter you have to connect across the resistor. Why? Because voltmeter is trying to find कि भाई how much energy this bulb, how much energy this bulb has used, है ना? इसके दोनों पॉइंट में कितना वोल्टेज का ड्रॉप आया, कितना डिफरेंस आया, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस वोल्टमीटर इज ट्राइंग टू मेजर. तो वोल्टमीटर ऐसी चीज है, इफ आई एम द वोल्टमीटर ना, एंड दिस इज द पर्सन हु इज यूजिंग द करंट. अगर ये एक रजिस्टर है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल होल्ड बोथ द हैंड्स एंड आई विल चेक. अच्छा, इतना वोल्टेज खा गए हो तुम, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप यू आर यूजिंग, दिस इज हाउ मच एनर्जी यू आर यूजिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट voltmeter does, and that's why you connect voltmeter in parallel. Ideally voltmeter has infinite resistance. Ideally voltmeter has infinite resistance. क्यों? voltmeter को क्या measure करना है? Sir, voltmeter wants to measure the voltage drop on this. Correct? So voltmeter will behave like open circuit. Voltmeter current draw नहीं करेगा. Voltmeter will say no current will pass through me. All the current should pass through that guy. I just want to be an observer. I want to see how much voltage this guy has used. Tick. So voltmeter will work like an open circuit. Emitter is connected in series. Why, sir? Because emitter has to measure the current. So emitter can measure the current, how much current passes through the emitter, that he can tell, right? Think of it like this, how much current will pass through the emitter, na? That current emitter can tell. So emitter needs to be connected where the current is flowing. It needs to be connected in series. Correct, hai na? हाँ. Ideally emitter has zero resistance. हाँ. I'll tell you more, don't worry. For now, just understand emitter is connected in series and voltmeter in parallel. ठीक? We'll talk more on this. Relax. Yes. Break अभी से क्या बात कर रहे हो?
Why voltmeter is not in series? Shweta, if voltmeter is in series, it will behave like infinite resistance. Your current will not flow. Circuit will be open. That's why. है ना? ठीक है? Now listen. What are we doing? Sir, this is a bulb. So voltmeter is here. Voltmeter is here to measure how much voltage drop is happening on the two ends of the bulb. ठीक है ना? Voltmeter is measuring how much voltage difference is there across the two ends of the bulb. Now ammeter is measuring how much current is flowing through the bulb. ठीक? So in this experiment we measure two things. First, how much voltage drop is happening across a resistor. Second, how much current is flowing through the resistor. ठीक? Fine. Potential and potential difference. Potential is with respect to infinity. You can think of it like absolute refractive index and relative refractive index. Difference is like relative refractive index and potential is like absolute with respect to infinity. Take yes. Now listen. You connect one cell and then check the value of voltage and current. Take, sir, I am noting the values. Na? Current is 1 ampere, voltage is 2 volt. Take it, bhai. Now you connect one more cell. Sir, now the current becomes 2 ampere, voltage becomes 4 volts. This is how we do this experiment in the lab. If you have done, अगर तुम्हारी lab हुई होगी, this is one experiment in grade 10th actually. Let's connect one more cell. क्या हो गया? Sir, now current is 3 amperes and voltage is almost 6 volts. ठीक है भाई. Now what will we do? From this table we will make a graph. On one axis we will make on one axis we will make the current. On one axis we will make the potential difference. ठीक? Yes sir. बहुत बढ़िया. All these values are given to you. बहुत अच्छे. Sir, current was 1 ampere, voltage was 2 volts. ठीक है भाई. We got this graph, this graph, this graph. What will you see? What will you see? A voltage current graph will come out to be a straight line parallel to x-axis. Sorry, at an angle to the x-axis, not parallel to x-axis. है ना भाई? A voltage and current graph, it will be a straight line. मतलब voltage is proportional to current. Voltage बढ़ रहा है तो current भी बढ़ रहा है. देखो भाई, voltage 2 है तो current 1 है, voltage 4 है तो current 2 है, voltage 6 है तो current 3 है. Voltage is increasing proportionally to the current. Yes or no? Yes? Very good. Krishna, no bachcha. I'll do dinner after you guys learn everything. I'll go home around 2:30. After that I'll do dinner. Yes? Abhi to I have eaten my apple. Now listen. V is proportional to I. This is what you saw from the experiment. अब इसमें ये जो line है ना, it is inclined. मतलब इसका कोई slope तो होगा. Now हमने क्या बोला? Ohm's law says at constant temperature voltage is proportional to current, and when you remove the proportionality, what comes? A constant. Yes, that is R. मतलब V upon I is equal to R. V upon I मतलब sir slope. तो slope of this line is the resistance. Ohm's law इतना ही है. Ohm's law is V equals IR. Simple, right? So R is the resistance. Unit of resistance क्या होता है? Sir, unit of resistance is ohms. Ohm. ठीक है? ऐसे दिखाते हैं. Ohms. Correct? Yes. हाँ. Very good. VI graph and IV graph. Aryan, good question. It's a good question. I will ask this question. Don't worry. Then I'll explain. Question for you. A student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistances R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? 4 options bhai. ध्यान से करना. CBSE loves these questions. Conditions of Ohm's law. Blended brains at constant temperature is very important. न्यूटन का एप्पल. ध्यान से करना. C. Oh, nice here. Why at constant temperature? Ambition success. See, if you change the temperature,
resistance will change. Why? Because resistivity will change. So you don't want resistance to change, because resistance is the slope of the graph, right? So resistance should remain constant. Only voltage and current should change. That's why at constant temperature is a very important condition for Ohm's law. अगर ये मिस किया, half mark gone. Yes, okay creation. I have got this comment. I think you only asked in the comment section. The team will have a look. ठीक? अब सुनो. If you notice, normally the graph that we make is voltage and current. But here the graph is voltage here and current here. The slope of this graph will be what? क्या होगा इसका slope? So slope is change in y-axis upon change in x-axis. मतलब y-axis का change हो गया change in current divided by change in x-axis. मतलब divided by delta V. सर V upon I तो होता है resistance. मतलब I upon V हो जाएगा 1 upon resistance. Oh, V upon I is 1 upon resistance. मतलब जिसका स्लोप ज्यादा इन दिस ग्राफ उसका रेजिस्टेंस सबसे कम. इनवर्स है ना, राइट? जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम. दैट्स ट्रू, एकदम करेक्ट है ना भाई? That's why R1 has the maximum slope, means R1 has the least resistance. R3 has the least slope, means R3 has the maximum resistance. Correct? It's okay, it's okay. Shri, listen. Make one line. Means you have fixed this voltage V. Correct? For this voltage, R3 has this much. This is I3. This is I2. And this here is I1. Correct? For the same voltage, minimum current is for I3. For the same voltage, maximum current is for R1. That is I1, है ना? I1 सबसे ज़्यादा है. I1 is maximum, I3 is minimum. Means, if resistance is less, current is more, na? Right? So you can say, sir, R1 is least, R3 is maximum. So what I'm saying, in this graph, I and V graph, slope is change in potential divided by change in current. So delta V upon delta I, matlab change in voltage upon change in current is resistance. But what if you change the axis? Then what is the slope? Delta I upon delta V is the slope which is giving you 1 upon R. Right? Matlab, if this thing is more, if 1 upon R is more, it means R is less. Bhai, if 1 upon R is very high, इसका मतलब क्या है? Sir, this straight away means that R is very low. R कम होगा क्योंकि R denominator में है. R is in denominator. If R is less, 1 upon R will be more, right? So that's why in this case, correct answer will be R3 is maximum, then R1 is minimum, right? Clear? दिलीप, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे बच्चे, right? Current flow is inversely proportional to resistance. The highest resistance will show less flow of current. Hence, the answer is C. That is, R3 is more than R2 is more than R1. Simple, clear? Yes. Delta. Delta meaning change. V2 minus V1. है ना? How much change happened? Correct? Yes. So resistance, if you want to understand resistance, resistance क्या है? It is the obstruction in the flow of current. जब करंट फ्लो करता है मतलब इट इज द चार्जेस दैट आर फ्लोइंग, है ना, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है दैट इज द रेजिस्टेंस. सो हम बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है. सिंबल ऐसा होता है, एंड V अपॉन I इज इक्वल टू R. यूनिट होती है ओम. क्लियर? यस. कैन बैटरी हैव रेजिस्टेंस? यस, बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट इन ग्रेट लेंथ. यस, रुकावट, करेक्ट. 1 ओम. डिफाइन 1 ओम. 1 ohm is the resistance in a wire when 1 volt is the potential difference across a resistor and 1 ampere is the current flowing. बस इतनी सी बात है, ठीक है? यस सर. अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है भाई? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज, लेंथ ऑफ द वायर, है ना? इफ वायर इज लॉन्ग, रेजिस्टेंस विल बी लॉन्ग. रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन. अब इमेजिन करो,
अगर आपको इतनी सी रोड कवर करनी है एंड यू हैव टू कवर दिस बिग ऑफ अ रोड, कहां पर ज्यादा चांसेस है कि ट्रैफिक मिलेगा? यहां पर ना. सो दैट्स व्हाई लॉन्ग वायर मोर इज द रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर शॉर्ट इज द रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. हाँ, डेफिनेशन ओम्स लॉ में क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ में लिखना है ज्योति, at constant temperature the voltage across a resistance is proportional to the current flowing across the resistance. Yes. Tired? कोई बात नहीं यार. अरे देखो, if you are ready to study, I'm ready to teach as long as possible. Very good. चलो सुनो. Resistance is proportional to length. 1. ठीक? Yes sir. उसके बाद लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. बहुत अच्छे. एरिया की बात कर लेते हैं. एरिया, if you increase the area of a wire, the resistance decreases. Think of it like this. Narrow wire is like a narrow lane. ठीक? A broader wire, a thicker wire is like an expressway. Expressway से गाड़ी निकलेगी स्पीड से एकदम जुर्र, no resistance, no रुकावट, no obstruction. From a narrow lane, your गाड़ी will go like right? So that is what? वो क्या है? You have a lot of रुकावट, you have a lot of obstruction. So if you increase the area, resistance decreases. So resistance is inversely proportional to area. Correct है ना? Yes. कब तक चलेगा क्लास? जावेद सर, this class will go till 2. Yes. अरे ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी के बाद यार. हाँ, गुड. अरे वाह, नाइस. एम्पेयर वाला फॉर्मूला यही है. हाँ, you're right. ये रेजिस्टिविटी भी लग सकता है. ठीक है, फाइन. हाँ, बहुत अच्छे. So factors affecting resistance में हमने देखा 1 length, 2 area, 3rd is temperature. भाई क्या हो रहा है? When charges are flowing, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बेसिकली, तो है ना, एटम्स जो है ना वहीं रहते हैं. So when you increase the temperature, these atoms start to vibrate. तो जो पास करने वाला है, imagine you are trying to pass in your assembly, you have lines, no? आपकी लाइन लगी होती है. एक बच्चे को अगर वो सब पास करना है, so you can pass nicely, but imagine those lines में students are running here and there, कट and you have to pass. कितना मुश्किल हो जाएगा? That is what is happening when you increase the temperature ना, the atom starts to vibrate more, and atom ही ज्यादा vibrate करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो पास करने वाला है बोलेगा अरे रे मार रहा है, right? So temperature also affects the resistance. I'll tell you, it actually affects one more thing, उसे बात करेंगे. हाँ, नहीं अनमोल, you put voltage on the y-axis, not a problem. क्या दिक्कत है? ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग चीज होती थी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, अ क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको बोलते थे फ्लक्स. करेक्ट. सो राइट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. तो हमने क्या देखा कि भाई देखो, पहली चीज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल. भाई सिल्वर के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, है ना, गोल्ड के लिए अलग होगा. तो हमने बोला देयर इज एक और चीज, देयर इज वन मोर थिंग जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे. बात करेंगे उसकी. पहली चीज, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन एरिया. हमने क्या बोला सर? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली. When you remove proportionality, you add a constant. This constant is called as resistivity. देखो, resistance है एक value, depends on type and shape of your wire. Resistivity is a property of that material. Resistivity क्या है? It is the property of that material. Correct? मतलब sir, resistivity is the property. It depends on material and temperature. यानी कि you take a copper wire, you take a this big wire, you take a this big wire, you take a patla wire, their resistivity will be same as long as the material remains same and temperature remains same. तो resistivity depend करती है material पे and temperature पे, and that's how temperature से resistivity change हुई, and that's how resistance changes. So you got the formula as R equals rho L upon A. Yes, specific resistance, you're right. So SI unit क्या है? ओम मीटर. सर कैसे आया? भाई resistance is what? Ohms, right? Resistance क्या होता है? Ohms होता है. So R is equal to rho L upon A.
R into A upon L is equal to rho. अब यूनिट लिख दो, जस्ट राइट द यूनिट्स. R is equal to ohms, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर. मीटर से कट गया, क्या बचा? ओ मीटर इज इक्वल टू रो. तो ओम मीटर आया इसका यूनिट. क्लियर? यस. नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. ठीक. एंड दैट्स हाउ योर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला केम. एक बात बताओ, कोई ये नहीं करना, बिकॉज आई हैव सीन समटाइम्स स्टूडेंट्स मेकिंग दिस मिस्टेक. इफ I change the length of a wire to become twice, change in resistivity will be how much? If I change the length of a wire to become twice its original length, how much will be change in resistivity? Yes. बिल्कुल यार, I am studying with you. Temperature constant है या नहीं? Shri, temperature is constant in Ohm's law, right? So if you change the temperature, resistivity changes, means resistance changes, means your VI graph will be changed. No, that is why temperature should be constant. Twice. Change in resistivity I have asked. Resistivity does not depend on length. Nobody will think, sir, R into A upon L is equal to rho, which means, can I say, rho depends on area and rho depends on length? No. Rho is a constant. Rho depends on material and temperature. Just that. Length कितना भी हो, area कुछ भी हो, जब तक temperature और material same है, resistivity same रहेगा. कौन depend करेगा dimensions पे? Resistance करेगा. ठीक है? Yes? हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आगे आओ. सो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स एट 20 डिग्री सेल्सियस इट इज गिवन टू यू. भाई एयर का इतना है, नाइक्रोम का इतना है, कॉपर का इतना है. रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई एयर एंड वुड आर इंसुलेटर्स. भाई इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है. दे आर वेरी गुड रेजिस्टर्स. ये बड़े अच्छे रेजिस्टर हैं, ये इंसुलेटर हैं एकदम, राइट? सो लो रेजिस्टिविटी मींस गुड कंडक्टर्स, हाई रेजिस्टिविटी मींस बैड कंडक्टर्स. सो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर, कॉपर, मेटल्स, एल्यूमिनियम, दे हैव लो रेजिस्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर्स. वुड, रबर, प्लास्टिक, वेरी हाई रेजिस्टिविटी, बैड कंडक्टर्स, राइट? है ना? 1/4 टाइम्स होगा. हाँ, दैट यू आर राइट ना. लेंथ में तो डायरेक्ट होता है ना, एरिया में रेडियस पे डिपेंड करेगा. डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. बच्चा, रेजिस्टेंस इज द value of the ratio of voltage upon current. रेजिस्टेंस है कि भाई उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है. इट डिपेंड्स ऑन कि भाई उस वायर का लेंथ कितना है, एरिया कितना है. बट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल. आपने मटेरियल सिलेक्ट किया, मटेरियल की नहीं प्रॉपर्टी लिखी रहेंगी. आप एक रेजिस्टेंस खरीदने जाओगे, इफ यू गो टू बाय सम मटेरियल फॉर मेकिंग अ वायर, क्या मिलेगा तुमको वहां पता है? They will tell you resistivity इसका इतना है. तो resistivity तो property हो गया. But from that property, from that material, it is on you how you want to make the resistance. तुमको अगर 1 ohm का बनाना था, तुमने इतना बड़ा बनाया. तुमको अगर 1/10 ohm का बनाना था, तुमने और लंबा कर दिया. So it depends on dimensions. ठीक? चलो आगे आ जाओ. Question: Define conductors and insulators example. This is an easy question यार, है ना? If you want to define conductors and insulators, क्या बोलोगे? Conductors are materials that allow electricity to flow through them easily. Yes, and this property of conductors allows them to conduct electricity, which is known as conductivity. ठीक है भाई. Example क्या है? Metals. Humans are conductors by the way. ठीक है? Insulators are bad conductors. They are materials that do not allow current to pass through them, that hinder the flow of electricity. Examples are plastic and wood. Yes, okay. Question B. Which of the following is the most conductive element? Aha. Copper, iron, silicon, silver. It's a memory based question, but it is from your book only. You are more of a night owl. Ohmic conductor. Ooh, which follow Ohm's law? Because we have non-ohmic conductors also, not in your syllabus, in grade 11. Silver. Yes. Or resistivity is a property of material. सिल्वर. देखो, सिल्वर इज द बेस्ट पॉसिबल कंडक्टर वी नो इन मेटल्स. ठीक है? सुपर कंडक्टर अलग बात है, करेक्ट? सिल्वर हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी, मींस इट इज द बेस्ट कंडक्टर. करेक्ट आंसर इज सिल्वर. चलो भाई, क्वेश्चन:
Electrical resistivity of a given metallic wire depends on its length, its thickness, its shape, nature of material. Come on. If length increases, thickness decrease. Shrivasni, yeah, it's a very good question. But this thing, question, there's a difference between length increased to, or there's a difference between wire is stretched. Whenever a question will say wire is stretched, it means length has increased and radius has decreased. But if the question simply says that a wire has length this much and radius this much, and length has been made double, length has been increased to this much, which means only length has changed. Yes, D, very good यार. Nature of material, सही बात है. Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? क्यों? ऐसा क्यों करते हैं भाई हम लोग? Why do we always use copper और aluminium? क्यों हम भेदभाव करते हैं? क्यों यूज नहीं करते? गोल्ड का वायर क्यों लगा देते हम लोग? है ना? लगाते हैं मस्त सिल्वर का वायर, गोल्ड का वायर. Why only aluminium and copper? Only few conductors. Semiconductors is a whole different set of materials. वो material ही अलग है एकदम. Cheap, less expensive, correct? Hey, don't go only with cheap thing. They are doing good. They have some good things because they are good conductors. They have low resistivity and they are cheap also, right? Compared to silver and gold. वैसे तो silver is the best conductor. Second number पे copper आता है. And copper is expensive also. ऐसी बात नहीं है. Copper and aluminum wires have low resistivity. They are good conductors of electricity. Hence, they are usually employed for electricity transmission. चलो भाई, ये सब हो गया. अब न्यूमेरिकल की बात कर लें. Series combination of resistors. यहां से चालू होती हैं questions की कहानी. Run of electrons. Tanishka, source of energy. Actually, they don't have electrons. They just have two different potentials which are maintaining this constant flow of electrons because of chemical reactions in between. है ना? They run off electrons. I would say they run out of chemical energy. They run out of the fuel so that they can maintain this difference of potential. Silver, Melora, very expensive ना? Very expensive. कैसे इतना तार कहाँ से लाएंगे महंगा, right? है ना? Redox reactions. Good. गोल्ड और सिल्वर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की बात करते हैं भाई. देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इट्स अ एंड टू एंड कनेक्शन. इधर से हाथ पकड़ा, इधर से हाथ पकड़ा, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कनेक्शन. सो दिस इज लाइक दैट ह्यूमन चेन. दैट ह्यूमन चेन थिंग इज सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ व्हाट हैपेंस? देखो भाई, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई विल टेल यू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट इज गुड इनफ. दिस इज तो यू ऑल नो, राइट? इन सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज current remains the same. In series, current remains the same. Means whatever resistance is there, है ना? Whatever resistance is there, 100 ohm, 5 ohm, 2 ohm, if they are in series, doesn't matter what their resistance is, the current will remain the same. Why? It is the same connection. ये तो एक ही line है ना? Right? It is the same thing. Whatever current passes through this will have to pass through this, will have to pass through this, right? So in series, the current remains the same. Okay, but what is different? Potential difference across each resistor is different. Sir, what do you mean? I'll tell you. Bhai, if let's say you have these three bulbs, this is the cell. We can change resistivity. Manoj, yes, you can. If you increase temperature, decrease temperature, you can change resistivity, or you change the material. Yes, above comment. Oh, correct. Is Ohm's law done? Yes, Tanishka, Ohm's law is done. Very easy. At same temperature, at constant temperature, voltage proportional to current. That is Ohm's law. V equals IR. Okay, this is your cell. It has voltage V. It is giving you how much supply? V voltage ka supply. This is the total current in the circuit. Yes, sir. Fine, not a problem. This is R1. This is R2. This is R3. Now, what are we saying? In series combination, what is distributed? क्या distribute होता है? Sir, voltage gets distributed but current remains the same. इसका मतलब this V यहां पर तो है V, यहां पर है 0. So basically all these bulbs,
ये लोग बल्ब क्या कर रहे हैं, इनको हमने V एनर्जी सप्लाई किया, हमने इनको V वोल्टेज सप्लाई किया, ये तीनों बल्ब मिलके ये पूरा V चूस गए, राइट. व्हाट आई एम सेइंग, दीज 3 bulbs दे एट दिस V. यहां क्या बचा, 0. भाई यहां 0 बचा, वहां तो V था. कौन खाया, ये तीनों मिलके खाए, राइट. सो V1 is what the first bulb ate, V2 is what the second bulb ate, and V3 is what the third bulb ate, and together this was equal to V. Yes, है ना, correct. They used it up. Yes. Good. Yes, you're right, Manora. Thank you, Farhan. I saw that. So, sir, V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay. Now you tell me, if current is same in all three, what is V1? Apply Ohm's law. Sir, V1 will be I current is flowing through resistance R1. Matlab, how much voltage is this bulb using? Sir, V1 is equal to V equals IR. Oh, sir, V1 will be equal to I into R1. V2 will be equal to I into R2. And V3 will be equal to I into R3. Oh, yes. Correct? हाँ, good. V equals IR from Ohm's law. तो हमने बोला ये चीज. अच्छा, यहां से ना, there's one more thing. हाँ, I want to simplify this circuit. I can, right now I'm seeing 3 bulbs, na? Correct? What if I tell you I can represent this circuit like this also? Only one bulb with the same battery which has a voltage V. इसका R I don't know, I'm just calling it R equivalent, है ना. Final हमने कुछ जुगाड़ लगाया, we just did something and we found R equivalent. भाई ठीक है, it has current I. Now here V is equal to I into R equivalent. Correct sir? Okay. तो हमने बोला both of these are same circuits. हाँ, ये और ये same है. We are just trying to find the equivalent resistance का formula. I is equal to this. Now current is same, so I get cancelled. R equivalent equals R1 plus R2 plus R3. Yes. Why V not remain same in series, Manoj? Why V not remain same? See, if V also remains same and I also remain same, then each bulb is same. सबका resistance same हो जाएगा. ये तो होता नहीं है. सारे बल्ब थोड़ी सेम होते हैं सीरीज में, है ना. सही बात है, हो सकता है अलग अलग हो. That's why. Correct. चलो भाई आगे जाओ. In series, what do you notice? Sir, equivalent resistance is the sum of all the resistance. मतलब equivalent resistance is more than individual resistance. This is what is happening. This is what is happening in series combination. हाँ, derivation आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. वैसे derivation आ सकता है, easy है, आता नहीं है. Normally derivation does not come, but this derivation is not a derivation. This is something you will be doing in questions. Question में यही करते हैं हम, lot of times. This is the working method. Now, अब देखो एक चीज देखो. Equivalent resistance of n equal resistors. R. If let's say you have 10 2 ohm resistance in series, क्या करोगे? 2, चलो, let's say you have 5 2 ohm resistances in series, क्या करोगे? Sir, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 2 हुआ ना? Right? Same thing, you have n resistances of R ohms in series. Finally क्या निकलेगा? It will be n into R. Same logic. So if you have n resistances of R ohm connected in series, final resistance will be n into R. ठीक है ना? हाँ. Yes, ज्योति, होता है. Correct. हाँ. ये क्या चल रहा है भाई? लड़की नहीं हो? क्या बात चल रही है? When we start next chapter, Tanishka, next chapter will start by before 1 will start. Don't worry. Let's talk about parallel connection. देखो parallel connection में ना, the difference is nodes are same. Now let me ask you. R1, R2, R3, right? This is one circuit.
La, 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 la. This is R1, R2 and R3. This is one circuit. Yes, both are same. Both are same. What do you notice कि भाई हाँ, if they have a common terminal, all the three resistances they have a common two nodes, R1, R2 and R3. दोनों के ends ना, तीनों के दोनों ends सेम है. सेम थिंग हेयर. अगर केवल वायर होगा ना, दिस वायर यू कैन ओमिट. इट मीन्स सर ये तीनों एक ही पॉइंट हैं और ये तीनों भी एक ही पॉइंट हैं. यस, गेटिंग माय पॉइंट. सीरीज एंड पैरेलल. वीर बच्चा, सीरीज पैरेलल में, सीरीज में वी हैव एंड टू एंड कनेक्शन. वोल्टेज is distributed, current remains same. I'm talking about parallel right now. How to identify a parallel connection? It is like this. All the resistances will have common two nodes. ये point और ये point ना बहुत सारे resistance का same होगा, उसको बोलेंगे हम parallel connection. Now in parallel what happens? The terminals of resistors are connected between the same two nodes. अब let's talk about parallel. कैसे करते हैं इसको? भाई इसके अंदर सर R1, R2, R3 है. इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम. पैरेलल में ना दिस इज वोल्टेज V, so this resistance will get how much? It will get V voltage, it will get V voltage, it will get V voltage. पैरेलल में हर रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिलता है. अब कुछ तो चेंज होगा, क्या? करंट. यहां पर करंट अलग अलग होता है, राइट? इमेजिन कि दिस इज द मेन हाईवे. यहां से निकला एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, right? Main, this I was here. From this we have I3, I2 and I1. So basically total current था I. From this I1 went into R1, I2 went into R2 and I3 went into R3, right? तो हम क्या बोल सकते हैं? Potential difference across each resistor is same. Current through each resistor is different. अब इसमें कैलकुलेशन करना है तो हम बोलेंगे सर क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ करंट? टोटल कितना था? I था. I is equal to I1 plus I2 plus I3. ओके सर. यस, दिस सो इनकन्वीनियंट संगीता. आई नो बच्चा, आई नो, बट I want this one video to be full from the start to the end. That's why I can't break right now. Complete numericals in one video. हाँ, okay everybody, resistance के लिए I'll tell you something. I have given you something. हाँ, because राजा जी, because it's a ratio, right? It's a ratio. C upon V. C is meter per second, V is meter per second. कट गए, बन गए ratio. That's why, right? So listen. If I represent this circuit as like this, only one resistance R equivalent है ना, and this is my voltage V, this is my current I. I'm trying to simplify my circuit. So here I is equal to I1 plus I2 plus I3. क्या बना? I क्या होता है? Sir, from Ohm's law, I is equal to V by R. तो here I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3, right? इसको derive करेंगे तो बनाएगा 1 upon R equivalent equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. That is the formula for parallel connection का equivalent resistance. ठीक है सर? तो if you notice, in parallel, equivalent resistance is less than individual resistance. Yes, जल्दी बताओ, ये point समझ में आ रहा है? In parallel, equivalent resistance is less than individual resistance. अगर I have a 2 ohm resistance, yes, correct. I have a 2 ohm resistance and I connect one more 2 ohm resistance. दो resistance के लिए I will do 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to 1 upon R equivalent. क्या आएगा पता है? R1 into R2 upon R1 plus R2. तो यहां पर आपका आएगा कितना? 1 ohms. 1 तो लेस है, 2 से भी और 2 से भी. So in parallel, equivalent resistance decreases. The more resistance you connect, the more less resistance it will become. हाँ, correct है ना? How many chapters left? After this only one chapter. छोटा chapter है वो.
ठीक है. N equivalent resistance 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. क्या हो जाएगा ये? अगर 3 है सर 3 upon R equal to 1 upon R equivalent. So R equivalent equals R by 3. If I tell you there are N resistance in parallel, it will become R upon N. Simple. Correct? So it will become R upon N. This is parallel connection. चलो question कर लेते हैं. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? Sorry, in which case? In this case. Yes. In this case. या तुम देखो. Come on. Not feeling sleepy? Yes, sleepy नहीं, खत्म करते हैं जरा. Come on. हाँ, good. Farhan बचा, this class will end by 2. Come on. Reading of ammeter and voltmeter. This is what the question comes. यही question आते हैं. Circuit will not be very difficult. Circuit easy होगा. Ammeter is 0.24 amperes. 0.24. Okay. All night owls here. It's 10 here in Dubai. Oh, nice. 48 ohm and 3 by 24. Okay. Reading of ammeter and voltmeter. भाई ammeter क्या measure करता है? Ammeter measures sir current. Okay. How to find current? Very easy. Find equivalent resistance and then find the current. है ना? This is the total current. So how much current is flowing in this circuit? Sir, if I make this circuit something like this, 6 volts R equivalent and I. ये R equivalent कितना होगा? सर 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm. अच्छा एक चीज और, one more small thing. Whenever you are trying to find equivalent resistance, forget about ammeter and voltmeter. सर मतलब your circuit looks something like this ना? Your circuit looks like this. Ammeter है ये. This is 5 ohms. This is कितना है ये? 8 ohms and this is 12 ohms है ना? And here is your voltmeter. है ना, ये हुआ voltmeter. ठीक है. आप जब equivalent resistance बनाओगे, whenever you are finding equivalent resistance, ammeter को कर दो short, भूल जाओ कि ammeter है ऐसे, और भूल जाओ voltmeter भी है. ये हुआ आपका circuit. What is the equivalent resistance? Sir, 5, 8, 12. They are in series. मतलब 12 plus 8 is 20, and 8 plus 5 is 20 plus 5 is 25. 25 ohms आ गया. ठीक, correct. You got total resistance as 25 ohms. अब क्या चाहिए? You want readings in ammeter and voltmeter. Ammeter क्या measure करेगा? This current. Sir, voltage कितना है? 6 volts. So I will be 6 upon 25. 6 upon 25. Okay. बात करते हैं voltmeter की. Current ठीक है? Sir, current is 6 by 25. Okay. हाँ, good. अब voltmeter is connected across only 12 ohms. केवल 12 ohm के across है. So these 2 points of voltmeter are very important. ऐसे कुछ भी मत करना. Between this and this, मतलब you have to find how much voltage is used by 12 ohms. कितना करेगा 12 ohm use? Sir, 12 ohm का resistance तो पता है मेरे को. I know 12 ohms. But how much is the current passing through it? And it's a series connection. So if current flowing is 6 by 25, 12 ohms is getting how much current? 6 by 25, correct? So what is the voltage? Sir, 12 into 6 by 25. And that, my friend, becomes your answer. Clear? जल्दी बताओ. कोई doubt है इसमें? ये है बहुत आसान सा question, but this is a good question from boards level. बहुत मुश्किल नहीं आते. I'm telling you again. है ना? Yes. Resistance. हाँ, good. Next. What is first the highest, the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12, 24? Complete numericals in one video. Wait. Highest is 48, lowest is 2. How 84? 48 ohms. Clear? Good. भाई
If you want to find highest resistance possible, क्या करना है? All series combination, just add all of them. 24 plus 12, 24 plus 12 कितना हो गया? 34, 34, 36, 36 and 4 is 40, 48. 48 ohms is the highest possible. Lowest possible निकालना है अगर, so you will do 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24 is equal to 1 upon R equivalent. LCM क्या होगा? 12, 12, 24, 8, 24, अच्छा 24 ही तो होगा. 4, 4, 6 is 24, 8, 3 is 24, 12, 2 is 24, 24, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितना है भाई? R equivalent equals 2 ohms. Minimum is 2, maximum 48 है भाई. कुछ नहीं करना. मिनिमम निकालने के लिए पैरेलल में लगाओ एंड मैक्सिमम के लिए सीरीज में लगाओ. यस, बैंगलोर का एक्सेंट आ रहा है. यस. अरे नहीं यार, अरे ऑन अ मिशन जब तक तुम लोग हो नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम. कम ऑन. ओह, क्रिएटिव माइंड. यस, करेक्ट. हाँ, अब सुनो जरा ध्यान से. सो यू गॉट दिस. For highest, go with series connection. For lowest, go with parallel connection. Clear? Easy, right? अब सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं. It's a textbook question. Draw a circuit diagram of electric circuit containing a cell, a key, an emitter, a resistor of 2 ohms in series with a combination of two resistors, 4 ohm each in parallel, and a voltmeter across the parallel connection. Will the potential difference across 2 ohm resistor be the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor? देखो, I know अभी दिमाग उतना नहीं चल रहा होगा, कोशिश करो, हो जाएगा. Yes. Yes, come on, come on, come on. हो गया सिलेबस, बहुत अच्छे, काम करो. सर्किट डायग्राम बनाना है. क्या क्या यूज करके? एक सेल लगेगा, एक की लगेगा, एक एमीटर लगेगा, एक रेजिस्टर लगेगा ऑफ 2 ohm इन सीरीज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स 4 ohm ईच इन पैरेलल. डायग्राम बना लोगे? यस. डोंट मेंशन. कैन यू मेक द डायग्राम? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? बना लोगे ना भाई डायग्राम? कुछ है थोड़ी इसमें यार, इट्स वेरी इजी. एंड अ वोल्टमीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या चाहिए सर? पहले बनाएंगे हम रेजिस्टेंस. A resistance of 2 ohm in series, ये हुआ 2 ohm का resistance and combination of two resistors of 4 ohm each. सर ये हुआ 1, ये हुआ 2. This is 4 ohms, this is 4 ohms. ठीक है. और क्या चाहिए? वोल्टमीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अच्छा ठीक है सर, एक वोल्टमीटर भी लगा देते हैं. ये लगा दिया मैंने वोल्टमीटर. ठीक है. तो दिस इज 2 ohms. देन व्हाट डू यू वांट? सर आई वांट अ सेल, की. ठीक है. आई वॉन्ट अ की. ये हो गया मेरा की, ये हो गया मेरा सेल, एंड ये हो गया मेरा लेट्स से एमीटर. और क्या चाहिए? बस डन. बन गया है ना? यस, बना लोगे ना? वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा सर्किट. Now, will the potential difference across 2 ohm resistor be the same as that across the parallel combination of 4 resistors? Question. Will the potential difference across 2 ohm resistor be the same as that across parallel combination of 4 ohm resistors? Give reason. Come on. Since both have 2 ohm resistors, very good Parveen. Nice. Yes. Harsh, yes. श्रीवास ने यस. अर्श गुड गुड गुड. मीता बहुत बढ़िया. अब सुनो, यू आर राइट सर. यहां पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस 4 ohm 4 ohm in parallel. What is the resistance? Sir, resistance will become, this is 2 ohms. 4 ohm 4 ohm in parallel ना, क्या बन जाएगा ये? Sir, this will become 4 into 4 upon 4 plus 4, मतलब 16 by 8 यानी कि 2 ohms. So this will become 2 ohms, right? ये बन गया 2 ohms. अब दोनों equal resistance बन गए. Correct? So that's why what will you see? The potential difference will be same. Correct? अब इसको आंसर कैसे करोगे?
equivalent resistance of 4 ohm and 4 ohm is 2 ohms. The potential difference across 2 ohm resistance of circuit will be same as potential across two other because they are making 2 ohm only. है ना भाई? Yes, very good. हाँ चलो आगे आओ. चलें? Done गौरी, very good. अरे वाह. हाँ सिमर बेटा आराम करो आप. चलो आगे आ जाओ. स्पैम कहाँ कर रहे हो तुम? What will happen if we connect household appliances in series? क्या दिक्कत होगी भाई? If you connect your household appliances in series, what will be the problem? Not work properly. You're right. सर लेकिन I तो constant नहीं होगा. ज्योति constant होगा. I will be constant. This will be कितना होगा ना? Let's say this is I. And when you remove these 4 and 4 and you make only 2 ohms, it will get the same current because this 2 and this 2 are in series. That's why. है ना? हाँ. Yes. क्लोज करने में प्रॉब्लम. सीरीज में क्या होता है सर? वोल्टेज अलग अलग मिलेगा. एक अप्लायंस खराब हुआ सब खराब हो जाएंगे. यू विल हैव नो कंट्रोल. एक को बंद करना है सारे बंद करने पड़ेंगे. राइट? दैट इज द. हाँ घर जल जाएगा. नहीं यार. वेरी गुड. ऑल दीज आर वेरी वैलिड पॉइंट्स. सो दिस इज द आंसर ऑफ एडवांटेजेस टू पैरेलल कनेक्शन. करेक्ट? इन आवर हाउसहोल्ड्स all the appliances they have a specific voltage rating. 230 volts, 220 volts, 240 volts है ना? 240 होता है वैसे तो. 220 to 240 volts का रेटिंग होता है. 220 volts. अब उस अप्लायंस को 220 वोल्ट चाहिए. राइट? हाउ विल यू कनेक्ट? पैरेलल में तो लगाओगे. एंड पैरेलल में खास बात क्या होती है? इन पैरेलल यू कैन कंट्रोल अप्लायंसेस इंडिविजुअली. इन सीरीज यू कैन नॉट. सो ऑल दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच वी ऑल शुड नो. ठीक है ना? हाँ वेरी गुड. वेरी गुड. अरे फैन का ओमेगा डिपेंड करता है. आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हो वैसे. बाय द वे आ जाओ. जूस लॉ ऑफ हीटिंग. जल्दी जल्दी. अरे छोटा छोटा बचा है यार. जूस लॉ ऑफ हीटिंग करते हैं फटाफट. इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है. हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन. अब इससे पहले वर्क कहां सुना था तुमने? इन दिस सेम चैप्टर. वेयर डिड यू हियर अबाउट वर्क? इससे पहले कहां सुना था? इन द सेम चैप्टर. कम ऑन. वोल्टेज में ना. आई स्क्वायर आर टी. हाँ आई एम कमिंग टू दिस. 15 minute break. Okay creation. We'll see. Label also. Yes Riyanshi, without labeling diagram doesn't make sense. Potential difference में right? क्या था potential difference में? सर potential difference में V was equal to W upon Q है ना? V into Q is equal to W. याद आया? W is heat, so I can say H is equal to V into Q, right? ठीक है सर. H is equal to V into Q. अच्छा Q क्या होता है? सर I is equal to Q by T. सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे. I'm telling you, this is like Avengers. Everybody is joining hands and making new power. I is equal to Q by T. Q क्या है? सर इट इज I इंटू टी. इसमें रख दो. H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी. दिस इज द बेस फॉर्मूला. अगर तुमको ये आ गया तुम सारे फॉर्मूले बना दोगे. यहां तक क्लियर है? हाँ. हाउ मेनी टॉपिक्स? करेक्ट. टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन. लो बैटरी डेटा खत्म. चिल गाय. इट्स ओके बच्चा. इट्स ओके. यू कैन वॉच इट लेटर. जल्दी बताओ. यस Kajan, very soon I'll tell you something about this. Don't worry. Yes, Gauri, you will get it. Listen, है ना? Clear है ना? बहुत अच्छे. अब सुनो जरा. H equals VIT. You got? Yes, sir. We got. अब if you apply Ohm's law, Ohm's law में क्या होता है? सर V equals IR. या तो अब एक काम करो. V is equal to IR लेके रख दो इसमें. तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? और वेट अ सेकेंड. यहां गड़बड़ है. नहीं, यहां पर है V इज इक्वल टू आई आर लेके रख दो या फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R लेके रख दो. सो इफ यू पुट V इज इक्वल टू आई आर इन दिस फॉर्मूला VIT, what do you get? You get H is equal to I square RT. This, my friend, has a special name. We call it Joule's law of heating.
State Joule's law of heating. Heat is proportional to square of current passing through the resistor, proportional to resistance, proportional to time. ठीक, तो कितना हीट डेवलप होगा उसमें डिपेंड करेगा कितना करंट फ्लो करता है उसके स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस कितना है और टाइम कितनी देर चला वो. ठीक, एक और फॉर्मूला, इफ यू पुट I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्या बन जाएगा सर? इट विल बिकम H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, राइट? V स्क्वायर T अपॉन R. ये एक और फॉर्मूला आ गया. सो बेसिकली यू हैव 3 फॉर्मूलेस इन फ्रंट ऑफ यू. सर तीनों अलग अलग है? नहीं, तीनों सेम है. ऑल द 3 विल गिव यू द सेम आंसर, एकदम सेम आंसर देंगे. बट how will I know which formula to use? With practice. Yes? Any constant of this law? No, in this there is no constant. Where should we use Ohm's law? Ashar, Ohm's law, wherever you have a voltage and you have a current, you can use Ohm's law. That's it. हाँ, what is EMF? सार्थक बच्चा, EMF होता है एक सेल का वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट कंसिडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस. अभी इसमें नहीं पढ़ाते सीबीएसई में हम लोग, लेकिन EMF ज्यादा होता है हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से. ठीक है, फाइन. 3 फॉर्मूले हैं, बट विद प्रैक्टिस यू विल गेट इट. अच्छा सर, प्रैक्टिस कैसे करें? I told you, I came prepared today. इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में I have given you small sessions to practice only Joule's law of heating questions, only resistance based question. ये 2 छोटे सेशन है. यानी कि आज का ये सेशन है ना, this session we are doing today, this session contains everything you need to master physics. प्रैक्टिस के लिए भी रेजिस्टेंस क्वेश्चंस, Joule's law of heating, रे डायग्राम, सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में. एक बार चेक करना. आज का सेशन अगर तुम बैठ गए पूरा, मीन्स यू हैव डन इट ऑल. इसके बाद तुमको इससे तो मतलब नहीं है. यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूजिंग दैट सेशन. ठीक, सारा काम हो जाएगा बढ़िया से. ठीक, चलो. एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. किशोर विल डू इट, डोंट वरी. हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. भाई जहां जहां गर्मी मिलती है तुम्हें करंट से, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. सर आयरन, रूम हीटर, और सर्दियां चल रही हैं आजकल तो खूब हीटर चल रहे होंगे, है ना? राइट, टेल मी, झूठ बोल रहा हूं मैं? रूम हीटर, आई मीन उतनी सर्दी वैसे हुई नहीं है अभी, एटलीस्ट इन यूपी एंड दिल्ली में तो बिल्कुल ही सर्दी नहीं है अभी. अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं है. इनकैंडिसेंट बल्ब, हाँ, बट हाँ गल्फ कंट्रीज में थोड़ा सर्दी है. जॉर्डन में तो है यार, रात में है. इन वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वर्षा, okay, I'll tell you one small thing. Don't be confused, sir, heat is proportional to resistance or inversely proportional to resistance. Heat, you will always mention that heat is proportional to square of current flowing through the circuit, है ना? Square of current proportional to resistance and proportional to temperature. Joule's law of heating is your first go-to thing. This is a मैनिपुलेशन यू हैव डन. ये वोल्टेज से है, ठीक है ना? ये वोल्टेज से है. अब सर्किट में अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई आपका कंट्रोल किस पे रहता है? हियर यू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms, है ना भाई? ये 2 ohm था और ये था लेट्स से 4 volts. कितना हीट जनरेट होगा इसमें? यस, कचन, अरे नहीं, देखो, सी इट विल शट डाउन, विल नॉट हैपन, रिलैक्स. एंड कोर्स there are lakhs of students who are still learning, so relax, no doubt about this. हाँ, ठीक है. How much is the heat produced in 2 ohms? Sir, there are 2 ways of doing it. 1, find the current. कितना आ रहा है करंट? सर I is equal to 4 upon 2, that is 2 ampere. So I will find heat produced how? Let's say time is 1 second. चलो, या फिर let's say time is 10 seconds. ठीक, कितना आया? सर heat produced will be I square R into T. मतलब 2 का स्क्वायर into 2 into time कितना है? 10 second. How much you are getting? 4 into 2 into 10 means 80 joules. ठीक, one formula we have used I square RT, correct? What if we use V square upon RT? सर अलग आएगा क्या? Let me prove it to you.
इफ यू डोंट वांट टू फाइंड आई, क्या निकालना है सर? v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी, मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। बताओ 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 10 कितना आ रहा है? 80 जूल्स। भाई दोनों सेम चीज हैं, both are same thing. It's just in that you found current, in this you applied it directly, right? So don't think resistance proportional directly inversely, ना, you go with Joule's law of heating. आप बोलो कि सर heat produced जो है ना, heat produced is proportional to square of current, proportional to resistance, proportional to time. Clear है? जल्दी बताओ। नहीं blended brains, अच्छा ओ yes, you're right here. You can say it is 1. अरे मीता मैं पूछूंगा तुमसे अभी, क्लियर है यहां तक? अब सुनो जरा, बल्ब की बात कर लेते हैं। If somebody asks you define Joule's law of heating, state Joule's law of heating, you will say the heat produced in a wire is proportional to square of current flowing through that wire, is proportional to resistance and proportional to how much time the current flows through that wire. This is Joule's law of heating. That's it. इतना ही होता है, ठीक है? बल्ब की बात कर लेते हैं भाई। ये कौन सा बल्ब है? वो 100 वॉट वाला इनकैंडिसेंट बल्ब। इसके अंदर क्या होता है? there is a short I have done here on this. Why do we have glass casing over the bulb, right? Filament is the wire from which when current flows na, so much heat is generated that the wire glows, and that's how you get the light. What is exactly power dissipated? Sangeeta, power dissipated बच्चा, it's like कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना वो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, कितना डिसिपेशन मतलब होता है वेस्ट करना, नहीं डिसिपेट करना वेस्ट नहीं, यूज करके बेसिकली आपके काम आना, छोड़ना, निकालना, उसको बोलते हैं डिसिपेशन। टंगस्टन इज द वायर, गुड, इट इज मेड ऑफ टंगस्टन, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना? टंगस्टन हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? हाँ, very good. Excess of heat. So how does your incandescent bulb works? Because of heating effect of electric current. When current flows through the filament, so much heat is generated that this filament becomes glowing hot, and that's how you get the light. But sir, glass casing क्यों होती है? Why do we have glass casing? To prevent oxygen from coming in contact with this filament. नहीं तो filament जल जाएगा भाई, and there is a short on this. Why do we have a glass casing on the bulb? I have done this short. 3380, हाँ लगभग 3400 होता है लगभग। हाँ, fuse. It's a safety device. तुम्हारे घर में होगा यार ये। You must be having in your house main switch पे, या तो ये होगा ऐसे वाला, पुराने घरों में होता था, और maybe you have new, it's a circuit breaker, है ना? छोटे छोटे appliance. If you have a extension board, उसके अंदर ये होगा छोटा वाला, right? It prevents the flow of excess current in a circuit. Fuse बड़ी सही चीज है यार। फ्यूज का पता है काम क्या है? When current is flowing in a circuit, कोई दिक्कत नहीं है, but if more than required current is flowing in a circuit, तो क्या होगा? ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट। This fuse wire is special. This wire has a limit. इतना करंट मतलब इतना करंट, अगर इससे ऊपर करंट जाएगा तो क्या होगा? Heat will be produced and this wire will melt and it will break. मतलब सर्किट में पावर खत्म, अब करंट फ्लो नहीं कर सकता, सर्किट ब्रोक, है ना? ओपन सर्किट हो गया। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट, लुक एट दिस वायर, हीट टूट गया, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स अ सेफ्टी डिवाइस। सो फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस, करेक्ट है ना? इसको हमेशा हम लगाते हैं मेन लाइन में और लाइव की तरफ। हाँ, इट्स अ टिन लेड एलॉय, यू आर राइट सार्थक। Inside glass some oxygen is present? No. Kishore, nitrogen sometimes we used to fill, but usually we fill argon. हाँ, नहीं बच्चों, everybody, you are telling me solder alloy and fuse wire is same? No. See, although both are alloy of tin and lead, but proportion wise is different, है ना? वो soldering iron और fuse wire same नहीं होता है, but हम metal same होते हैं, उनका composition अलग अलग होता है, ठीक है? फ्यूज कहाँ लगेगा? मेन लाइन में और लाइव वायर के अंदर। सर लाइव न्यूट्रल क्या होता है? अभी आ रहे हैं हम लोग, रुको जरा। हीटिंग एलिमेंट इन योर इलेक्ट्रिक आयरन, हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दिस, पता है व्हाट इज दिस? ऑल ऑफ दीज आर वन मार्कर क्वेश्चंस। नाइक्रोम इज द हीटिंग एलिमेंट इन योर इलेक्ट्रिक आयरन। व्हाई? इट हैज
high resistivity, it has high melting point, it does not oxidize and burn at high temperature. Nichrome क्या है? It's an alloy. Nichrome, निकल प्लस क्रोमियम, ये निकल और क्रोमियम का एलॉय है, राइट? सो इसका क्या है? हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई वी यूज इट एज हीटिंग एलिमेंट. करेक्ट है ना? हाँ, नाइक्रोम इज एन एलॉय. करेक्ट. हाउ टू मेक नाइक्रोम वर्क? इट वर्क्स. कभी तुमने पुरानी प्रेस देखी होगी ना, ऐसे निकलता है अंदर प्लेट के जैसा छोटा सा, राइट? चलो, इलेक्ट्रिक पावर. हाँ, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं. द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड or consumed in electric circuit. हाँ. Can we use 12 volt battery? Yeah, you can. Break na, break after this, after electricity. Yeah. The rate at which electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit. किस रेट पे हुआ है ये, right? SI unit क्या है? Watt है. How much energy is used in how much time is called as power. The same definition we used in 9th. पावर क्या होता है सर? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. यहां पर क्या है? वर्क डन, एनर्जी है, राइट? एनर्जी अपॉन टाइम टेकन. सो पावर क्या हुआ? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. सर ये कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन यू. देखो भाई, हमने क्या बोला था? H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी. याद है? एवरीबॉडी रिमेंबर दिस? जस्ट नाउ वी डिड दिस, है ना? H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी. करेक्ट. हीट क्या है? एनर्जी. यूनिट क्या है? जूल्स. यस, करेक्ट. हाँ, करेक्ट. यूनिट क्या है? जूल्स. पावर क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड. मतलब यू कैन से H अपॉन T. H इज व्हाट? एनर्जी ना. सो E और H अपॉन T इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी. सर T से T कैंसिल, क्या बचा? V into I. So what is power? Voltage into current. So 1 watt, the unit is watt. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. 1 volt amperes. And 1 kilowatt matlab, sir, 1 gram is 1 gram, 1 kilogram is 1000 gram. So 1 kilowatt is 1000 watts. एकदम आसान. हाँ, yes. So the only difference between heat formulas and power formulas is heat के फॉर्मूले में सारा T हटा दो. VIT, VI, I square RT, I square R, V square upon RT, V square upon R. भाई पावर में क्या मतलब है? हीट बोल रहा था कि कितने टाइम तक कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है ना भाई. हीट वॉज टेलिंग यू दैट हाउ मच एनर्जी वॉज कंज्यूम्ड जब इतना करंट इतने रेजिस्टेंस से इतने टाइम तक गया. पावर क्या बोलता है? हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर सेकेंड, मतलब टाइम हट गया उसमें से. इट्स डायरेक्टली V स्क्वेयर अपॉन R, I स्क्वेयर R और V इंटू आई. ठीक है ना? हाँ, जस्ट फीलिंग स्लीपी? आई नो बच्चा हर्ष, डोंट वरी, बस हो गया. क्वेश्चन, तुम्हें नींद खोल देगा ये. आंख खोलने के लिए तैयार हो जाइए. क्वेश्चन, हाउ डज यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? कैसे बचाता है ये? Team 7 guy. Nice. Good. I'll come to this. How does use of fuse wire protect electrical appliances? कैसे? लिख लोगे ना? This is a 2-marker question. Very good. Melt during overloading. An electrical fuse works by, it depends on heating effect of electric current. ठीक? It works by breaking the circuit when too much current is flowing within circuit. The wire within circuit melts due to heat generated due to high current. ठीक है जी? Okay sir. Second question, what is Joule's heating effect? This is you were asking, no? है ना? This is what you were asking. Sir, if somebody asks me define or state Joule's law of heating, what to write? This is what you have to write. According to Joule's heating effect, heat produced in a resistor is directly proportional to square of current for the given resistor, directly proportional to resistance for a given circuit, for a given current, and directly proportional to the time of current flowing through the resistor. H is equal to I square RT. ठीक है ना? हाँ, करेक्ट. यस, सही बात है, एकदम बढ़िया. शाबाश.
एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन अजी। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watts ऑपरेट्स 8 hours पर डे। अच्छा न्यूमेरिकल है ये। What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? Kilowatt hour. देखो, I'll give you a small hint. Kilowatt hour. Sir, watt क्या था? Watt क्या था? Energy upon time. Correct? मतलब joules upon second, right? हाँ, 288 rupees, हाँ रितिका, okay, rupees 288, good. What was joules upon second? किलोवाट क्या था सर? 1000 watts, okay, मतलब 1000 joules upon 1 second, yes sir. किलोवाट आर क्या होता है? किलोवाट आर क्या होता है? किलोवाट आर क्या होता है? यस, किलोवाट आर है एक घंटे में कितना एनर्जी यूज हुआ। ये तो एक सेकंड में है। इफ यू वांट टू फाइंड इन 1 hour, 1 सेकंड में कितना एनर्जी यूज हुआ सर? 1000 किलोवाट्स, राइट? ये तो पावर था, 1000 जूल्स। इन 1 hour मतलब 3600 सेकेंड्स में कितना हुआ? 3600 इंटू 1000 कितना आया? 3.6 इंटू 10 to the power of 6 जूल्स। किलोवाट आर यूनिट है एनर्जी का। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। यहां गलती नहीं करना। 288 यूनिक वन, इट्स ओके बच्चा। हाँ, लिसन लिसन लिसन। गिवन P इज इक्वल टू 400 watts। अच्छा रुको यार, पहले तुमको दिखा देता हूं मैं, आगे नहीं जाते। पावर दिया है कितना सर? पावर इज इक्वल टू 400 watts, ठीक है। 8 hour पर डे चल रहा है ये, है ना भाई? कितना चल रहा है? 8 hour पर डे। कितना दिन तक? 30 days तक, ठीक है। सो एवरी डे इफ यू वांट टू फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर ना। सो एनर्जी विल बी हाउ मच? पावर इनटू टाइम। एनर्जी कितना होगा? पावर इनटू टाइम होगा। यस सर। पावर कितना है? 400 watts इनटू टोटल टाइम कितना चला सर? पहले तो 8 hours पर डे, ठीक है। देन 30 days। अच्छा, सो इट इज 400 इंटू 8 इंटू 30 वॉट आर। ये रहा वॉट, ये रहा आर, ठीक। कितना आ रहा है? 4 3s are 12, 12 8s are 70, कितना हो रहा है? 96। हाँ, यस, 12 8s are 96, 96000, 96,000 वॉट आर। इतना वॉट आर है। कितना किलो वॉट आर है सर? 96 किलो वॉट आर है, करेक्ट है ना। एंड व्हाट इज द अमाउंट सर? 3 rupees पर किलोवाट आर, मतलब 3 इंटू 96। 1 किलोवाट आर एक्चुअली इज 1 यूनिट। जो आपका बिजली का बिल आता है ना, दैट इज 1 किलोवाट आर। मतलब एक यूनिट जो होता है ना बिजली का, दैट इज 1 किलोवाट आर, ठीक। अब इसका, हाँ, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट पावर कितना है, कॉस्ट कितना है, टाइम कितना लगेगा, निकालो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड एंड देन यू टेल 288 rupees, ठीक है जी। यस, 11:15 इन इंडिया, इट्स ऑलमोस्ट 1 AM। सो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दीज आर ऑल द फॉर्मूलेज। एनर्जी इन किलोवाट आर इज पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे ना छोटे मोटे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों सुनो, light and electricity both have only one solution. You have to solve a lot of problems, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए in the description I have given you 2 important things.
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए आई हैव गिवन यू अ स्पेशल सेशन का लिंक. There you will only find Joule's law of heating questions. I have given you equivalent resistance के लिए session का link. There you will only find solution, finding equivalent resistance वाले questions, right? So these are two things. These are two sessions. You can have a look. It will greatly help you. ये सारी चीज मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुमको और भागना ना पड़े. नहीं तो नॉर्मली मैं क्या बोलता था? I used to ask me in the comment section, I'll reply you back. और फिर मैं नहीं कर पाता था. लेकिन that's why I'm saying today it's there in the description. ठीक है? Fine. बस बच्चों 12:45 हो रहा है. We are done with electricity and we are left with only one chapter, magnetic effect of electric current. ये आसान चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसमें दो टॉपिक हैं जो कि बड़े जरूरी हैं और बड़े सारे क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें से. बस ये बचा है हमारा. क्या बोलते हो, ब्रेक चाहिए? 5 मिनट ब्रेक? नो ब्रेक? नींद आ रहा है पीयूष? आई नो. देखो अभी मैंने अगर ब्रेक दिया ना, मुझे लग रहा है तुम लोग सो जाओगे. If I gave you a break right now, सो तो नहीं जाओगे हैं? अच्छा, टैब चार्ज करना है. अच्छा, तुम टैब चार्ज करने लगा तो दो, पानी पीना हो इतना. तो देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी का ना प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है. माय नेम इज सौरभ शुक्ला, राइट? वॉशरूम जाना है? अरे हुई आओ, कोई दिक्कत नहीं. अरे इट्स ओके, 2-3-4 मिनट्स. आई एम जस्ट टॉकिंग. आई विल टेक ऑल योर डाउट्स. जिसको जाना है फटाफट होके आ जाओ, नींद आ जाएगा. आई नो पीयूष. पावर की ना वर्षा, देखो पावर के न्यूमेरिकल्स में ना, आई टोल्ड यू थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, है ना. वी हैव टू बी कंफर्टेबल इन थिंकिंग which formula I have to use first. For this only I have given you a small session in description, because Joule's law of heating के questions if you practice 2-3-4 good question, if you practice you will get a lot of confidence. That session will be really helpful to you. अनसॉल्व को नहीं जान, अरे यस यार आशीष, बिल्कुल होके आओ. स्कूल में नहीं करते थे मैम मैं गो टू टॉयलेट, है ना, अब भाग जाते थे. स्कूल में ऐसा होता था, गेड़ी मारने निकल जाते थे बाहर बच्चे. यस, राम, थैंक यू वर्षा. हाउ आर ह्यूमंस कंडक्टर्स? मानिया, बिकॉज सी फॉर कंडक्शन नो, व्हाट डू यू वांट? यू वांट आयंस. योर ब्लड हैज सो मच आयंस, योर बॉडी इज फुल ऑफ ब्लड एंड आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सो दैट्स व्हाई यू कंडक्ट. आई न्यूमेरिकल भी होगा यार. लेट मी सी. हाँ, ये तुम लोग लाइक वाइक कर रहे हो ना? आई एम नॉट आस्किंग. हाँ देखो भाई, इन द डिस्क्रिप्शन व्हाट विल यू फाइंड? ट्रिक्स टू रिमेंबर लाइट फॉर्मूला, पहला वीडियो है. Then we have how to get full marks in ray diagrams last minute. This is second video. Third is equivalent resistance questions from electricity class 10th science in easiest way. This is third video. Fourth is important hacks for Joule's law of heating. ये वीडियो जरूर देख लेना. If you want to master electricity, ये दो ही टॉपिक हैं इलेक्ट्रिसिटी में जिससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, रेजिस्टेंस एंड Joule's law of heating. ये दो चीज कर लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता. डायरेक्ट ओम्स लॉ से क्वेश्चन कम आते हैं वैसे तो, but ये दो वीडियो in the description. I am reading my description right now. Right, all these description you will get. बड़ा helpful होगा यार ये, please. Yes, no likes. हाँ everybody, फटाफट यार. 382 हुआ है, 400 कर सकते हैं हम लोग अगर कोई बचा कुचा है तो. If anybody is there जिसने अभी तक लाइक लुइक नहीं किया है, कर दो भाई. 400 टच कर लेते हैं फटाफट. क्या बोलते हो जाएगा? But I'm really happy यार, 93 people, गजब, नाइस. एक चैप्टर बच रहा है, एक चैप्टर बच रहा है यार. 1000 न्यूमेरिकल सेशन, टीम 7 का है. 1000 न्यूमेरिकल. हाँ आई नो. अरे अभी तो जनवरी पड़ा है,
Today I want all of you to realize कि भाई theory is not difficult. If you are okay with today's theory, इसका मतलब आपको numerical easy लगेंगे. हम बस practice करना है साथ में, है ना? Don't worry. अभी तो पूरा जनवरी है, तुमको पता नहीं है, बड़े सही सही प्लान चल रहे हैं तुम लोग के लिए. Very soon we'll let you know something very nice is coming for you. कुछ तगड़े प्लान्स हो रहे हैं. प्रैक्टिस के लिए अमोल बच्चा, my suggestion is after these type of sessions, solve only NCERT and only exemplar. And once you feel confident in solving these questions ना, you take up a sample paper. पोस्टवार अच्छा है, एजुकार्ड अच्छा है, एजुकार्ड के तो यही हमारे पास भी रखे हुए हैं, राइट? सो ये सब अच्छे हैं. न्यूमेरिकल्स बच्चा वी हैव टू प्रैक्टिस. सी डिस्क्रिप्शन में जो जो दिया है ना मैंने, वो सारे सेशन मैंने बहुत सोच समझ के दिए हैं. प्लीज उनको देखना, बहुत जरूरी है. ठीक, क्या बोलते हो, चालू करें? देखो आखिरी चैप्टर है, कर दे श्री गणेश इसका. रात का बज रहा है 1, है ना? रात का बज रहा है 1. हम बैठे हुए हैं कब से? शाम 6 बजे से, राइट? आई नो. देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से हैं, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो. पेल दें. यस, कम ऑन. लास्ट चैप्टर, शैल वी डू इट? अब क्या कर सकते हैं? यस, एकदम बढ़िया. नहीं नहीं यार, घर जाएंगे, किसी बात कर रहे हो? घर जाएंगे, चुपके से दरवाजा खोलेंगे, अंदर घुसेंगे, फिर खाना खाएंगे, और क्या होगा? अरे वाह, नाइस. ऑल राइट, कम ऑन एवरीबॉडी. लास्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मक्खन की तरह निकल जाएगा. आराम से सुनते जाओ बस. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. भाई देखो, इस चैप्टर में तो ये चैप्टर एक टाइम में, देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस चैप्टर वाज कंसीडर्ड टू बी द टफेस्ट चैप्टर इन ग्रेड 10th. लेकिन आज इसकी हालत ये हो गई है, इस चैप्टर के सारे दांत, सींग सब निकाल लिए गए हैं. दिस चैप्टर यूज्ड टू बी द मोस्ट डेडलीस्ट चैप्टर. इट हैड अ लॉट ऑफ हॉर्न्स, लॉट ऑफ टीथ्स. इट यूज्ड टू बाइट. इट हैड लॉट ऑफ बिग बिग नेल्स. अब सीबीएसई ने क्या किया ना, इस चैप्टर के सारे जो डेंजर चीजें थी सब निकाल दी. अब ये चैप्टर हो गया है ऐसे क्यूट सा, है ना, लाइक अ गुड नाइस पपी. करेक्ट? हाँ जी. सो दैट्स व्हाई इस चैप्टर के अंदर मोटर चला गया, जनरेटर चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चला गया, और यही वो चीजें थी जिसमें डर लगता था. अब ये चैप्टर हो गया बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा. 2 टॉपिक हैं इसमें जिनसे क्वेश्चन आते हैं, कर लेते हैं फटाफट. क्या बोलते हो, है ना? बिल्कुल. इसको पालतू बना गया है, वाइल्ड टू पेट. करेक्ट? हाँ. लेंस लॉ, ये माई लेफ्ट हैंड रूल. नहीं, लेफ्ट हैंड रूल इज स्टिल देयर, राइट हैंड रूल वाज देयर. डीसी मोटर सब हट गया. अब क्या क्या है इसमें? पहली चीज आई टेल यू, एंड व्हेन आई एक्सप्लेन इट टू यू नो, यू विल रियलाइज सर ये तो इजी लग रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड. अरे रुको यार, कलर चेंज करने दो. मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, field due to current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, direct current, alternating current, frequency of AC, advantage of AC over DC, domestic circuits. aha. अब देखो चैप्टर में पता क्या है, 3 भाग हैं बस, only 3 parts in this chapter. First, all about magnetic field. अच्छा, इसके अंदर ना whatever we are going to study in this, ये सब पता तुमने कब पढ़ा था पिछली बार? कितने लोग को, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं who remember कि ग्रेड 6 में एक चैप्टर हुआ करता था फन विद मैग्नेट्स? डू यू रिमेंबर? कुछ याद है? उस चैप्टर की चीजें हैं यहाँ पे. सो दिस पोर्शन इज ऑफ ग्रेड 6 लगभग. रिमेंबर इन ग्रेड 6 देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड एज फन विद मैग्नेट्स, है ना? मजे, मस्ती विद मैग्नेट्स, फन विद मैग्नेट्स हुआ करता था, राइट? दिस वाज अ चैप्टर्स नेम. दैट टॉपिक इज दिस. इजी, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक. देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज करंट, एंड दिस इज वेयर ग्रेड 10th का डोमेन स्टार्ट्स. करंट रिलेशन विद magnetism, right? So this is where you will have a straight current carrying conductor. This is where you will have a solenoid and its magnetic field lines, effects. This is where you will have electromagnet.
है ना, यहां पर ये 3 चीज आएंगी विच आर गुड, विच आर इंपॉर्टेंट। इनमें से सोलेनॉइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड, ठीक। उसके बाद क्या आता है, दिस इज द न्यू सेगमेंट, पहले ये नहीं हुआ करता था, दिस इज द न्यू एडिशन, दिस इज एसी, डीसी एंड डोमेस्टिक सर्किट्स। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोलेनॉइड और डोमेस्टिक सर्किट्स, एसी डीसी, यहां से आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इट इज नॉट इन न्यू एनसीईआरटी, नहीं यार, एशनी इज देयर। हाँ यस, ठीक है, एशनी इट्स देयर बच्चा, न्यू एनसीईआरटी में यार वो है, नहीं है क्या, क्या बात कर रहे हो? यस यस, एसीडीसी तुम्हारे में नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, चलो छोटा सा पोर्शन है, आई विल टीच यू सेफ साइड, जितना मेरे को याद है, बट कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, बहुत छोटा सा पोर्शन है, मतलब बहुत ही इजी है। बट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तो पक्का है भाई, डोमेस्टिक सर्किट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोलेनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये दोनों इजी हैं। इसी के अंदर आ जाता है आपका एक और, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें हैं जिससे ये चैप्टर खड़ा है अभी भी, ठीक, फाइन, वो है ना, हाँ। वेयर आर यू राइट नाउ? आई मीन बैंगलोर। ओके, चालू करें, चलो देखो, पहली चीज ग्रेड 6 फन विद मैग्नेट्स, कुछ नहीं है इसमें। सर व्हाट इज अ मैग्नेट? अच्छा बच्चे हो, ये सब बताना पड़ेगा। अरे नहीं यार, व्हाट इज अ मैग्नेट? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकल और अदर मैग्नेट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेट। इसी की बात होती है मैग्नेट तो। सर comes in different shape, different size, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, भूल जाओ। अरे इजी है, हाँ जी बिल्कुल, डोमेस्टिक सर्किट है। ध्रुव, अरे हाँ, यलहंका, नो आई मीन दिस इज नियर डेयरी सर्किल ना, आईबीसी नॉलेज पार्क। देयर आर 2 poles in each magnet, north pole and south pole। देखो, whenever there is a magnet, every magnet will have 2 poles। ऐसा कोई मैग्नेट ही नहीं बना है जिसमें 2 पोल ना हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, नॉट मोर देन 2 पोल्स, नॉट लेस देन 2 पोल्स, 2 पोल मिलेंगे आपको हमेशा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सर बार में ऐसा होता है, रिंग में ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल में ऐसा होता है, हॉर्सशू में ऐसा होता है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, यस ठीक, हाँ। whether center part of circular loop has, yes, oh this one, no, center part is empty, but ring magnet has like this, it's a ring, this side is north pole, this side is south pole, ठीक। इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स की बात करें अगर, सर अनलाइक पोल्स दे लाइक ईच अदर, अनलाइक पोल्स दे लाइक ईच अदर। अनलाइक पोल जब मिलते हैं क्या बोलते हैं? अरे यार बड़े दिनों बाद मिले हो, बगल में आओ जरा। अनलाइक पोल्स क्या बोलते हैं? अरे मेरा भाई यहाँ यार, तू कहाँ जा रहा है? एंड लाइक पोल्स क्या बोलते हैं? लाइक पोल्स दे डोंट लाइक ईच अदर। लाइक पोल्स क्या बोलते हैं? मेरे पास नहीं आ जाना, दूर जा, दूर जा, राइट। सो लाइक पोल्स डोंट लाइक ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये बच्चे समझते हैं यार, ठीक। साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होगा, साउथ साउथ रिपल्शन होगा, ठीक है सर, दैट इज ऑल्सो फाइन। यस मोनिका, बच्चा ब्रेक की जरूरत नहीं है, स्मॉल चैप्टर विल सी, इफ आई गिव यू ब्रेक राइट नाउ ना, वी विल स्ट्रेच टिल 2, बट इफ आई डोंट गिव यू ब्रेक राइट नाउ, बिफोर 2 वी कैन फिनिश, राइट। आई वॉन्ट यू टू स्लीप, है ना, आराम से 2 बजे तक सो जाना यार, right? And if you want to charge your tab, if you want to go to your washroom, watching on phone ना, ऐसे फोन लेके चले जाओ, ठीक है, बस बताना हो मेरे को। हाँ, अरे वाह, डेटा आया तो आ गए, वेरी गुड यार। चलो आ जाओ। अच्छा, मैग्नेट तो ठीक है सर, अर्थ इज ऑल्सो, आई मैंने पता तुमको, अर्थ इज अ ह्यूज बट वीक मैग्नेट। सर कैसे पता? every time when you release, एक बार मैग्नेट लो, उसको टांगो ऐसे, right? If you take a bar magnet and you hang it from a thread and you give it a slight push, ऐसे टुक, तो बार मैग्नेट क्या करेगा? ऐसे 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 करते 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 it will stop at one point in one direction always, हमेशा एक डायरेक्शन में रुक जाएगा। अब कुछ तो होगा भाई,
अब ये मैग्नेट है ना भाई, समथिंग इज इन्फ्लुएंसिंग दिस मैग्नेट. कौन? आसपास तो कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग नियर बाय. It is the earth, because earth is also a magnet. Now what we noticed कि यार the north pole of my magnet is pointing north pole of the earth. Oh, but sir, north pole cannot attract north pole. The north pole of earth is actually not north pole, it is magnetic south pole. तो geographic north pole ही magnetic south pole है, समझे? Right? Geographical north is magnetic south and magnetic north is geographical south. करेक्ट है ना? हाँ, पढ़ने आप 10 बजे से बैठते हो क्या? अरे वाह. यस करेक्ट. हाँ ओके. अब सर क्यों होता है ये? इसके बहुत रीजन है. जहां जहां पे अर्थ के अंदर क्या है ना, वी हैव molten liquid metals which are ions. Basically we have molten ions which are flowing here and there, है ना. जब ions flow करते हैं तो current formation होता है. current formation होता है तो हमको magnetic field मिलती है. आपको पता होगा, you might have seen every planet, sun, even sun has so much of magnetic field. Sunspots are caused because of magnetic field. तो ये जहां जहां पर hot चीजें घूमती फिरती है ना, वहां पर magnetic field बन जाती है. राइट है ना? ठीक है भाई. अब एक बात बताओ, one magnet is able to attract other magnet if they find a unlike pole and they repel but they never touch, है ना. It's like a non contact force. यार एक मैग्नेट को कैसे पता कि दूसरा मैग्नेट आ गया? कुछ तो होगा. How does one magnet know that there is one more magnet coming towards it and it has to attract or repel? कैसे पता इसको? Yes. Why is geographical magnetic pole? Because बच्चा, because your north pole of your compass is pointing north pole of the earth, right? This was simple to understand कि भाई north points north, but in scientific terms you know that north is not magnetic north. This north is magnetic north क्योंकि ये तो needle है, but that north is not magnetic north. That should be unlike pole, that is south. Yes है ना? Because of magnetic field. How do two magnets know कि भैया दूसरा मैग्नेट आ गया है, अब तो इसको खींचना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा? Because there is around a magnet there is a region of influence, right? A magnet around it has a region where its influence can be sensed. महसूस कर सकते हो आप, right? इस region of influence को हम बोलते हैं magnetic field, right? So region of influence around a magnet is called as magnetic field. इसको देखते कैसे हैं? बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज आयरन फाइलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट. आई हैव डन अ कॉन्सेप्ट बाइट्स आल्सो ऑन दिस. डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इमान, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, they are visual representation of the magnetic field around a magnet, right? So how do you make magnetic field? How do you visualize them? Because they are invisible. How do you visualize them? Sir, one idea is you take a magnet, you keep it on a paper, and above it you sprinkle iron filings. मतलब सर आयरन फाइलिंग का मतलब होता है पाउडर्ड आयरन, है ना. पाउडर्ड आयरन को ऐसे नमक की तरह से छिड़क दो. So it will arrange itself in a pattern. This pattern will tell you this thing. What is this? It is the visualization, interpretation. हमने इसको बना दिया, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हुआ करती थी इनविजिबल, उसको हमने देख लिया अब. ठीक. So one way is using magnetic field lines. ठीक है, करेक्ट है ना. रॉय, इट इज लाइव बच्चा, रात का 1 बज रहा है यार, किसी बात कर रहे हो? हाँ राधिका, molten metal has ions and when ions move they form current. When current forms happens there is magnetism. That's true. हाँ बस टाइसन 2 से पहले खत्म हो जाएगी यार, डोंट वरी. संजीता, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, वेरी गुड, है ना. चलो अब सुनो. I have a question. यार this iron filings, it is giving you the pattern. लेकिन मेरे को एक बात बताओ, this iron filings, is it also able to tell you कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है कि साउथ से नॉर्थ? क्या ये बता रहा है ऐसा? Is it able to give you direction also? It is only giving you a pattern. क्या ये तुमको डायरेक्शन भी दे रहा है कुछ? Is it also giving you some direction कि यार यहां से निकलेगा वहां जाएगा, ऐसे हो रहा है? Yes or no? दर्द, सर दर्द हो रहा है क्या? और कोई बच्चा
आई नो लेट भी हो गया। देखो अगर सर दर्द कर रहा है ना तो ज्यादा लोड मत लो, लास्ट चैप्टर बाद में देख लो, कोई बात नहीं, अगर देख सकते हो तो देख लो। नो वेरी गुड, I'll come Monica to this, don't worry. It will not, it will just give you a pattern. It will give you a pattern. In your lab, in your practical exam, have you done this experiment? I mean, when I was in school, I have done this experiment. How to form the magnetic field lines using a compass. Because compass will tell you the direction of magnetic field. क्यों? Sir, compass तो बढ़िया चीज है इस मामले में. See, compass, this is the compass, right? Compass has two lines. One is north pole and one is south. ठीक? Okay, sir. Fine? Yes. Now, if this is your bar magnet, this is your north and this is your south. So when you keep a compass over this side, north will point away. North will point away. Why? North repels north. Yes, sir. Okay. Correct. A compass always give you direction of magnetic field at a point. यहाँ पे देखो. Notice. Here, I have kept the compass at this point. Correct. This compass is telling me the direction of magnetic field at this point, and it is tangential to this point, like this. So this is the direction of magnetic field at this point. Similarly, at this point, if you put a compass, it will tell you direction of magnetic field in this direction. If you put it over here, it is telling you direction of field in this direction. तो आप जहां compass रखोगे, actually how the experiment goes, you take a magnet, you put the compass over here, make a point. Put the compass here, make a point. Put the compass here, make a point. Put the compass, make a point. And then you join the points. And that's how you draw the magnetic field lines. ये बता रहा है कि भाई field lines कहां से start हो, मतलब कहां से चल के कहां जा रही है. It is telling you कि outside the magnet, field lines are going from north to south. कैसे पता चला? Compass से. Correct है ना? Very good. Speaker से निकाले. हाँ, सोएंगे कब? अरे बस ये खत्म करके फिर घर जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर सोएंगे. राइट है ना? Why field lines never cross? Blended brains, good question. I will ask this question and then tell you. Don't worry. ठीक, अब सुनो. This is good for knowledge. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आता है? यहां से. प्रॉपर्टीज से आता है भाई क्वेश्चन. कि भाई outside the magnet, the magnetic field lines go from north pole to south pole. But why are we saying outside the magnet? Sir, why can't we say magnetic field lines start from north and they end at south? Because they don't end. These are continuous closed loops. ये होते हैं continuous closed loops. ठीक है? North से south outside the magnet, मतलब inside the magnet, in this bar magnet क्या होगा? Sir, north से south तो बाहर है. अंदर साउथ से नॉर्थ रहेगा इन अ बार मैग्नेट, राइट? दे आर स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स. दे आर स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स. पोल्स की डेफिनेशन में ही क्या लिखा हुआ है, राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स? इन ग्रेड 6 वी स्टडीड दिस. पोल्स आर द पॉइंट्स इन द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम. पोल्स वो जगह है जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? एक्सट्रीम पॉइंट्स वहां पर स्ट्रॉन्ग है. ठीक, यस सर. Field lines they do not intersect. अब तुम पूछ सकते हो सर why? Field lines intersect क्यों नहीं कर सकती भाई? क्या दिक्कत है इसमें? Good, unrelated. You're right. भाई if field lines are intersecting, let's assume, मान लो they are intersecting, है ना? What is the job of a compass? Compass क्या दिखाएगा? Compass will show you at a point the direction of magnetic field lines. Yes? Okay, sir. Let's say I give you a compass and you put the compass at this point. Now you tell me, compass क्या दिखाएगा? Compass will show this or compass will show this. या फिर compass बोलेगा एक बार इधर, ना तेरी ना मेरी, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर. compass ये करेगा क्या? डांस करेगा क्या? नहीं. compass cannot show you two directions at one point. एक बार में compass दो जगह कैसे point करेगा? Not possible. Yes? Correct. That's why. So this is the answer for your question. अब सुनो जरा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई? यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या होता है ना,
field lines are equidistant to each other and they are parallel. तो parallel lines को हम दिखाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एंड फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज सेम. हर पॉइंट पे ना फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है. और ये क्या है, कहीं कहीं पे फील्ड लाइन पास है, कहीं कहीं पे फील्ड लाइंस दूर हैं. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. वेरेवर यू हैव फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर, इट मींस यस अमोल, आंसर दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस. मैग्नेट के अंदर तो हम कैसे मेजर करेंगे? अमोल, solenoid also behaves like this, and there you will see it. Maximum, yes. Wherever field lines are close to each other, no, there you have stronger magnetic field. Good. Strength is more. Why lines converge and diverge? Radhika, this is what you observed. कौन बताया? Compass, magnetic field lines, iron filings, right? All of them are telling you this pattern. This is what you already था. हमने बस देखा. Yes. Good. That's why field strength is more where the field lines are closer. ठीक. दो question. First question is for you, which I already explained. लिख लोगे ना? Why magnetic field lines never intersect each other? I have given you full explanation. Can you write in your own words? Yes or no? जल्दी, come on. है ना? शौर्य, इतनी रात को ये याद आ रहा तुमको? बिल्कुल है भाई. सलमाना कहाँ का? रीजन क्या है? राधिका, I just explain no. What element is magnet? हाँ. उमर बच्चा, this is that material has a electronic spin. Odd spin आता है ना, तो उसकी वजह से एक imbalance आता है, वो बन जाता है dipole. अभी नहीं जाऊंगा मैं इसमें. Yes, Meeta. AV, you are right. गाना ओके क्रिएशन एंड में, बस सेशन खत्म करके छोटा सा गाना सुना दूंगा, डोंट वरी. करेक्ट. लिख लोगे ना भाई? यस, वेरी गुड. क्या है आंसर? सर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू देयर विल बी टू डायरेक्शंस, द फील्ड सेम पॉइंट इज इम्पॉसिबल. ओके, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये 2 नंबर क्वेश्चन है. आई एम नॉट सेइंग 2 नंबर इन टर्म्स ऑफ डिमीनिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग 2 मार्कर क्वेश्चन है. अब रात हो गई है, थोड़ा बहुत फंबल होंगे तो समझ लेना, ठीक है तुम, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? देखो भाई, these are closed curves. Yes sir, closed and continuous curves directed from north pole outside the magnet to south pole. ठीक है. Tangent at any point on a field line gives the direction of magnetic field at that point. Yes sir, ये भी फाइन है, it's okay. अब अगला आया. अब तक पता क्या हो रहा था? Till now people used to believe that electricity is different, chapter of electricity, है ना? And people used to believe कि magnets are different. But एक दिन this happened. Ørsted's experiment. So what happened in Ørsted experiment? कि भाई Hans Christian Ørsted, he was experimenting. और उन्होंने क्या किया कि भाई he was experiment with electricity. बगल में कंपास रखा था, correct? And when the moment current passed through the wire, this compass showed deflection. अब यार, अब तक क्या होता था? Compass is what? It's a magnetic needle. To deflect a needle, what do you want? You want another magnet only. भाई मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करना है, या तो एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओ, उसको ऐसे से करो, बट वो केवल अट्रैक्ट करेगा. यू वांट टू डिफ्लेक्ट द नीडल, एंड बिकॉज ऑफ करंट ही सॉ डिफ्लेक्शन. ये बोले यार, इसका मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिल सकते हैं. दे हैव सम रिलेशन, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड्स केम टुगेदर. यस, वीबर. हाँ, स्नो लॉ यार अभी तो नहीं है कुछ स्नो लॉ. हाँ बिल्कुल, डोंट वरी. अरे एकदम जोश भरा गाना, डोंट वरी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप नहीं रे, स्ट्रेट वायर. स्ट्रेट करंट कैरिंग. बच्चों इस चैप्टर में ना बस ध्यान से सुनते चलना. जस्ट कीप लिस्निंग वेरी केयरफुली एंड यू विल रियलाइज दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इजी. और इसके अंदर स्कोर करना
आसान है, बट इफ यू आर क्लियर, आई विल गिव यू स्मॉल ट्रिक्स, स्मॉल टिप्स ऑल्सो. पहली चीज, दिस इज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस विल बिगिन. इससे पहले वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट आई एम नॉट सेइंग जीरो है. फ्रॉम हेयर द चांसेस स्टार्ट टू इंक्रीज. यहां से क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं. क्या है? क्योंकि ये ग्रेड 10th का टॉपिक है प्रॉपर. इससे पहले वाला तुमने पहले पढ़ा हुआ है. क्या हो रहा है इसके अंदर? सर करंट कैरिंग वायर है. अगर हमने अभी क्या समझा, बिकॉज ऑफ अर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट वी रियलाइज कि भाई इलेक्ट्रिक करंट हैज रिलेशन विद मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिज्म. नाउ if there is a relation, how, right? We can talk about it. Yes. हाँ. अरे 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 क्या बात चल रही है? आग लगा दी? कहाँ आग लगा रहे हो? Now listen. If you have a current carrying wire, you have to find how this current carrying wire has magnetic field associated to it. इसके अराउंड कैसी है magnetic field lines? इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया. क्या किया हमने? सर ऐसे करंट कैरिंग वायर लिया, उसके अंदर एक पेपर लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आयरन फाइलिंग डाली. हमको क्या दिखा? व्हाट डिड यू सी? वी सॉ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अच्छा सर, डायरेक्शन ऑफ सर्कल, फॉर दैट वी हैव अ लॉ. सो वी रियलाइज दैट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक मतलब, मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर. One center, sorry, this is the center of this small circle, second circle, third circle. All these circles have one center, ना, मतलब concentric. Yes, good. From same point, Pritham मतलब from same center. They have same center. Yes, same center, different radii. Good, good, good. Right hand thumb rule. Correct. You're right. So you have a current carrying wire, and you have to find the magnetic field lines. डायरेक्शन अराउंड इट. कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सा रूल है भाई. दिस रूल इज वेरी इजी. फॉर एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर अराउंड इट. बट हाउ टू फाइंड? थंब लगाओ करंट की डायरेक्शन में, राइट? दिस थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द फिंगर्स विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अगर करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से, है ना? करेक्ट, राइट? यस. अगर करंट नीचे जा रहा है तो कैसा होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्लॉकवाइज, ऊपर से. ये वो चैप्टर है जिसके लिए तुमको एग्जाम में डांस करना पड़ जाए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए. सर डांस क्यों? दिस इज द फर्स्ट डांस. whenever students solve a question from this chapter, no, you will notice in your exam hall, बच्चे पता है क्या करते हैं? ऐसे 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 ऐसे, जो करना पड़ जाए, नंबर नहीं कटने चाहिए. ठीक है? देयर इज वन मोर डांस, इट विल कम. वो आएगा ऐसे 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 ऐसे. ठीक है? करेंगे आराम से, सुनो जरा. यस. हाँ, हम कैसे पढ़ करेक्ट. चलो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की बात करते हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. A current through a horizontal power line flows in the east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it? Come on. अरे अरे अरे, आंसू निकल रहे हैं क्यों? North to south, above it. अरे तुम कहाँ नारे लगा रहे हो यार? सुन तो लो, पढ़ तो लो, नारे लगा लेना बाद में. Above, into, below, out. Good, Meeta. It's a good answer. Yes. Come on, come on. Anyone else? किसी को नहीं आ रही है? रात में कहाँ पूजा वूजा कर रहे हो यार? नहीं आया, कैसे करना है? हाँ, लिसन नाउ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल शुड नो दिस. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. क्वेश्चन इज सेइंग करंट फ्लोज इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. मतलब सर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस.
Okay. Current is flowing like this. Point above and point below. So there are two ways of answering this question, हाँ है ना? There are two ways of answering. क्या है? पहला तो बोलता है above field will be going inside the paper. Below it, field is coming outside the paper. Right? This is one way of answering, which I just saw. हाँ है ना? This is one way of answering. कि sir, the current is going east to west. Above it, if I curl my fingers, they are going inside. So field is inside. So you can say above field inside है और इस तरफ में outside है. ठीक है sir. This is one way है ना? There is one more way of answering. क्या है? अब ध्यान से देखो. In this chapter you have to use bit of visualization. Current जा रहा है ऐसे. उसके ऊपर में magnetic field lines are like this. है ना? This is getting my point. अंदर बाहर. So magnetic field lines are like this. ऐसे है ना? I'm not Doctor Strange by the way. है ना? Don't think कि अभी कोई portal वोटल खुल जाएगा. Like this, magnetic field lines are there. So if you are watching from east side, what do you see? Sir, I can see clockwise. Okay. But if you see from west side, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो क्या होगा? Sir, I will see anti-clockwise. क्यों? ऐसे है ना? Anti-clockwise. Fine. There are two ways of answering. ठीक? हाँ. Yes. Yes. अरे. हाँ. Getting my point? Doctor Physics. Yes. हाँ. बहुत बढ़िया. चलो आओ आगे आओ. बच्चों नारे ही लगाते रह जाओगे, तुम बता रहे हो. ये ऐसे ना पढ़ाई लिखा कर लो, वरना यही करना पड़ जाएगा नारेबाजी. आ जाओ आगे. आंसर. You can choose to answer any way you want. दोनों ठीक हैं, right? दोनों ठीक हैं, लेकिन आंसर ढंग से करना, that is important, है ना? Yes. हाँ, very good. लेफ्ट हैंड पाएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है. The current in the east-west direction, applying the right-hand thumb rule, we understand that magnetic field at any point below or above the wire, it turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from east end, as it turns anti-clockwise when viewed from the west end. एक और तरीका था ये, इससे बता दो. ठीक, चलो अब आगे आओ. अब तक तो क्या था? करंट कैरिंग वायर वाज स्ट्रेट. बट व्हाट इफ दिस वायर इज नॉट स्ट्रेट? व्हाट इफ दिस करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप? ओह, तब क्या करोगे? प्रीतम, सेकंड मेथड बचा. सेकंड मेथड इज फ्रॉम ईस्ट. इफ यू नोटिस ना, है ना, करंट इज गोइंग लाइक दिस, इनसाइड एंड आउटसाइड. So current is going inside and outside, right? Like this. Oh, sir, it is clockwise for me. If you look from east, it looks clockwise. If you look from west, it looks anti-clockwise. That's how also you can answer. है ना? हाँ, correct. Very good. Nice. Cool visuals. अरे, that's what we do here. Now listen. क्या हो रहा है? This visual is really helpful, by the way. This is your current carrying wire. That red colored arrow is your current, and this circles are the current, the magnetic field lines around it. अब ideally तुमने निकाला कैसे? Ideally, how did you find it? Right? I don't have a current carrying loop. I don't have a loop right now. But क्या कर सकते हो? Let's say this is the current carrying loop, है ना? At this point, put your thumb. Sir, this is the magnetic field line. Here thumb, magnetic field line, thumb, magnetic field line, thumb, magnetic field line, right? So what, this is the ideal way how you found it. There is one illegal way also. There is one illegal way also which I teach, but I tell strictly to all my students not to write it in exam. एक shortcut है ये कि भाई, if you want to find, sir, current carrying loop के अंदर current is going like this, right? If current is going in this manner, which side or how will the magnetic field lines behave? कैसे होंगी वो? हाँ, no illegal work है. हाँ, good. Shortcut तरीका क्या बोलता है? What is the shortcut तरीका? If you want to find which side the magnetic field lines are going,
right hand thumb rule told you thumb is current and fingers are magnetic field lines. This shortcut method which is not to be written, एग्जाम में कोई लिख के मत आ जाना फिर बोलना सर आपने बोला था कि ये भी यूज कर सकते हैं. ये बस शॉर्टकट है टू फाइंड द आंसर. लिखोगे तुम लीगल तरीके से ही, ठीक. राइट हैंड थंब रूल बोलता था सर करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसमें क्या करना है, उल्टा कर दो, रिवर्स इट. सर करंट magnetic field lines, current magnetic field lines, which means here current is going in this manner na. If current goes like this, magnetic field lines are going on this side. If current goes like this, from the center of this loop magnetic field lines are going on this side. और जिस साइड से magnetic field lines बाहर आती हैं वो बन जाता है नॉर्थ. जिस साइड से अगर यहां से बाहर जा रही है तो यहां से अंदर आ रही होगी, ये बन जाएगा साउथ. Right, this is slightly short trick for all of you. Use करो just to get a good assumption. इसको use करो बिंदास जिससे कि आपको आंसर जल्दी मिल जाए, है ना. This is for your help. This is not to be written in exam. ठीक है ना. Correct. Not understood. Mahi, बच्चा, I'm saying, look at this wire. Right, in this current is going in this manner ना, ऐसे. In this wire current is going in this manner, right, in this manner. ऐसे जा रहा है करंट, ठीक. अब करंट जा रहा है ऐसे. शॉर्टकट्स के हिसाब से यू कैन टेल कि भाई करंट ऐसे जा रहा है, हाँ. अगर आपका करंट if your current is going in this manner, ideal way is to put your hand at each point of the wire. You have to put your hand at each point of the wire and curl your fingers, and that's how you are getting these individual lines, है ना. These individual lines which you are seeing over here, you are getting them by pointing your thumb like this, ऐसे. Getting my point, right? But there is one more way of doing it. अगर आप directly, if you are able to tell directly कि भाई sir, if this is my current carrying loop, if you get to know कि from this phase lines are coming up, इसका मतलब कैसा बनेगा, ऐसा, right? If you directly get to know कि sir from my current carrying loop ऐसे निकलेगा, तो आप क्या बोल सकते हो, sir this, ऐसा, right? So I'm saying this is a shortcut from which you can find these direction of lines very quickly. आपको लंबा तरीका लेने का जरूरत नहीं है, करेक्ट. लेकिन अगर someone asks you how did you find it, बोलोगे तुम क्या, सर मैंने पता है क्या किया, I put my thumb at each point of the wire and that's how I found using right hand thumb rule. बोलोगे तुम वही, ठीक है. yes, हाँ, yes भूमि, I just repeated बच्चा. So north pole is formed on the side from which field lines are coming out. Field lines are coming out. If this is your current carrying loop, ठीक, and current is flowing like this, अगर current ऐसे flow कर रहा है, how do you know from where field is coming out? Shortcut, इधर से. अगर तुमको ऐसे current carrying loop मिले और उसमें current जा रहा है ऐसे, in this manner, and someone asks you from where is the magnetic field line coming out, क्या बोलोगे, शॉर्टकट लगा दें क्या, ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, ये रहा इस तरफ. yes, no, हाँ, it's okay, normal method is fine बच्चा, not a problem. See, this is something which I have seen, it makes your work easy. For MCQs this is fine because it saves a lot of time. ठीक, fine, चलो आगे आओ. अच्छा, इसी के हिसाब से ना हमने एक बनाया क्लॉक फेस रूल. क्लॉक फेस रूल है क्या, ये भी वैसे ही शॉर्टकट टाइप का ही है. दिस इज समथिंग, बट दिस इज समथिंग यू कैन मेंशन बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक. ये क्या बोलता है, सर इफ यू लुक एट अ करंट कैरिंग लूप लाइक दिस, अगर करंट कैरिंग लूप ऐसा है ना, करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, इट कुड बी कमिंग टुवर्ड्स यू, it could be going away from you, but it is anti-clockwise. Then you will say anti-clockwise is north. n ऐसे बनाते हो ना, थोड़ा स्टाइल से बनाओ n, ऐसे ऐसे ऐसे. So anti-clockwise is north pole. The face
which has anti-clockwise current, that face becomes north pole. ठीक है, ओके सर. साउथ की बात कर लेते हैं. अगर आपको ऐसे दिखे, उस लूप के अंदर करंट आपको ऐसे दिखे, वो फेस, दैट साइड विल बिकम साउथ पोल. दिस इज व्हाट एस लुक्स लाइक. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल. ठीक है. लूप, लूप मतलब बच्चा सर्कल. इन अ सर्कल द करंट इज गोइंग. यस. हाँ, इन द पिक्चर बिफोर, राधिका, notice here, current is going right now in this manner, ना, ऐसे downwards. Now current is going for you in this manner, तो upward हो गया, right? ऐसे मूविंग पिक्चर है, इसलिए इसमें दिक्कत होता है. इसमें there is a lot of 3D things, no? एक लूप है. Now you don't get to know see कि वो लूप अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है. So that's perception. एक लूप लेके आना चाहिए था मेरे को ना. हाँ, yes, it's 130 actually. तो सिंगल लूप में क्या होता है सर? सिंगल लूप में वी गॉट टू नो हाउ टू फाइंड. लेकिन इफ यू हैव मल्टीपल लूप्स, एक लूप से यू आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना. इन द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट. ये है आपका लूप. एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रेट. ठीक, ओके. इफ यू हैव मेनी लूप्स, मतलब यू हैव अ कॉइल, दिस इज वन लूप. व्हाट इफ यू मेक a coil like this? That is a solenoid, है ना. Correct. Upward how? Upward बचा, whichever face becomes north pole ना, that has outside coming. जो face north pole बनेगा ना, तो देखो दो तरीके हैं इसके. I'll give you one method in which you don't have to talk about illegal method. Use clock face rule. एक और तरीका बता रहा हूं मैं. Use clock face rule. अगर करंट ऐसे है, this is anti clockwise, मतलब this face is north pole. इसका मतलब from this face magnetic field lines are coming out. If this is the current carrying loop, it is clockwise, means it is going to be south pole. अगर south pole है मतलब magnetic field lines are going inside. Easy. That is also one more way. Yes, shining. हाँ, correct. चलो सोलोनॉइड की बात करें. सोलोनॉइड कुछ नहीं है, इट्स मल्टीपल कॉइल्स कनेक्टेड टुगेदर, है ना. मल्टीपल लूप्स कनेक्टेड टुगेदर. पॉजिटिव, नेगेटिव. अच्छा, बहुत बच्चों को ये लगता है सर हमेशा पॉजिटिव वाला साउथ पोल बनेगा. जरूरी नहीं है, राइट. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ड्रॉ. अब यहां तो क्या है ना, तुमको साफ पता चल रहा है भाई, दिस इज पॉजिटिव, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, करंट गोज फ्रॉम प्लस ना, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव. सो इफ यू लुक एट फ्रॉम दिस फेस, यहां से देखोगे अगर, तो क्या दिख रहा है सर? करंट चला, है ना. करंट स्टार्ट्स एंड गोज लाइक दिस. सो फॉर यू लुकिंग फ्रॉम हियर, करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल. बट इफ यू लुक फ्रॉम दैट साइड, इफ यू लुक फ्रॉम हियर, यहां से देखो अगर, तो क्या होता है तुम्हारे लिए? क्या हो रहा है सर? करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. इट इज नॉर्थ पोल, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्रॉ, राइट. ठीक है ना. हाँ. सो इन दिस क्वेश्चन आई एम सेइंग नेवर लर्न इट लाइक दिस. सर प्लस विल बी साउथ, माइनस विल बी नॉर्थ. कोई याद तो नहीं करता ऐसे? प्लीज डोंट लर्न इट लाइक दिस. इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर टू वेयर करंट इज गोइंग. ठीक, इस फेस से यू आर सीइंग क्लॉकवाइज गोइंग अवे फ्रॉम यू, साउथ पोल. दैट फेस से यू आर सीइंग एंटी क्लॉकवाइज कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट बिकेम नॉर्थ पोल. ठीक है जी. हाँ जी, चलो. हाँ, वेरी गुड. एक साथ ऑफलाइन जाएंगे. हाँ, डोर. इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं. कमान कमान कमान. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इट्स अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल surrounded by a coil through which electric current is passed to magnetize the core. सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक ही डिफरेंस है, उसके बीच में एक कोर है, वरना सोलेनॉइड भी मैग्नेट ही है मेरे दोस्त. कर्ल्ड वायर इज मोर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड देन जस्ट अ वायर रनिंग स्ट्रेट. देखो सिंपल सी बात बताता हूं मैं तुमको. सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड क्या है सर? सोलेनॉइड मल्टीपल लूप्स ऑफ करंट है ना. सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. ध्यान से देखो यार, इसको देखो और एक बार मैग्नेट को देखना, नॉर्थ एंड साउथ.
ऐसे 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 ऐसे, सो सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट दे हैव सिमिलर फील्ड लाइन पैटर्न्स, राइट, है ना। सोलेनॉइड के अंदर अगर आप जाओगे, बाहर बार मैग्नेट, अंदर ऐसे ऐसे कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये हुआ सोलेनॉइड की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, हमने सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन कोर घुसा दिया, सॉफ्ट आयरन कोर। इससे क्या हुआ, सोलेनॉइड को सपोर्ट मिल गया, वरना पहले सोलेनॉइड तो केवल वायर था, सोलेनॉइड वाज अ सिंपल वायर ओनली, इंसुलेटेड कॉपर वायर। अभी यू हैव अ सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर तो लगा दिया, कॉपर वायर इंसुलेटेड है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे थिंक सर ये शायद कॉपर वायर ना विदाउट इंसुलेशन होना चाहिए, थोड़ा करंट जाएगा तब मजा आएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यस मोनिका, आई एम कमिंग टू दिस, डोंट वरी। व्हाई सॉफ्ट आयरन राधिका? बिकॉज सॉफ्ट आयरन, you can say magnetic field, I don't want to use the word permeability है ना, relativity. I want to tell you कि soft iron magnetic field lines, they like to go from soft iron. Soft iron is like a wonderland for them, है ना, they like to pass. So ठीक, okay. इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट। देखो परमानेंट मैग्नेट की बात करें अगर, तो ये पता है हमको कि भाई परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट होती है, उस पर कंट्रोल थोड़ी होता है। मेड ऑफ स्टील, परमानेंट, फिक्स्ड, स्ट्रेंथ, पोलैरिटी इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ। परमानेंट तो भाई परमानेंट है, कुछ नहीं कर सकते, बन गया तो बन गया, अब क्या ही करें उसको। आप, हमने पढ़ा था पहले, हीट वीट कर सकते हैं, तो अभी कुछ नहीं। बढ़िया कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, फुल कंट्रोल, ये है तुम्हारा पेट। करंट फ्लो कराओगे, मैग्नेट, करंट स्टॉप करा दोगे, not a magnet. It is made of soft iron. Temporary magnetic field. It has variable magnetic strength. Its polarity can be reversed and it can be turned on and off. भाई polarity reverse करना है, क्या करोगे? Positive, negative, right? Interchange कर दो. Polarity reverse. Yes. F equal to, very good. BIL sin theta. Permanent steel. Normally steel, right? Solenoid and bar magnet. The magnetic field of a solenoid resembles that of a bar magnet, I just told you, and magnetic field lines are uniform inside a solenoid. This is where a lot of questions come. बच्चों इससे क्वेश्चन बड़े पूछे गए हैं। पता है कैसा क्वेश्चन आएगा? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पूछेगा कि भैया ए, बी और सी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? सेम होगा तीनों का। क्यों? A, B and C both are inside a solenoid, and inside the solenoid magnetic field lines are parallel. There is a uniform magnetic field. That's why. ठीक है ना? गोविंद, अरे यार बिल्कुल। Some devices in electric motor are used. Lot of devices, no. Electric motor, you fan, DC motor के अंदर you have these servo motors, no? You will get in the market small वाला, small fans, battery operated fan. Your CPU has DC motor. नींद आ रही है? चारों आई नो बच्चा, डोंट वरी, बस हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, कैसे बढ़ाओगे भाई? इफ यू हैव अ मैग्नेट विच इज इन योर कंट्रोल, यू आर टेलिंग मी सर आई कैन टर्न इट ऑफ, आई कैन टर्न इट ऑन, आई कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर, आई कैन मेक इट वीकर। कैसे? हाउ? फर्स्ट, दिस मैग्नेट इज वर्किंग बिकॉज ऑफ करंट ना, सो इफ यू इंक्रीज द करंट इट विल बिकम इवन स्ट्रॉन्गर। यस सर, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। This magnet is working because you have tied or you have curled a wire around a soft iron core. Number of turn बढ़ा दो, number of loops. If you increase the number of loops, your magnet will become stronger. Third, increasing the length of the rod. आप अगर rod की length बढ़ा दोगे, strong बन जाएगी. There are 3 ways of increasing the strength of electromagnet. Yes, correct. हाँ, number of loop more. Very good. चलो बहुत बढ़िया। चाय पी लिया बस? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? कोई नहीं यार, बाद में खा लेना, है ना, बट खा लेना प्लीज। क्वेश्चन, मैं नहीं चाहता बच्चों के खाली पेट की हाय पड़े मेरे को। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, लिसन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन क्या है? कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ओके, apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside. Okay, ठीक है। Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field lines outside,
inside and outside the loop, inside north, outside south, north and south, हाँ. See, क्वेश्चन पता है क्या है? Let's say this is your table. Let's say ये हुआ टेबल आपका, और इस टेबल पे क्या बोल रहा है? करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज. तो लेट्स से ऐसे करके एक लूप था, इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक. अप्लाई राइट हैंड रूल. दिस चैप्टर नीड्स विजुअलाइजेशन. आई एम टेलिंग यू अगेन. पहले भी था, मोटर जनरेटर में लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन वाज देयर. राइट नाउ इट इज लेस, बट इट इज स्टिल देयर. अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप. इस लूप के अंदर और आउटसाइड बताओ. यस, नॉर्थ साउथ, साउथ आउटसाइड नॉर्थ, नॉर्थ. एक बार बताओ मेरे को, तुम ये नॉर्थ साउथ कैसे बोल रहे हो? नॉर्थ साउथ का तो मतलब ही नहीं आ रहा है इसमें. आई मीन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नॉर्थ एंड साउथ इन दिस. You can tell me out of the table, inside the table, that works, but north and south you can't define, no? Inside the normally downward. Okay, good, Monica. Nice answer. More class of physics. Parth, we are doing class of physics. Focus on that, no? First. Yes. Trick. Trick works, yes. Inside to outside. Trick, yes. अरे देखो. There are two ways of doing it. If you look at this wire from the top, अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे, ये क्या है? क्लॉकवाइज है. सर इसके ऊपर क्या बनेगा? Which face? सर face will be south. क्लॉकवाइज है ना? क्लॉकवाइज मतलब साउथ. So here magnetic field lines will be going inside, and here it will be coming outside. हो गया? डन मेरे दोस्त. लीगल मेथड क्या होता? सर इफ आई पुट माई हैंड ओवर ऑन दिस साइड, अगर मैं अपना हैंड यहां रखता, इस साइड वाले वायर पे ना, लिसन यहां बनाता हूं मैं ऐसे. इफ आई पुट माई हैंड ऑन दिस साइड ना, मैं बोलूंगा सर ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे बाहर आएगा. ठीक है, पूरा इधर सर ऐसे बाहर आएगा और ऐसे अंदर जाएगा. ओ सेम थिंग. देखो कुछ भी करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है, बट आंसर ले आना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइन. हाँ, वेरी गुड. आउटसाइड, हाँ, वेरी गुड. नाइस नाइस नाइस, करेक्ट. सो दिस इज इनफ. यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सर्कुलर लूप वी कैन गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन. कैसे? सर सर्कुलर लूप ऑफ वायर है, तो यानी कि इनसाइड में इट इज गोइंग अंदर अंदर, आउटसाइड से इट इज कमिंग आउटसाइड आउटसाइड. बस क्या लिखा हमने? डाउनवर्ड फील्ड लाइंस, अपवर्ड फील्ड लाइंस. बस. अच्छा, ये सब बात हो गई है ना? ये सब बात हो गई. It's okay, it's okay. So all this is done. Now force on current carrying conductor. भाई ये है वो टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़ा इजी टॉपिक है. इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट दैट क्वेश्चन विल बी इनफ टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन. सुनो, force on a current carrying wire. Now yaar, a current carrying wire behaves like a magnet. Okay sir, but if you have already a magnetic field, उसके अंदर if you keep a current carrying wire and it is also behaving like a magnet, यानी कि ये तो magnetic field के अंदर एक और magnet आ गया, they will interact. अब ये तो झगड़ा करेंगे या दोस्ती कर लेंगे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, फोर्स तो लगेगा. यस, और उसी की बात हो रही है. हमेशा इन्वर्ट होगा ना एंटी क्लॉकवाइज में. यस संगीता, यू आर राइट. इट्स ओके पार्थ, सी यू. हाँ हाँ, अनरिलेटेड. यस, ऐसे होता है. यही क्वेश्चन आते हैं. ध्यान से देखो यार, दिस यू शेप्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएंगी? इन दिस यू शेप्ड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम वेयर टू वेयर. कहां से कहां जाएंगी? सर यार ये तो जाएंगी नॉर्थ से साउथ. इसीलिए पढ़ाया था ये सब, जो हमने स्टार्टिंग की चीजें पढ़ी थी ना, इसके लिए पढ़ी थी हमने. नॉर्थ टू साउथ विल बी योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके सर, लेट्स टॉक अबाउट योर करंट. दिस इज प्लस. सर इसका मतलब तो करंट इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस. यस सर, करंट विल फ्लो लाइक दिस. नाउ देयर इज अ रूल विच विल टेल यू इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल एक्ट. है ना, एक रूल है, इसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल.
है ना, इसका नाम है फ्लेमिंग। पहले बताता हूं मैं कैसे लगाना है, देन आई विल टीच यू। देखो पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करेक्ट, ओके सर। करंट ऐसे, फोर्स ऐसे। तो हमने देखा कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट अगर परपेंडिकुलर है ना, फोर्स लग रहा है कैसे, इधर। एंड देन वी नोटिस्ड इफ आई इंटरचेंज द टर्मिनल्स, अगर मैं टर्मिनल चेंज कर दूं तो फोर्स भी चेंज हो गया। अब सर ये सीख लेते हैं ना कैसे कि ये फोर्स निकालना कैसे है। वन थिंग इज फॉर श्योर, if you keep a current carrying wire in a magnetic field, it can experience force. Yes? Good. Yes. Your hand is paining a bit? Radhika, I'm telling you, this is the second dance step. Today I'm teaching you, I am a choreographer. In this chapter, lot of dance steps are there. First one was this. I told you, na, ऐसे, 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 ऐसे. This is the second step I'll teach you now. भाई वी कॉल इट FBI, मतलब मैंने याद किया था FBI से, जब हमने बचपन में याद किया था। और उस टाइम भी क्या पिक्चर आई थी मैन इन ब्लैक, हम बोलते थे कि फोर्स निकालना हो तो FBI को बुलाएंगे, अगर हमको निकालना होगा कि मोशन हो रहा है तो करंट कहाँ आएगा तो मैन इन ब्लैक को बुलाएंगे, MIB को बुलाएंगे। बट अभी क्या MIB चला गया, क्यों, सिलेबस से हट गया। इट्स ऑल अबाउट FBI, राइट। क्यों, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। याद करने का तरीका, इन योर हैंड सबसे स्ट्रॉन्ग उंगली कौन सी है, इस पूरे हाथ में सबसे स्ट्रॉन्ग उंगली कौन सी है, कौन सी है। बाय द वे यू शुड नो द नेम्स ऑफ द फिंगर्स, आंसर में लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट इन द आंसर, इंडेक्स फिंगर है ना, मिडिल फिंगर, पिंकी फिंगर, बस ये दो चाहिए, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। Yes, it's okay, Parth. Thumb है ना, thumb is the strongest. It is the force. So in this becomes force. ठीक है सर। अब बात करते हैं करंट। सर करंट क्या होगा, ये कि ये looks like an eye, no, है ना, ये आई लग रहा है ना, आई ऐसे ऐसे आई लग रहा है, हाँ, तो ये हो गया आई, दिस इज करंट। ये बचा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। This is your, नस लड़केगा हाथ की, है ना। So this is your Fleming's left hand rule, ठीक। कैसे लगाना है, point your index finger direction of magnetic field, point your middle finger in direction of current and thumb will tell you direction of force. ऐसे लगाना है सर। इसका मतलब हो गया, if let's say cross means whenever someone tells you cross, इसका मतलब है going inside the plane. So in the first case magnetic field is inside, है ना, so you will get force. करंट चाहे ऐसे भेजो या ऐसे भेजो, your force will be maximum. यानी कि जब तक आपका करंट कैरिंग वायर it is perpendicular to the magnetic field lines, force will be maximum. But when your current carrying wire is parallel to magnetic field lines, your force will be minimum. Yes, है ना, जानने का मन नहीं कर रहा, अरे 10 मिनट और रुक जाओ, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर चले जाना, ठीक। When your current carrying wire is parallel to magnetic field lines, then force is minimum. ध्यान से देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट तीनों 90 डिग्री पे है ना, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90 है ना सर, 90 है, सही बात है, करेक्ट। ये हुआ जीरो फोर्स। दीज आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस। कंडीशन फॉर जीरो फोर्स, इफ करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जीरो फोर्स। कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, इफ करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, यस, BIL sin theta, you're right. So sin theta, if it is 0, it is 0, 90 is maximum, that's true. But you will not use this formula in your grade 10th. मत कर देना, गुस्सा हो जाएंगे एग्जामिनर, बोलते हैं अच्छा ज्यादा तेज हो तुम। State Fleming's left hand rule. That is why I was telling you should know the names of the fingers. State करना easy है. It's all about write the names of the fingers. Fleming left hand rule states that if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other, then thumb points towards the direction of the magnetic force,
The forefinger points direction of the magnetic field and middle finger points direction towards the current. Thumb, index finger, middle finger, है ना भाई, यही सब है. करेक्ट. फोरफिंगर, इसका नाम है इंडेक्स फिंगर, फोरफिंगर, कुछ भी बोल दो चलेगा. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field the largest? When both are perpendicular. है ना भाई. It is largest when directions of field and electric current are perpendicular. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन. तैयार हो? ये आ गया ना सबको? जल्दी बताओ पहले. When they are perpendicular. Yes. भाई इतना सा. Yeah, Sangeeta, that works. That is a good trick. क्या बोलते हो? एक बढ़िया क्वेश्चन करें. ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में आता है. इसके बाद ऑलरेडी फटाफट आ जाओ. चलो, इट्स अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. इट्स अ गुड क्वेश्चन. Imagine sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from the back wall towards the front wall. I'm telling you, this chapter is about visualization. सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा. Moving horizontally from the back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? Yes. Already did. Anjal, if you had done it, not a problem. You tried once more. Don't remember the answer. Tried once more. नहीं यार, क्या बात कर, डिफिकल्ट नहीं है. Upwards, inwards, upwards. Imagine where you are sitting. I'll tell you the question again. देखो question बोल रहा है. Imagine you are sitting in a chamber with your back to the wall. ठीक है. Electron beam moving horizontally from the back wall towards the front wall. From your back side ना एक इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन का बीम. ओके सर. नाउ there is a magnetic field in this room, and because of which this electron beam is deflected to your right. You are sitting here, तुम्हारे पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रहा है, but because of magnetic field this beam is deflecting to the right. Question है, where is the magnetic field lines? अपने हिसाब से बताना. You are sitting here, तुम देख रहे हो इस इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे जाते हुए, तुम बताओ. Downward. Yes, Neil, I'm live. Yes, downwards is one answer. Vertically downwards. Current flow in opposite direction. Radhika, good. देखो, everybody, listen to me. Very important thing. In a circuit, this is plus, this is minus, na? Correct? We say current flows from plus to minus. Current को हम लेते हैं as a flow of positive charge. Correct? But this is the conventional current. लेकिन लेना हमको यही है, क्योंकि सारी थ्योरीज इससे बनी हुई है. राइट? एक्चुअल में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन. कहां से कहां? सर, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम माइनस टू प्लस. इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस. लेकिन आई टेल यू, हमने जब ये डिस्कवर किया ना, पहले जब करंट पता चला, सबने बोला अच्छा पॉजिटिव तो बढ़िया होता है, पॉजिटिव से करंट आएगा. राइट? सो वी सेड करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड. बट लेटर वी रियलाइज अच्छा इलेक्ट्रॉन भी होता है क्या. तब तक बहुत लेट हो गया था. लॉट ऑफ थ्योरीज वर मेड. तो लोगों ने क्या ना तरीका निकाल लिया. क्या यार, एक काम करते हैं, थ्योरी ना वही रखते हैं. क्या दिक्कत है? हम बोलेंगे वो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होता है, एंड देयर इज अ हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन जो ऐसे फ्लो करता है. कोई फर्क तो पड़ता नहीं है उससे, चलेगा. ठीक है ना? हाँ, राइट है आपका. हाँ, ये राइट. So electron flows opposite from minus to plus, but current flows opposite to the electron flow. ठीक? तो एक चीज ध्यान रखो, current is assumed or current is expected to be the flow of positive charge. यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम, flow of negative charge. Electron is going from this side to this side and getting deflected in this direction, है ना? अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है, आपकी उंगली में क्या है? करंट है ना? This finger is for current. Current is for positive charge. Now you tell me. First of all, let's align this finger. ये finger ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं? Option 1 ऐसे, Option 2 ऐसे. You tell me that first.
कम ऑन जल्दी बताओ। ऑप्शन 1 ऐसे, ऑप्शन 2 ऐसे, 2 है ना, 2 गुड सर। व्हाई? इलेक्ट्रॉन इज दिस डायरेक्शन, मतलब करंट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। सर दिस मिडिल फिंगर ना इट विल बी दिस साइड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन बोल रहा है सर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज टू द राइट, मतलब फोर्स इज टू द राइट। ऐसे तो सर फोर्स उधर लग रहा है, इसको ऐसे कर दो। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। एग्जाम हॉल में यू विल नोटिस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग ऐसे ऐसे, ऐसे करो कि ऐसे करो, होता है ऐसा, कर दो, शर्माना मत, ठीक है, डरना मत, शर्माना मत, आंसर आना चाहिए। ठीक है सर करंट इज दिस साइड बट आई हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा थंब तो उधर जा रहा है, क्या करूं? ऐसे कर दो, ऐसे। ओ नाउ माय करंट इज इन दिस डायरेक्शन, माय फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन विच इज गुड, विच इज ओके। ये कहां पॉइंट कर रहा है? सर डाउनवर्ड्स। आ गया डाउनवर्ड्स, करेक्ट है ना, है ना, डरने वाली बात नहीं है भाई, शर्माना मत। मैंने देखा है बच्चे बोलते हैं लोग क्या बोलेंगे यार, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, अरे यार मेरे को वो लड़की पसंद करती है यार, मैं क्या बोलूंगा, वो क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचना, नंबर से मतलब है, पहले नंबर बाद में रिश्तेदारी, ठीक। आगे आओ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बैक वॉल, अरे रे रे, हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फ्रंट वॉल टू द बैक वॉल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, लोग जाएं, मैं नहीं बोलूंगा भाई, हम कैमरे पे हैं। Since the electron beam has deflected to your right side, the deflection, or sorry, direction of force is towards your right side. By applying Fleming's left-hand rule, if thumb represents the force and the middle finger represents the current, then field will be given by direction of the forefinger and it will be in downward direction. हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? पहले ये बता दो, देन आई विल टेल यू समथिंग एल्स। बिल्कुल, फोर्स की डायरेक्शन नहीं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आपने इलेक्ट्रॉन बीम को करंट बना दिया ना, फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, रत्ती भर भी डाउट नहीं है इसमें। जल्दी बताओ। अरे वाह, क्या कहेंगे लोग, सही बात है ना, वेरी गुड। इफ इन दिस क्वेश्चन वी हैव इलेक्ट्रॉन बीम, अगर ये बोलता a beam of alpha particles, a beam of alpha particles, then क्या आता डायरेक्शन? If the same question instead of electron beam, it would have said alpha particles, आंसर क्या आता? क्या आता आंसर? राधिका बता रहा हूं बच्चा, डोंट वरी। सेम डायरेक्शन, डाउनवर्ड ही आता। डू यू थिंक आंसर वुड हैव बीन डाउनवर्ड्स? यस, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है सर? 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। सो अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। राइट नाउ क्वेश्चन वाज टेलिंग यू इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग, everybody listen ना, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, गोइंग फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल एंड गेटिंग डिफ्लेक्टेड राइटवर्ड्स। मतलब सर इलेक्ट्रॉन बीम है ना, मतलब करंट विल बी ऑपोजिट, फोर्स चेंज नहीं करना, फोर्स वहीं लगेगा। सर करंट विल बी ऑपोजिट ना, माय मिडिल फिंगर विल पॉइंट बैकवर्ड्स, ठीक है। अब मिडिल फिंगर उधर दिख रहा है बट आई हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, तो मैंने क्या किया? ऐसे कर दिया। सर करंट ये रहा, फोर्स ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। But now if I tell you that this is not electron beam, this is alpha particles. Alpha particle is positively charged. That will be the direction of current. यानी कि current भी ऐसे होगा। Current is that side, force is this side, magnetic field ऊपर। आंसर हो गया upwards, ठीक है ना? हाँ, 9th में alpha particle experiment. Yes? No, नहीं यार। Jayprakash, my friend, I just told you answer is upward. If this is alpha particle, answer becomes upward. क्लियर है? जल्दी बताओ। एकदम पक्का, कोनो दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, आंखें खुल गई इससे, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ना ये। चलो फटाफट आगे, तो इजी है यार। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम? स्लाइड्स बची हैं बच्चों,
बस 10 स्लाइड बची हैं छोटी छोटी सी। 2 बज गए, आई नो बच्चा 2 बज गए यार, 2 बज गए लेकिन पाजी ये भी बाकी है। हाँ जी, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम, कैसे आती है बिजली? सर सॉकेट से। अरे नहीं यार, बहुत दूर से आती है। देखो दो तरह की होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एसी एंड डीसी। एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब द वैल्यू ऑफ एसी चेंजेस। ऑल्टरनेटिंग मतलब इट ऑल्टरनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू, राइट? इन डीसी इट्स डायरेक्ट, इट्स कांस्टेंट, राइट? ठीक है, तो दो तरह की होती है। AC is coming in your house, that is AC, but DC is something which charges your phone, your laptop, everything, those small adapters, they are DC, ठीक? Difference सुन लो, छोटा सा ही है। It is the current of constant magnitude, DC, है ना? AC is current of magnitude, varying magnitude. DC flows in one direction, AC reverses direction periodically. Positive होगा, negative होगा, positive होगा, negative होगा, है ना? हाँ, alternate means vibrating, you can say. बिल्कुल, अरे नहीं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल। डीसी करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल, है ना? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर एंड मेन्स। दोनों में ना ये थोड़े से पॉइंट पर सुन लो, एसी डीसी में बहुत लड़ाई हुआ, बट देयर इज एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। क्या? एसी जो है ना चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड, एसी इज एफिशिएंट। क्यों? बिकॉज एसी जनरेटर्स दे हैव मोर एफिशिएंसी देन डीसी जनरेटर्स। ट्रांसमिशन के लिए एसी तो भाई यहां पर एसी जीत गया बहुत तगड़ा। एसी इज इजी टू ट्रांसमिट टू लार्जर डिस्टेंसेस, यही बहुत बड़ी दिक्कत थी। जितना भी ये पावर बड़े बड़े नहीं खंबे होते ऐसे ऐसे वाले, वी हैव दिस ह्यूज टावर्स which in which electricity supply happens, no, there it is AC. So AC is easier to transmit to larger distances and losses are very less. कन्वर्जन करना आसान है, AC को DC में कन्वर्ट कर दो, बड़ा इजी होता है, रेक्टिफायर लगा दो, एंड इट इज easier to generate. तो AC इसीलिए जीत गया, and that is why AC is used everywhere and DC is used in small things, है ना? Yes, correct. बिल्कुल यार, कैम होगा बच्चों, कैम अभी क्या है, कृति मैम नॉट अवेलेबल, बट व्हेन शी कम्स बैक कैम होगा, डोंट वरी. सो दिस वाज द आंसर टू हाउ इट रीचेस, सॉरी इट रीचेस इन द फॉर्म ऑफ एसी, करेक्ट. कैसे? बहुत दूर से आती है. कहीं जनरेट अलग होती है, पावर स्टेशन लगे होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगे होंगे तुम्हारे घर के आसपास, कुछ तो होगा, है ना, राइट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होगा. They are located far away from our homes. Electricity has to go through all these intermediate points. पावर स्टेशन बहुत दूर है, फिर क्या आता है, एक ग्रिड सबस्टेशन, फिर ट्रांसमिशन लाइंस. यही दिस ट्रांसमिशन लाइन इज दोस बिग बिग टावर्स यू सी. देन वी हैव मेन सबस्टेशंस, देन वी हैव सिटी सबस्टेशंस, इंटरमीडिएट सबस्टेशंस, और फाइनली आता है बिजली का खंबा, एंड देन इट कम्स टू योर हाउस. नाउ इट इज यू हैव अंडरग्राउंड. तो ये डायग्राम यूज करने की जरूरत है? नो, इतना जरूरी नहीं है, बट पता होना चाहिए कि पावर स्टेशन और हमारे घर के बीच में क्या क्या होता है. सर एक तो ग्रिड सबस्टेशन होता है जो सबसे पहला होता है, देन वी हैव सिटी, राइट, देन वी हैव सिटी सबस्टेशन और मेन सबस्टेशन, और उसके बाद आता है सिटी, और फिर आता है खंबा. ठीक है, फाइन. हाँ, डायोड, यस माई, रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं उसमें. हाँ, गुड. चलो, तो ये हो गया क्लियर, बहुत अच्छे. अब आते हैं आपके घर की बात. इनसाइड योर हाउस, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर इज अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन आए हैं, आते भी हैं. देखो भाई, 3 तरह के वायर आते हैं तुम्हारे घर के अंदर, है ना. लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, 3 तरह की वायरिंग होती है. पहली चीज क्या लगी होती है, एंड दिस डायग्राम बच्चों इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कम से कम कैसे बनाना है. लाइव के अंदर पहली चीज फ्यूज लगाओगे. सबसे पहली चीज सेफ्टी है भाई, फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी. हम लगाएंगे फ्यूज. क्यों? फ्यूज जिसके पहले लगेगा वो उन सबको बचाएगा. फ्यूज यहां लगेगा तो ये सबको बचाएगा, मीटर को सबको बचाएगा भाई. ठीक है, सबसे पहली चीज फ्यूज, मेन फ्यूज. देन मीटर, बिल कैसे दोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगेगा उसके बाद. ठीक है ना? यस. इट इज नॉट डिलीटेड बाय द बच्चों, इट इज नॉट डिलीटेड, इट इज इंपॉर्टेंट. Questions come from this. Electricity meter, earthing सबका होगा. Then comes main switch, and then comes your distribution box. ये distribution box है ना, तो यहां पर क्या होता है, आप
अलग अलग ऐसे सारे पैरेलल कनेक्शन है बाय द वे, राइट? ऑल दीज आर पैरेलल कनेक्शंस. ईच सॉकेट विल गेट 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ. और ये लगे हुए एमसीबीज तुम्हारे घर में होगा. एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, उसमें क्या होगा ना, यू माइट बी सीइंग hall has a different connection, there is MCB for it. If some fault happens in your drawing room, MCB will trip. If some fault happens in your bedroom, another MCB will trip, है ना? This is the distribution box. ये तुम्हारे घर में है already. If you don't know, just talk to your parents once. Yes, yes sir. अरे पता है ऐसे ही होता है. My energy will go down, but now I am feeling very good. अब तो पढ़ा दूंगा और तुम घंटों घंटों तक. Yes. आदित्य गाना गा रहे, अच्छा गाना गाओ यार. Na, 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 na. हाँ जी, come on. No, neat. It depends on you, bacha. It all depends on you. If you can grasp everything, 2x, fine, not a problem. Distribution box. Everything will have MCB in the live wire. Second important thing. MCB will be connected in the live wire. Never connect MCB in neutral. ये दूसरी गलती है. नंबर कटते हैं इस पे. ठीक? MCB लगाओ. जितने सॉकेट हैं उन सब में एमसीबी होगा. जितने सॉकेट नहीं, जितने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रही होंगी. ठीक, फाइन है ना? यस, ओके. अगली चीज, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये वो चीज है जिसका क्वेश्चन पहले आ गया था. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? किलोवाट आवर्स. इसको बोलते हैं यूनिट. इन योर हाउस व्हेन द बिल कम्स, इट कम्स इन यूनिट्स. दिस मंथ यू हैव यूज्ड दीज मेनी यूनिट्स, है ना? यू हैव टू पे दिस मच बिल. That 1 unit is 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 power 6 joules. I told you this before, right? है ना? ठीक है. Color coding. All electrical appliances are provided with 3 core flexible cables with differently colored insulators. 3 तरह के केबल होते हैं. Red, green और black. Red होता है live. Red मतलब danger ना? Live. ब्लैक इज न्यूट्रल एंड ग्रीन इज अर्थ. भाई अर्थ क्या है? हरियाली, हरियाली है ना, ग्रीन. ठीक है. दिस इज द न्यू कन्वेंशन, बट यू विल नॉट यूज दिस इन एग्जाम्स. ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, भूल सकते हो अभी. एग्जाम में तुम यही लिखोगे बिकॉज दिस इज इन द बुक. ऑल्दो हमने रियल लाइफ में, एक्चुअल में ये चालू कर दिया है, लाइव हैज बिकम ब्राउन, न्यूट्रल हैज बिकम ब्लू एंड ग्रीन इज अर्थ, बट यू विल नॉट यूज इट क्योंकि ये एग्जाम के लिए नहीं है. ठीक है, फाइन. हाँ, everybody, these are not related topics. People have a misconception. It is there. तुमको मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया था क्या क्या है. That is from CBSC. ये सारी चीजें हैं, प्लीज छोड़ के मत चले जाना, बहुत नुकसान हो जाएगा. हाँ, यस, वेरी गुड. अर्थिंग बहुत जरूरी चीज है भाई. ये सारे see, this is something I have seen CBSE is focusing a lot more nowadays because these are practical things, safety oriented things. ये बच्चों को पता होनी चाहिए, इसीलिए इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल. अर्थिंग. अर्थिंग क्या होता है सर? इट्स अ सेफ्टी मेजर. आपके घर में ऐसा हुआ होगा कभी ना, यू टच योर रेफ्रिजरेटर, झटका लगा, अरे यार. मैंने मिक्सी चलाने गया, झटका लग गया, ओए होए होए. टीवी को टच किया, झटका लग गया. लैपटॉप को साइड से टच किया, झटका लग गया थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ अर्थिंग. ऑल योर मेटालिक बॉडी अप्लायंसेस, right, their metallic bodies need to be earthed properly. सर अर्थिंग का मतलब आप अपने अप्लायंसेस की बॉडी को ना ऐसे एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो, that is called the earth wire, and this earth wire is connected to a rod finally. This rod is going inside the earth and there is एक होल बनाते हैं उसके अंदर, है ना? कॉपर प्लेट लगाते हैं, एसिड वेसिड डालते हैं, that's called the earth pit. उसमें दबा देते हैं. This is called earthing. ये क्या है? इट्स अ प्रिवेंशन, इट्स अ प्रिकॉशन, इट्स अ सेफ्टी मैकेनिज्म. सो ऑल द लीकेज करंट ऑन द अप्लायंस बॉडी, इट शुड गो टू द अर्थ. अर्थ क्या है? अर्थ एक बढ़िया चीज है. अर्थ बोलता है तुम्हारे जो भी गिले शिकवे, एक्स्ट्रा करंट जो भी है मेरे को दे दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट. राइट, है ना? हाँ, वेरी गुड. लो रेजिस्टेंस पाथ. सो दैट्स व्हाई टू अर्थ कनेक्शन एट किलोवाट आवर मीटर, जो भी है होल लगाया. एंड करंट की एक और फंडा है. करंट बोलता है आई लाइक जीरो रेजिस्टेंस पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ. तो बिटवीन यू एंड दैट कॉपर वायर, करंट विल चूज द कॉपर वायर. क्यों? उसका रेजिस्टेंस तुमसे भी कम है. तो करंट बोलेगा मैं जा रहा हूं वहां से, तुम कर लो जो करना है. ठीक. तो दैट्स व्हाई यू विल बी सेफ. तुमको नहीं लगेगा करंट चला जाएगा नीचे. ठीक, फाइन, ओके. शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग की बात करते हैं. यस, गुड मॉर्निंग. अरे अच्छा गाना बनाओ आदित्य. हाँ जी, कम ऑन, सुनो.
प्लग डिफरेंट क्यों होता है? हाँ मान्या, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करूंगा मैं थोड़ा सोच के इसको, ठीक है। बाकी वहाँ फ्रीक्वेंसी अलग होती है, यूएस में 60 हर्ट्ज होती है, हमारे 50 हर्ट्ज होती है, तो वहाँ का ना सेटअप थोड़ा सा अलग है, वहाँ 110 वोल्ट पे चलती है। शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग बात करते हैं हम लोग। देखो शॉर्ट सर्किटिंग का एक मतलब होता है लाइव न्यूट्रल मिल जाना, बूम ऐसे हो जाता है। whenever short circuiting happens, no, there is a blast sort of a thing, lot of current flows, that is short circuiting, simply live neutral comes in contact. Overloading का मतलब होता है increase in current. Now increase in current can happen two ways. One is short circuiting. फिर short circuiting मतलब I told you live neutral means there is no resistance. लाइव इज मीटिंग द न्यूट्रल। अरे सर बिना रेजिस्टेंस के मीट कर लिए क्या? अरे रे 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 रे, जीरो रेजिस्टेंस, करंट थियोरेटिकली बिकम्स इनफाइनाइट। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो सर करंट तो इनफाइनाइट हो जाएगा थियोरेटिकली। यस, सो दैट इज वन वे इन विच करंट कैन जंप। सेकेंड इज इफ यू कनेक्ट मोर अप्लायंसेस। तो शॉर्ट सर्किटिंग का सिंपल मतलब है लाइव न्यूट्रल का मीट करना। Short circuiting happens when live and neutral wire comes in direct contact. Consequence, jump in current, spike in current. Second, short circuiting leads to abrupt increase in current and this is also known as overloading. Overloading का एक तरीका और होता है क्या? कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, you have an extension board, तुमने extension board में एक appliance लगाया या फिर extension board में ना ऐसे प्रेस लगाया या फ्रिज लगा दिया, क्या होता है? बूम। कि करना मत कोई भी, nobody should be doing it। कि सर ने आइडिया दिया था, अगर आप एक नॉर्मल सॉकेट के अंदर हैवी अप्लायंस लगा दोगे तो वो प्लग तो बेचारा चुन्नू सा है, 5 एम्पियर उसकी रेटिंग है। तुमने बोला मेरे को 15 एम्पियर चाहिए तुमसे, ये बोलेगा सर माफ कर दो मेरे बस की नहीं है, लेकिन तुम बोलोगे नहीं मेरे को चाहिए। तुम जैसी करंट लोगे बोलेगा जल गया है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि overloading also happens when you connect multiple appliances in one socket. So you are drawing more current than the capacity of that socket, capacity of the wiring of the socket, and that's where वो burns. Correct? हाँ. Yes. When they come in contact. Correct. बहुत अच्छे. तो यानी कि it prevents damage to the appliance and circuit due to overloading. Electric fuse is made up of an alloy with a low melting point and is always connected in series with the appliance. कैसे बचेंगे इससे? इलेक्ट्रिक फ्यूज से और MCB से। ठीक, वेरी गुड। बेड पे जाएंगे यार, तुम तो सो जाओ। चलो, it prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस है, works on heating effect of electric current. Yes sir. It is made up of metal with low melting point. That is also fine. Okay. Appliance का फ्यूज ऐसा होता है छोटा सा। अब इसका यार ये चीज हमने पढ़ ली करंट के अंदर ना, इलेक्ट्रिसिटी में we have done this. If current exceeds a particular value, the wire will melt, right? And that's how circuit will break. That's simple, एकदम correct. हाँ यार. Circuit breaks, keeping the appliance safe. दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जरा। What precaution should be taken to avoid the overloading of domestic circuits? एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी फटाफट। Yes, you're right. When high voltage comes, then your appliances they get damaged. Fuse और MCB okay. और कुछ? Not connect faulty appliances good. और कुछ? One more thing. इंसुलेशन ओके। एक और चीज AV गुड, दैट इज पेंडिंग, वो बचा हुआ था बस। भाई तुमको क्या करना है? सर डोंट कनेक्ट सो मेनी अप्लायंसेस इन वन सॉकेट। क्या होगा? ज्यादा करंट मांगोगे तो वो बेचारा मर जाएगा। टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। एक टाइम पे सारे मत चला के बैठ जाओ। ऐसा कभी होता तो हम घर वाले बोलते ना और पेरेंट्स से कि ऐसा मत करो, एक टाइम पे AC भी चला दिया, गीजर भी चला दिया, ये भी चला दिया, फ्रिज भी चला दिया, सब चला दिया। ऐसा नहीं करने का, ठीक। Faulty appliances should not be connected and fuse should be there in the circuit. Fuse बहुत जरूरी है भाई, ठीक। Name two safety measures commonly used in electric circuits and appliances. दो safety measures जो कि commonly होने चाहिए, पढ़ लिया हमने। पहला fuse, because it will prevent from
ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। दूसरा अर्थिंग। अर्थिंग किसको बचाएगा? तुमको। इफ देयर इज अ लीकेज करंट ना, तुमको शॉक नहीं लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज है और प्रॉपर अर्थिंग है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा लाइव में लगाते हैं। प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग, प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। प्रॉपर अर्थिंग in which any leakage of current electric appliance is transferred to the ground and people using the appliance will get a shock. Yes. अब ये बताओ कैसा लग रहा है तुमको? We had done 4 chapters, है ना? We had done 4 chapters. Class 10th physics is done. कैरियर काउंसलिंग सेशन हो रहा है कब? संडे को हो रहा है। कितने बजे हो रहा है? 12 बजे हो रहा है, 1 घंटे का हो रहा है। ये है तुम्हारे लिए और पेरेंट्स के लिए। साथ जाना है, ठीक है, समझना है क्या होता है जेई, क्या होता है नीट की दुनिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन यू टेक योर ओन डिसीजन। जाओ रजिस्टर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। अब बताओ हाउ आर यू फीलिंग? यस, बिल्कुल, ओवर द यूनिवर्स। गाना, अरे गाना पता क्या है इस टाइम पे? आई विल टेल यू समथिंग, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। When I was preparing in कोटा, हम जब कोटा में थे ना, तो every day I used to study for around 18 hours. और ये आई एम सेइंग इंक्लूडिंग कोचिंग, है ना। सेल्फ स्टडी हमारी कोचिंग होती थी लगभग 7 घंटे की, है ना, 7 hours ऑफ कोचिंग। उसके बाद भी हम सुबह 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग अ लॉट। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है ना। हाँ ये सपना है तेरा। तो ये गाना गाओ, एक बार सुनना अच्छे से, बड़ा प्यारा गाना है। तूने अब जाना है। अरे नहीं रे, झूठा बोल रहे हो, कैसी बात करती मेरे दोस्त। अभी तुमने ढंग से वो तैयारी देखी नहीं है। एक टाइम हुआ करता था, हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे घरों में रहा करते थे, धूप में कोचिंग जाया करते थे। तो ये सारी चीजें करोगे, जब तपोगे तब तो रियलाइज होगा। अभी तो क्या ना, एसी में बैठे हैं, मस्त ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो समझ नहीं आता है। लेकिन all of this has happened and if you really want to achieve something you will have to burn yourself. आसान चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। आसान चीजें अगर आपको मिल गई, इसका मतलब वो चीज उस लायक नहीं है। अगर सच में खुशी चाहिए, है ना, if you really want to be happy about something then you have to burn yourself. If you really want to score then you will have to burn yourself. ठीक है, अगर आसानी से आपके नंबर आ गए it will not be worthful for you. तुमको उसकी कीमत समझ नहीं आएगी, राइट। इंडिया जब वर्ल्ड कप हारी थी, दुख हुआ था ना, राइट। यू फेल्ट बैड, व्हाई? बिकॉज वी गेव आवर बेस्ट। इफ यू गिव बेस्ट टू समथिंग, यस, देन यू विल फील इमोशनल अबाउट इट। तुम बिना पढ़े बिना करे जाओगे, नंबर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है ना। राइट नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज डू और डाई। आई एम टेलिंग यू अगेन, तारीख डिसाइड हो गई है 2 मार्च, इसको तुम बदल नहीं सकते हो, है ना। कोई उम्मीद कर लो कोविड आ जाएगा, ये आ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। अब दिस एग्जाम विल हैपन एंड यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम। इट डिपेंड्स ऑन यू, डू यू वांट टू स्कोर वेल और टाइम पास करने जाना है तुमको। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज इफ यू स्टेड टिल नाउ। जिन लोगों ने लास्ट तक क्लास करी है, जिन्होंने आज का सेशन पूरा देखा है, फिजिक्स में तुम्हारा 1 नंबर कहीं से कहीं नहीं हो सकता, राइट। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक दिस क्लास, है ना। मैंने जल्दी नहीं बचाया, I made sure that we do it properly the way it's supposed to be done. Thank you. Thank you for being here. And you know what? We'll see each other again because we have to do a lot of practice. अभी तुमको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम बाकी है, मतलब हमारा एग्जाम बाकी है, ठीक है। साथ में देंगे, साथ में फोड़ेंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक। So everybody, this is the timetable. Like this video, subscribe to the channel and press the bell icon. See you next time. I don't know, I should say good morning or good night, but you know what? Bye bye. फिर मिलेंगे, चलो, take care.